Republic of Pakistan under Article 186 of the Constitution. Please continue. Please. Sir, yesterday when I was about to finish the examination chief of Masood Mahmood, my Lord Justice Yahya asked a very pertinent question. And I'm really grateful, sir, for drawing my attention to a very, very important point which goes to the roots of the case. Question was for benefit of all of you, that whether a statement of Mia Ghulam Abbas was recorded under section 164 CRPC by a magistrate. Answer was yes. But I said, sir, he resigned from the statement, and he did not, even in his 342 statement, he said that was not voluntary. But your lordship was of the view that even then this statement is there because it has been recorded by a magistrate, and his observation was very, very correct and very apt. I'm grateful, sir. Again, I'm grateful. So your lordship would like to see his statement. What is his statement? What did he say in his statement? Page sir, 201, volume 8. उसका हमने मसूद का पढ़ लिया, वैसा है पढ़ना. PW2 is finished. No. ये तो अभी उसको शुरू ही नहीं किया. पहले वो पढ़ना चाह रहे हैं. नहीं, मैं क्वेश्चन उनका था ना जी. तो वो मैं कहता हूँ उसको. Volume 2, page 201. Volume 8, sorry sir. And page 201. ये बड़ा इम्पोर्टेंट था. बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसका बयान, और इसको क्यों नहीं कंसिडर किया हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी मैं बताऊंगा. 164 का स्टेटमेंट है. 164 जी आ गया, मिल गया. आ गया ना जी. मुश्किल आ रही है तो पढ़ने में. कोई नहीं सर, मैं हूं ना जी. कौन से पूरा ना पढ़ें, को रेलेवेंट बताएं. पहले बताएं इसकी तारीख क्या है. ये तारीख ये रिकॉर्ड हुआ है जी 20/11/77. नहीं, ये एग्जिबिट की डेट है 18/8 को. वो जो जनाब डेट पढ़ रहे हैं ना, वो जब ये कोर्ट में एग्जिबिट हुआ, वो डेट है. नहीं, रिकॉर्डिंग डेट बताइए. रिकॉर्डिंग 18 सर, 18th of August 1977. ये अगर आपको डेट मिल रही है पेज 203 पे देखेंगे ना, एंड पे है ये सर. 203 पे आप देखेंगे, लास्ट पे दस्तखत मैजिस्ट्रेट दर्जा मुअर्खा 18 अगस्त 1977. जी ये है. मिल गया सर. अब इसका सर वो पहला पैरा मैं स्किप कर देता हूँ. अंडर द ऑर्डर ऑफ योर लॉर्डशिप मैं शुरू कर रहा हूँ. मिस्टर मसूद महमूद. बढ़ूं सर. पेज 201 से पढ़. जी सर, 201 से अगर आप पहला पैरा देखेंगे ना, तो दूसरा पैरा स्टार्ट हो रहा है मिस्टर मसूद महमूद. तो कुछ दिनों से नहीं जी. कौन सा? पढ़ूं सर. जी. दिस इज एग्जिबिट 10/9-1. अलीसा, मेरे पास 201 सफे पे ये नहीं है. नहीं, वो आप गलत पढ़ रहे हो सर. आपका सफा आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिए, आपका जो पेज है ना जी, वॉल्यूम 8. ये वो कटा हुआ है, गलत है. ये इधर दक्षिण के अंदर जो है ना, लेफ्ट साइड पे. ये लेफ्ट साइड पे सर, लेफ्ट साइड पे आप. मिल गया जी. शुरू करूं सर. जी प्लीज. मिस्टर मसूद महमूद डायरेक्टर जनरल अप्रैल 1974 में तैनात हुए, और आते ही उन्होंने, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, सियासी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, और ये क्या है, इंटेलिजेंस यूनिट बनाए गए, और काम काफ़ी हद तक तरीके के तौर पर शुरू हो गया. इसी दौरान 23 मई 1974 का वाक़या है
कि डीजी साहब ने मुझे बुलवाया और कहा कि उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। इतने में कोई और साहब दफ्तर में आ गए और वो खामोश हो गए और मुझे भी बाहर जाने को कहा। अंदाजन 1 जून 1974 को फिर डीजी साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलवाया और कहा कि इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन को उन्होंने एक अहम काम पर तैनात किया है, इसकी पैरवी कर लेना। उस गुलाम हुसैन को कुछ अरसा पेशतर साहब मासूफ ने इनाम अच्छी कारकर्दगी के लिए नेशनल असम्बली में दिया था। मैंने गुलाम हुसैन को बुलाया और पूछा तो उसने मुझे बतलाया कि डीजी साहब ने अहमद रजा कसूरी को साफ करने के बारे में कहा है। बाद डीजी साहब ने मुझे बुलवाया और इन्हीं अल्फाज को अहमद रजा कसूरी को साफ करता दोहराया, जिस पर मैंने बतलाया कि ये काम बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि ये डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर की है। इस पर खामोश हो गया और अपने कमरा में आ गया। 1 या 2 दिन के बाद मुझे लाहौर जाना पड़ा, जहां सोच विचार के बाद मैंने अपना तिब्बी मुआयना कराया और इस्तीफे की दरख्वास्त शामिल करके डीजी साहब को दी, जिस पर डीजी साहब सख्त नाराज हुए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म की तामील करने की तरफ मेरी तवज्जो दिलवाई और कहा कि अगर फिर ऐसी सोच को की तो याद रखना सड़क पर पाओगे। ये गुफ्तगू वापसी पर रावलपिंडी में हुई थी। 24 अगस्त को एक वाक़या इस्लामाबाद हुआ, जो वक़ुआ के बाद मुझे पता चला कि गुलाम हुसैन ने अहमद रजा कसूरी पर फायरिंग किया। डीजी साहब ने जिक्र किया कि ये कोशिश बेसूद थी, जो कि नतीजा ना की गई, जो कि पत्नीयतन ना की गई। गुलाम हुसैन ने मुझे बुलाया और उसने बतलाया कि उसने काम नहीं किया था। गुलाम हुसैन ने आज खुद पार्टी का इंतज़ाम किया और असला फराम किया, जिसका मुझे इल्म नहीं। इन्हीं दिनों मरहूम चौधरी अब्दुल हमीद बाजवा डीजी साहब आना जाना शुरू हो गया और वो कहीं ना कहीं मेरे पास भी आ जाते और नज़्म नक्श के बारे में बातें होती। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या गुफ्तगू। इन्हीं दिनों डीजी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब सख्त नाराज़ हैं और कसूरी के बारे में साहब कुछ होना चाहिए। मैंने इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन को बुलवाया और इसी मौजू पर गुफ्तगू की। उसने बतलाया कि वो काम पर लगा हुआ है, उससे और आने पर इशारा हो चुका है, ऊपर से भी इशारा हो चुका है कि जल्दी किया जाएगा। अभी बातें हो ही रही थी कि चौधरी अब्दुल्ला डिप्टी डायरेक्टर आ गए और उन्होंने कफियत पूछी, जिस पर मैंने गुलाम हुसैन को बाहर भेज दिया और चौधरी साहब को कहा कि गुलाम हुसैन को समझाएं। चौधरी अब्दुल्ला बाहर आ गए, मैं चले गए। गुलाम हुसैन ने गुफ्तगू करने लग गया। उसके बाद एक दफ़ा फिर चौधरी गुलाम हुसैन ने बरामदा में बात की। बाद गालबन 13 नवंबर 1974 का जिक्र है कि मैं वापस आया तो पता चला अहमद रजा कसूरी के वालिद साहब कत्ल हो चुके हैं। इसी स्ना में डीजी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारी क्या लिखा जी में क्या है, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है। जबकि चौधरी अब्दुल हमीद, जो कि डीजी साहब मरहूम मौके पर मौजूद थे, जिस पर मैंने कोई जवाब न दिया, मासवाए खामोश रहने के। इसके बाद चौधरी हमीद साहब काफ़ी दिन आते रहे, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने जिक्र किया और यूनिटों के बारे में बात की। यही डीजी साहब बात की। ये इसके बाद जनाब आगे कुछ नहीं। अब जनाब इसमें कन्फेशन क्या है? नहीं कन्फेशन मैं बताता हूँ। कन्फेशन जो भी है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्टेटमेंट इफ इट हैड बीन कंसिडर्ड, तो दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर। If your lordship remember, yesterday I read his examination in chief. He said Prime Minister called me and he said the order has already been conveyed to Mia Abbas. He is on the task. You just need to remind him. यही बात थी ना जी। अब
अगर इसकी बयान को देखें, he has not said anything कि there was a conspiracy between me and the former DG FSF. So ये fit in होती नहीं थी. अगर but I will submit this statement is still on the record. It is on the record. It has been recorded by the magistrate. But even the High Court, Lahore High Court said, no, this is not a good statement because it is belied by the prosecution. So he was a prosecution witness. And the Supreme Court, surprisingly, just write a para. It cannot be treated as confession. But the purpose was that since this statement negates the statement of their principal main witness, the Sood Mahmood, therefore this was not considered. He appeared in the witness box or not? नहीं विटनेस बॉक्स में तो हुआ ही नहीं ना सर. हुआ ये 164 रिकॉर्ड हो गया. लिस्ट ऑफ कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अंदर याद नहीं हुआ ये कि ये रिजाइल कर गया. इसको विटनेसेस में तो तब आता कि ये अप्रूवर होता. ही वाज नॉट अप्रूवर. अब तो फिर मुल्जम रहेगा ना. और क्रॉस एग्जामिनेशन का नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन की तो बात ही हो रही. रिजाइल 342 में किया. नहीं पहले ही. रिजाइल कैसे किया? रिजाइल जब हमें कैसे पता चले कि रिजाइल किया इसने? सर वो तो उसके 342 में भी लिखा है. मैं पूछ रहा हूँ ना 340 नहीं या कोई वो आया नहीं उसका नहीं या वो उन्होंने आके टेस्ट एज ए विटनेस आया उसने कहा ये मेरा बयान नहीं है. तो रिजाइल कैसे किया ये पूछा. एज ए विटनेस तो आया ही नहीं ना वो. रिजाइल नहीं हो हम कहते हैं रिट्रैक्टेड किया जो भी और ये वैसे अदरवाइज तो इनएडमिसिबल है, एक्सकल्पेटरी है. सर मैं ये बात नहीं कर रहा. मैं ये उन्होंने इसलिए आप कहते हैं उन्होंने इसलिए डिसबिलीव किया ताकि मसूद मामूद का जो बयान है उसको जिक्र ना पहुंचे. उसको नहीं आप कहना चाह रहे हैं. मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए. मैं जरा थोड़ी सी काफी क्लैरिटी करूं. Number one is he was not witness even after this statement. He was not a witness. He cannot be. He confessed his crime as an accused like other three persons. Ghulam Hussain also confessed. He became approver. Sufi Ghulam Mustafa confessed, but he remained accused. Arshad confessed, he remained accused. Iftikhar confessed, he remained accused. So mere recording of statement under section 164 will not make you a witness unless you are granted pardon and made approver. Otherwise, it is a confession. This is the legal situation. Now the Lordship's question, your Lordship asked, where from I can show from the record that he retracted from his confession. Page sir 4, volume कौन सा? Volume 7 कहाँ है? ये पेज 4 में ये इंटरम ऑर्डर है. ये ऑर्डर है पहले दिन का 24/9/1977. द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जी वॉल्यूम 7 बेटा. पेज सर इसका पेज है 3 वॉल्यूम 7 मिल गई. अब इसका पेज बता दें. अब इसका अगला पेज सर पैरा 5 पेज 3 से शुरू होता है. पेज 4 पे पेज 3 से ऑर्डर शुरू होता है. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट. पढ़ा था ना. इसी में आ रहा है ना जी. अब इसके अगले पेज पे आइए पैरा 5 देखिए. Yes, retracts. पढ़ूं सर. Mia Qurban Sadiq Ikram has also laid information before this court in writing today, which is to the effect that his client, Mia Muhammad Abbas accused, retracts the statement made by him under section 164 CRPC on the basis of the allegation that it is not a free and voluntary statement insofar as it was obtained under influence and question. This information be placed on the record. His correct name is Mia Muhammad Abbas या मियाँ गुलाम अब्बास? नहीं गुलाम हुसैन है. ये मियाँ मोहम्मद अब्बास है. He was director FSF. अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर जी. May I proceed further? अब ये जब आया क्योंकि he was accused, then he was examined under section 342. He was examined under 342.
Now, kindly see what did he say in 342. Which volume? Volume 4 Volume 4, starts at 817. page 817. Relevant is at page 854. जी जहाँ कन्फेशन की बात की एंड रेलेवेंट इज पेज 854 वॉल्यूम 7 पेज 854 दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्यूज अंडर सेक्शन 342 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये सवाल पूछे गए क्वेश्चन नंबर 60 वो सर बहुत पूछे गए 60 नहीं है 61 है आपको you're reading question number 61 ये है ना जो रेलेवेंट बाकी भी है पीछे बट टाइम का आज फिर मसला है ना जी पेज कौन से पे? सर 854 854 जी जी Question is it a fact that you made a voluntary statement under section 164 CRPC which was recorded by Mr. Zulfikar Ali Toor, Magistrate First Class Lahore on 18th of August 1997, Exhibit PW 10/9-1 वो जो उसके ऊपर भी exhibit लगा है। अब आंसर अगले पेज क्या है 855 पे This पढ़ूं सर जी पानी की तरह This statement was made while I was in custody of the FIA and under duress as well as promise, etc. I retracted from this statement later. क्वेश्चन नंबर Clear, sir? 61 नीचे जवाब अगले पेज फिर पढ़ देंगे मलिक साहब प्लीज Sir, mic pleasure, sir. Page 855. क्वेश्चन 61 Question नहीं सर क्वेश्चन का आंसर अगले पेज पे है ना आंसर पढ़ो क्वेश्चन 854 पे है 85 अच्छा इधर जरा गलत हुआ है इधर 855 पे और आंसर 856 सर ऐसे ही है ठीक हो गया आप अंदाजा लगाए ना कि हमें कितनी डिफिकल्टी आई है ठीक हो The statement was made while I was in custody of the FIA and under duress as well as promises, etc. I retracted from the statement later. ठीक हो गया जी वो कस्टडी में था तो फिर तो स्टेटमेंट उसने उधर उससे पूछा गया था कि आपकी कस्टडी में नहीं सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही कस्टडी में हुई ना इसको पकड़ लिया गया एज एक्यूज रिट्रैक्ट करने के बाद इसके बाइंडिंग इफेक्ट है कोई आपके नहीं वो तो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड पे है ना बाइंडिंग तो रिकॉर्ड पे तो है बट आप सर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं उसी की हद तक कर सकते हैं ना आर्टिकल नहीं, 43 नहीं। कानूनी शहादत के तहत तो उसके आर्टिकल 43 के आप उसको कंसिडर कर सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड अगेंस्ट हिम ओनली नो नो वो अलग बात है वो उस पे ना मैं मेरे मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं एक फैक्ट आपके सामने आ गया जी अब देखना ये है कि प्रोसिक्यूशन ने या कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ने नहीं कोर्ट ने इसको बिलीव क्यों नहीं किया अब कोर्ट हाई कोर्ट का मैं ऑर्डर पढ़ के आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं किया फिर सुप्रीम कोर्ट का पढ़ के बताऊंगा और फिर मेरा आर्गुमेंट होगा कि इसको कंसिडर ना करने की वजह क्या है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रिपीटेडली आई एम यही ग्रेटफुल तो टू क्लैरिटी चाहिए ना हाँ जी मलिक साहब यही तो क्लैरिटी चाहिए कि जब उसने रिट्रैक्ट कर लिया 342 में अपना प्रीवियस स्टेटमेंट तो आर्टिकल 43 के तहत अगर आप मानेंगे भी तो सच कन्फेशन विल बी ट्रीटेड ओनली अगेंस्ट हिम नॉट अगेंस्ट द को-एक्यूज्ड No, I am sorry, I could not. basically what you are saying it undermines the credibility of Masood Mahmood Yes. to this extent you can read it Yes. not to be used against anybody ये मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं शायद कामयाब हो जाऊँ सर मेरी सबमिशन सुने Your Lordship is correct, very correct, that this confession which is rejected may be considered against the accused. The court may come to the conclusion that no, there was no duress, there was no pressure. But they have not considered. But this document is there. But Your Lordship can consider this document to assess the statement of Masood Mahmood. Because it is totally in a different direction.
On material particle, his contradiction Masood Mahmood. And that is the reason the court did not accept his statement. Otherwise, had it been in line with the statement of Masood Mahmood, they would have accepted their statement not against him, but against the Prince Zulfikar Ali Bhutto as well. This is my submission. आपके कहने के मकसद ये है। समझ गए आप ये Sir, आगे बढ़ गए As a circumstantial evidence. Yes, yes. As a circumstantial No, evidence. not circumstantial evidence is altogether different. Then- It is a circumstance. Yes. It is undermining the credibility of the Yes, sir. approver. Well, yes. I think to this extent. Yeah, quite right, quite right. ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से विटनेसेस को मोल्ड करना चाहते थे जो इंटेंशन था। नहीं ये भी फिर मैं वही Inducement or duress or मैं ये अर्ज कर रहा ठीक है, समझ हूँ गए। इसको नहीं आपकी समझे बात नहीं ना जी आप मुझे मौका दीजिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि this document is an exhibited document duly proved by the magistrate, right? Now this document court has not considered against Mia Abbas on the ground that this is not voluntary. वो मैं पढ़ूंगा. My respectful submission, as the Honorable Chief Justice has rightly observed, very aptly observed, it appears that it is a very vast experience of criminal trials. Its lordship is of the view, and this is my submission, that you may consider, rather you must consider this document when I will go to the statement of Masood Mahmood, because he says, I conveyed the direction of the Prime Minister to this witness. And what was the direction? Direction was that since you have already been conveyed this direction through the former DG who was dead later on, so please execute that. This, he has not uttered a single word about that. He has narrated altogether a different story. Now may I just ask a related question? We've understood this point. Did Mr. Mia Mohammad Abbas enter the witness box? Sir, we cannot. No, yes or not? Not. But Okay. next is ठीक, why. but that's all. That's why- no, I've understood, but that's all. ये भी जरूरी है ना क्यों नहीं आया witness See, box? he can come as a defense witness. He's come as a witness for himself. He can come a 342 नहीं, witness. वो अलग बात करें ना. यही मैं पूछ रहा हूँ. सर वो witness नहीं That's है. why I'm saying, did he come on the witness board in any capacity? No, Other than 342 is not on oath. ठीक है. That is not the witness then his statement is recorded under section 340 subsection 2, that is a statement on oath. जी. But anyway, so I hope I have been able to Yes. clear. Now I will go to the, sir, I'm clear now? Yes, please. Thank you, sir. अगला सवाल अगर आप पढ़ मलिक साहब अगला सवाल अगर आप पढ़ लें तो पता लगता है कि जिसको महमूद अब्बास को बनाया गया अप्रूवर इसको भी ऐसे अप्रूवर बनाने की कोशिश की गई है वो कहता है इसका पढ़ दें अगर आप तो जरा रेलिवेंट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दिखाना भाई पेज वो आओ कौन वही से है 855 62 क्वेश्चन नंबर 6 डिफेक्ट मैं पढ़ लेता हूँ जी क्वेश्चन इट इज इन द एविडेंस दैट आफ्टर नहीं मेकिंग वो इसका जवाब पढ़ लें खाली जो आप पढ़ लेता हूँ The factual matter would be that I was asked to become an approver and I was shown a sort of plan to embark on, but as I did not and could not fulfill the demand, therefore I did not opt to become an approver. Instead, whoever some other officers were made approver, and in my very presence telephonic calls were being booked from direct dialing or otherwise in order to find out how the matter stood. It may not be out of place to say that most unfortunate part of the statement made by me is that the very statement was given to Inspector Muhammad Aslam Sahi and he took it to the office of Chaudhry Abdul Khalik, Deputy Director. Even there I was asked to have said this and not said that, etc. बस मैंने सब यही कहना था कि अप्रूवर बनाने के लिए इसको भी कोशिश की डिमांड दी गई लेकिन महमूद अब्बास एक बन गया अब मेरा पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट ने इसको डिस्कार्ड किया ऑन द ग्राउंड कि हिज स्टेटमेंट इज नॉट in line with the prosecution story. और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 130 ये एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल वर्ड टू दिस इफेक्ट जरा बताएं मैं बता सकता हूं सर
हाई कोर्ट का जजमेंट सर दीजिए। पेज है इसका हाई कोर्ट की जजमेंट का 655 PLD 1978 सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर पे, और इसका पेज है 655। ये शुरू कहाँ से होती है? ये रेलिवेंट ये वाला ये डिस्कार्डिंग वाली बात ये वही पढ़ने लगा 655 पे है। 655 जजमेंट की साइटेशन थे जजमेंट की PLD साइटेशन 1978 लाहौर लाहौर, मैं सर वो बताता हूँ 78 लाहौर पेज 523 सर 523। मेरे ख्याल में पेज 665 पे ये बात आ रही है। कौन सा 655 पे 665 पे? जी 655 पे सर। हाँ, पैराग्राफ 577 577 सर, ये पेज 655 है सर। 655 ये 655 पैरा 5 पैरा 555 577 जी 577 जी 6523 जी, let's read it. Please. It may be stated that the statement of Mia Muhammad Abbas, Exhibit PW 10/9-1, is partly self-exculpatory. He, however, confessed in that statement, having talked to Ghulam Hussain on the subject, that the mission about Ahmad Raza Kasuri should be executed with all haste, since he was informed by PW2 that the principal accused was angry. On another occasion, he admitted having asked Chaudhry Abdullah, Deputy Director, to bring around Ghulam Hussain with the same end in the view. The exculpatory part of the statement is clearly proved to be incorrect by the prosecution. By the prosecution. एविडेंस। हाँ, अब वो भी तो prosecution का विटनेस है ना जी, जब उसने स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, by the prosecution evidence, there is no reason to take it into consideration. So they are taking the inculpatory part into consideration. No, जो कहते हैं जी अब स्टेटमेंट को कंसीडर ही नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हैं ना। यही कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? The exculpatory part of the statement is clearly proved to be incorrect. By the prosecution evidence, there is no reason to infer take. आप कर सकते, you can infer कि उन्होंने पूरी स्टेटमेंट की बजाय कहा कि इनकल्पेटरी पार्ट को के बारे में खामोश हैं और exculpatory को exclude कर रहे हैं, which as per settled law is you have to take the whole statement as. बिल्कुल, very right. अब hope I am clear now. यही है ना ये आर्टिकल 43 जो मैं आपसे बता रहा था सर यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी बात 100% दुरुस्त है कि उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि एक डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड पे है जनाब तो उसको देख सकते हैं दूसरे गवाह के लिए। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की आप बात कर रहे हैं ना कि उसका स्टेटमेंट एडमिसिबल है या नहीं? वो नहीं, स्टेटमेंट तो एडमिसिबल है, स्टेटमेंट तो लिखा है मैजिस्ट्रेट ने, कानून के ताबे लिखा है, मगर वो कहते हैं क्योंकि ये इसमें अगर आप उसके इफेक्ट पे बात नहीं कर रहे ना कि अगर एक आदमी उसको रिजाइल हो जाए अपने स्टेटमेंट सर मैं कह रहा हूँ आपकी जब एक आम मर्डर ट्रायल के अंदर या कोई भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो जाता है तो उसका जब जजमेंट लिखा जाएगा तो उसको क्या आप रिट्रैक्ट को बोलेंगे नहीं ये ठीक है हम मान रहे हैं? नहीं सर मैंने ये कहा ही नहीं मैं इसको बिल्कुल सही, आप 100% सही समझे हैं। जनाब का कहना यह है कि अगर एक स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी है या वो किसी और रीजन से कोर्ट कहती है कि ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, ये अंडर ड्यूरेस है, ये है ड्यूरेस की बात उन्होंने की, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ना को कि उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। ये बात आपकी 100% सही। मेरी कंटेंशन ये है कि ये स्टेटमेंट इज ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। अब जब आप मसूद महमूद की एविडेंस को देखेंगे तो उस वक्त इसको कंसिडर करेंगे कि ये मसूद महमूद जो कह रहा है इस गुआ ने वो इस मुल्जम ने वो नहीं कहा अपनी स्टेटमेंट में जो मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया। मेरा पॉइंट ये है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं जनाब हवाला दे दूं। नहीं, मैं इसको बिल्कुल एक और तरीके से देख रहा हूँ। आई से द हाई कोर्ट हैज रिलाइड ऑन दिस स्टेटमेंट। ये आपकी बात भी सही है। नहीं, क्योंकि ये देखिए ये जुमला लिखने की जरूरत नहीं थी। He however confessed in that statement having talked to
yes. तो वो the High Court is only excluding the exculpatory part of it, but where it helps the prosecution case, there seems to be reliance on the statement. You can draw the inference. Because But sir, इसमें basically तो this was in response to justice. ठीक है, समझ गए. अच्छा, अब इसको देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. सर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देख लीजिए. PLD मेन वाली ना या मेन रिव्यू? जी, मैं मेन से ही रेफर कर रहा हूँ. अच्छा, मैं कोई चीज रिव्यू वाली में तो नहीं जा रहे. नो. और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आई एम रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट विच इज द मेजोरिटी जजमेंट. मैं दूसरी जजमेंट को टच ही नहीं कर रहा. अच्छा, इसमें हम कहाँ देखें? इसमें जनाब आप देखें पेज 109 पे ये जजमेंट है जी. 53 पे. 53 ये तो सबको याद है. 133 पैरा 133. जी. A perusal of the confessional statement. 109. जी Page 109. जी sir, 109. A perusal of the confessional statement made by appellant Mia Abbas under section 164 of the code shows that he tried to exculpate himself by laying the blame on approvers Masood Mahmood and Ghulam Hussain and incidentally implicating appellant Zulfikar Ali Bhutto in this crime. In the circumstances, this statement cannot be treated as a confession for the purpose of Section 30 of Evidence Act and was rightly not used as such by the High Court. अब उन्होंने भी यही बात की जो आप कर रहे हैं. बिल्कुल किया कि उन्होंने कहा ये हम इसको कन्फेशन कंसिडर ही नहीं करते. मैं भी यही कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कन्फेशन कंसिडर ना करें, बट ये बात तो रिकॉर्ड पे आना किसने कहा क्या. अब जब आप मसूद महमूद को देखेंगे कि भी उसकी स्टेटमेंट की corroboration सबसे ज्यादा यहीं से मिलती है. अगर ये इन लाइन होती तो फिर तो वो बड़ा मेरा ख्याल राइटली उसको मानते. अब ये मेरी इसमें सबमिशन है. आई होप सर आई एम क्लियर. Yes. आई एम क्लियर. नो सर, नो आई विल प्रोसीड. यस्टरडे सर आई Is it a good point to ask a few questions? ऑलवेज. No, because I want to finish with the approval statement. सर उसमें थोड़ा टाइम मुझे दे दें. मैं 15 मिनट मुझे दे दें अनइंटरप्टेड. ठीक. आप No, tell me whenever you want, then I'll ask. वो मैं जरा थोड़ा सा मैंने जो तैयारी की है ना चलें. मैं उसको थोड़ा सा अपना बता दूं. फिर जनाब सारा दिन सवाल पूछे. आई हैव नो. नहीं, आप चलें. Next. अच्छा जी. वो I will, sir, I will recapitulate the examination chief of the approver for the benefit of your lordships in just 3 minutes, not more than 3 minutes. Sir, is examination in chief spread over more than 18 pages, but I read only 10 or 9 or 10 pages and relevant part. The first part of his statement is a CV of Masood Mahmood, wherein he stated that he joined the police service in 1949, then he remained posted at Karachi here and आगे बढ़ें, we've done. Sir, अब आगे. Sorry, I have to keep you pushing because I am also running against time. मैंने 3 मिनट लिए आपसे. 3 मिनट. अब मुझे करने तो देना जी, फिर वो आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं वापस ही बढ़ जाता हूँ. अब मैं थोड़ा सा टाइम दे दी. ये मैं आज इसको yes. सर मैं 1:30 बजे से पहले इसको कंक्लूड कर दूंगा. ये टाइम आप नोट कर लीजिए. 1:30 टाइम नोट कर लीजिए. मैं इससे पहले इसको कंक्लूड करूंगा. बट सर बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही ईमान से मैं ऑनेस्ट बात करूं. एक चीज इंपॉर्टेंट है और जनाब जब तक सुनेंगे नहीं, हम सुन रहे हैं, आप और दूसरी बात यह है कि जब तक समझेंगे नहीं उसको यूज नहीं करेंगे. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मुझे मौका दीजिए. जी करें. सर अब वो मैं बात कर रहा था कि 3 मिनट में आई वांटेड टू रिकैपिचुलेट. नाउ it will be 4 minutes. He has given his CV. He joined the police service, remained posted such and such.
to East Pakistan, came back, and he was posted in establishment division, then a punishment post, and then comes the story. He was called by Mr. Wakar, who was establishment secretary of the time, and he was conveyed the message that Prime Minister wants to see you, and you must accept the offer which is made to you. First meeting with the Prime Minister praises his integrity and hard work and offered the job of Deputy Director General FSF. And then Prime Minister said, okay, I want to make this force a deterrent force so that people must have fear of it, and the purpose of the force will be to disperse the rallies, this and that, and to send a person in plain clothes to in the meeting, at the gathering, whatever. And to this extent, he has not raised any objection. He said, okay, this is my integrity permits me to do so. He accepted the job. And then comes the second part. Second part was that he called me, and then he narrated an incident of National Assembly where it is the prosecution case that the Prime Minister of that time, Zulfikar Ali Bhutto, without the Speaker's permission, stated that I am fed up with this man and I cannot tolerate this nonsense anymore. Then he called this man and asked him, a task has been assigned to Mia Muhammad Abbas through your predecessor, and you please ask him. This man is shaken by hearing this word and pleads, sir, no, this is against my conscience and dictates of God, I can't do that. Anyways, in this perplexed condition of mind, he comes to his office, called Mia Muhammad Abbas and said, I repeated these words verbatim. And then thereafter he says, I was reminded by several times by the Prime Minister, goaded by Saeed Ahmed and Bajwa, and ultimately he goes to the Multan, and then the news came that there is a firing at Lahore, and instead of Kasuri Sahib, his father has been murdered, and this was a surprise for him. And then comes the point, the Prime Minister again asked him, you have not accomplished the task. He said, no, sir, I can't do this. It is against the dictates of God. Sir, abhi 1.5 minute hai. It is the dictates of God, and he says no to the Prime Minister. And this was the end. Ultimately, he was taken into custody, and that is the answer. No, this I have concluded. This was the brief summary of yesterday's proceeding, the last phase of the proceeding. Now, sir, the very important point now I will raise, sir. No, sir, it is in the experience of your Lordship and everybody who has practiced or is practicing on criminal side that in cases in our courts are decided on the evidence of the witnesses, I mean oral evidence. Very, very difficult task and very dangerous as well. Because in civil cases, you mostly rely on the document. Here you rely on the words uttered by the witnesses. And the test is very difficult. There is no scientific test to find out whether a man is speaking the truth or telling the lie. No, but the law has taken care of the situation. Law has taken care of the situation, how to analyze the evidence, how to assess its worth, how to appraise, how to reappraise the evidence. The law has Evidence Act of that time. Now Qanun-e-Shahadat has taken care of that. I will draw your Lordship's attention to Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat. Mera kahan hai? Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat order. You refer to the Evidence Act because at that time... सेम है जी, वो सेक्शन 3 है उस वक्त. अगर वो आप लिखना तो चाहें वही चाहिए ना, क्योंकि एविडेंस एक्ट था ना. वही है सर, एक इसमें कोई चेंज नहीं. ठीक है. आप वो कहते हैं मैं वो पढ़ देता हूं. नहीं, ठीक है. If it's the same, एक then... ही चीज है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है. सेक्शन भी वही है. 2-4. नहीं, सेक्शन 3 है. Section 3. वो आप नोट कर लेना कि सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 ऑफ कानून-ए-शहादत ऑर्डर, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग. सो बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई नीड योर अटेंशन सर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जी. Effect is said to be proved. Effect is said to be proved
when after considering the matter before it, the court either believes it's to exist, this is the one situation, or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the case, particular case, to act upon the supposition that it exists. That it exists. No, sir, it has two parts. First is the court consider that this fact does exist. Here the test is court's evaluations. In the second situation, the test is that a prudent man under the circumstances of the case ought to consider that it does exist. So far as first situation is concerned, example could be, sir, may I proceed, sir? Ji. Something happens in this court. A lawyer claims that I have witnessed this, and his lawyer's case is fixed before your lordship. His name is reflected in the cause list, and his name is also mentioned in the order which has been passed by your lordship on the particular date of hearing. Here, the presence of the lawyer on that particular date, at that particular time, to that extent is effects which court will consider that it does exist. It does exist because it is so natural. And now I give another example from this case. The narration of the events of this sad incident at Lahore by Ahmed Raza Kasuri Saab. He was driving the car, he was, his father, his mother, his khala, they were sitting in the car, they were firing at the car. To this extent, this fact, the court will say, yes, it does exist. More particularly, when none has challenged this. So this is the first situation. Now I am coming to the second situation. Suppose court says, we don't consider this witness on the first criteria. Then court will switch to the second criteria. What could be the possible example of that? Sir, we have a reporter in the court. They have association of the reporter, court reporter, and we see they are daily present in the court. If something is said by a reporter who happens to be present in court so frequently, then that is covered by that first category. But if some reporter or some media person who normally doesn't come to the court regularly, I don't want to name anyone, but if he says on particular date I was present, so that will be determined under second category. That will have to pass through the test of probability and standard of prudent man. So these are the few examples that in one category you are so clear, you are so confident, yes, it does exist. In the second category, you will apply the test of a prudent man. In our cases, all 90% cases, always it is the second test which is applied. Now the question arises, who is the prudent man of law? It has not been defined, sir, anywhere. Who is the prudent man? It has not been defined. So, does prudent man means a jurist, a scholar, a lawyer of the caliber of Mr. Etizaz Hassan or Kasuri Saab? Are they the prudent man of law? My respectful submission is no. A prudent man of the law has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. That is the standard. A prudent man of law is not a jurist or intellectual, but he has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. And in this respect, sir, I will cite a judgment of the Lahore High Court. This is PLD, 2010 MLD
2010 MLD 1612 एक किताब दे दीजिए For what? ओ इसी पॉइंट पे कि प्रूडेंट चलें, छोड़ें ये बात। सर एक बड़ा जरूरी है देख ये लीजिए 2010 का जजमेंट है। सर कुछ नहीं हो गया 2010 कुछ 100 साल पुरानी बात तो नहीं है कल की बात नहीं, है हम चाह रहे थे 100 साल पुरानी बात। अब वो भी बता देते हैं पहले ये तो देख लें सर थोड़ा सुन ले पता है क्या है? I know, but Sir, we but- will read it सर मैं उसको because I'm only worried about something else. मैंने आपसे ये कमिटमेंट कर ली कि अच्छा चलें, पेज बताएं इसका। 130 से आगे मैं नहीं जाऊंगा One page. मैं बताता हूँ सर नहीं आप ही का जजमेंट है आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए चले नहीं मैं आप देख लेंगे जी आप पैरा 17 देख हाँ, आप आप पैरा 17 पढ़ लें पेज है आप पढ़ेंगे प्लीज। मैं पढ़ देता हूँ 1621 The main point. The main point which is to be determined by this court is whether the story set out by the prosecution in the circumstances of the case is probable or whether the prosecution has proved its case against the appellant without any shadow of doubt. Article 2.4 of Kanuni Shahadat Order 1984 contemplate how effect is proved. It says, ये मैंने आगे 18 में, a prudent man is law is neither genius nor a goof, but has the same meaning as consumer in economics and common man in politics. So, important point so far as to determine the prudent man is that its definition changes with the circumstances of the case. When you are considering the evidence of the prudent man, in the case of a lawyer, the standard is different. When you are examining the case evidence of a police officer, the standard is different. When you are dealing with the case of KPP, the definition of prudent man will not be the same as it is in Punjab. And similarly, while you are dealing with the case of Balochistan, the prudent man of Balochistan is different from the prudent man of KPK. So that changes with the circumstances of the case. So the next question is whether the court will call some prudent man and get his opinion, because we are not having the jury system in our country. That is the reason it is said generally that all the lawyers and the judges who are practicing on the criminal side, they must have some idea of behavior, conduct, action and reactions of different segments of the society. A good lawyer ought to know how a particular community behaves. As we have in Punjab, I can quote 110 examples, but I will not. So this is the test which you will apply. Now, this test, when applied to the evidence of a witness, an ordinary witness, then the court, after applying the test, concludes whether its evidence is probable, whether it's inspired confidence or not. But in the case of a prover, the situation is altogether different. In the case of a prover, it is almost settled that his evidence will be viewed with special care, and evidence of a prover or accomplice cannot be viewed without natural reaction of distrust and incredulity. So this is the basic principle. When you start examining the evidence of the approver, so you will start with the negative. Okay, you will not believe this. And question arises why it is so. Why this care is to be taken while examining the evidence of approver. There are 4 reasons for that. 4 reasons. जी कुछ नहीं। Number 1 is ये भिजवा दें। he is self-confessed criminal. This is number 1 reason. He is self-confessed criminal because he is accepting his guilt
he accepts his participation in the crime. He is a self-confessed criminal. Number two, he has betrayed his former associates. He has betrayed his former associate. वो डॉक्यूमेंट निकाल दो जी उसकी है इसकी जिसमें वो टेस्ट है डबल टेस्ट का यार नहीं पता. He, having betrayed his former associate, he is under the temptation of saving his own skin because he has been pardoned. He wants to save his own skin. And number four is he has a fear of prosecution. Under section 339 of Code of Criminal Procedure, he can be prosecuted if he did not toe the line of the prosecution. These are the four reasons why his evidence, special care is taken while examining his evidence. Now I will read a little passage from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, I mean the majority judgment, where exactly they have settled this point. They have relied on this. तो दीजिएगा यार कहाँ गई हाँ ये ले ली वापस नहीं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 53 दोनों सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीम कोर्ट की है ना अब यही छोड़ना paragraph sir 422. This is a judgment which was been discussed by the Supreme Court and then relied. Just two paras sir. Page? Yes sir, 196. Ji. Para 422. More recently, in the case of Dr. Muhammad Bashir, this court has expressed the rule as under. As a rule of prudence, which has almost hardened into a rule of law, it is dangerous to act on the uncorroborated testimony of an approver who is a self-confessed criminal having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, suffering from the stigma and mark of depravity of character, and approver's evidence cannot be viewed without natural reaction to distrust and incredulity. His evidence must first be tested on the basis of probability or improbability, like the evidence of any other witness, and more strictly so in his case, because it is the statement of a person of suspicious credential. His evidence needs corroboration for the simple reason that it cannot be accepted without mental reservation and distress, and it must therefore gather support from other sources to induce faith in its veracity. अब मैं यहीं पे छोड़ के 424 पे आ जाऊंगा. ये अगर कहते हैं तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ. ठीक है 424. I am in respectful agreement with the rule laid down in Dr. Muhammad Bashir's case by 4 learned judges of this court, and only wish to add that when the qualifying phrase "a reliable witness" is used in relation to an accomplice, the reference obviously is not to his moral character and dependability, as the courts are well aware that he is a self-confessed criminal having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, and it is precisely for this reason that special care has to be taken in the matter of appraisal of his evidence. The intention, therefore, underlying the first test is to determine whether his evidence is probable and natural in the circumstances of the case, with the result that he can be treated as a reliable witness and his evidence safely acted upon.
if requisite corroboration is forthcoming, or whether it suffers from such infirmities and improbability that it cannot be said to be lacking an intrinsic worth. In the later stage, the question of seeking corroboration would hardly arise. That was the submission which I made yesterday. He is subject to double test. But if he fails in the first test, then you will not apply the second test. You will not ask for corroboration. No amount of corroboration will cure the defect. अब इसी पे now I am coming to the statement of Mr. Masood Mahmood. I read his examination chief, and yesterday I stated that I will not touch his cross-examination. Later on I will quote just few paragraphs from his cross-examination, but at the moment, while relying on this statement, I will show to your lordship that this is not natural. It doesn't fall within the category of first test, but you will, lordship, now will apply a second test on this statement and treating him as a normal witness, as if he's a normal witness. And if we are applying that test, no sir, his evidence I have read, is that part as I have read. Now sir, first thing which I will say, sir, after reading his examination chief, what emerges about his personality, what type of person he appears. If we accept his testimony, so what emerges about his personality? And we will accept you as a prudent man. No, sir, नहीं, अभी टेस्ट में अप्लाई नहीं कर रहा. अच्छा. वो a prudent man नहीं हो सकता. वो डफर नहीं होना चाहिए. जी. तो मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा कौन है prudent. I can't be the prudent man. लिख के दे दे. लिख के दे दे. आप लिख देंगे ऑर्डर में तो वो लिखा ही जाएगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर. थैंक यू वेरी मच. What emerges from his statement, I'm just describing, if I have read a statement, so what impression I will form. What impression I will form, what type of person he is. Sir, he is a career officer. He's a career officer. Nothing wrong or adverse on record against him. This is the second thing. Number third is an officer of integrity. This is his claim, and he says that even it was appreciated by the Prime Minister of that time. Zulfikar Ali Bhutto praised his integrity. So this man is with clean taste, clean slate, very neat and clean person, having no negative point in his personality. On the contrary, what emerges about the personality of Bhutto? What emerges? I'm sorry, this would not be my personal opinion. I'm sorry if somebody, family member is sitting over here. This is not my opinion about the personality of Bhutto. Why do we have to go there? तो मैं देख रहा हूँ कोई गुस्सा आज कर नहीं, why we are going there? Let's stick to the witness. I'm just expressing my feeling that this, what words I will use, they may hurt their feeling. I was clarifying this is not my opinion. Let's avoid it. Let's avoid it. Don't compare him with the. No, sir, that is must. That is must. That is must. Why? That is must. One personality, other personality. No, but you don't gauge a criminal or a accused on how he compares with the proof. No, sir, I'm not. Please let me explain. Just be with me for 2-3 minutes. I will not use any negative words. But I will just say that if his evidence is considered, so impression about Bhutto is, I will use the soft word, that he will not tolerate any dissent, even in political matters. Number two, according to this, yes, इसी की बात कर रहा हूँ. One opinion. यही मैं कह रहा था ना. Yes. यही तो मैं. He must get his way. Fine. दूसरा, he can go to the extent of taking life of his political opponent. This is this is their case. Yes, यही मैं कह रहा था. अब now,
your lordship will see what was the task for appointment of this gentleman. Now my submission will become relevant. What was the task? Number one was to raise the force, that is FSF, into a deterrent one, so that people must fear. And the force is to be used for political purposes. Number three, the most important was to kill a political opponent. This is the task of the Prime Minister as per prosecution. And for that purpose, he is looking for a suitable candidate. That is the reason. Now question arises whether the Prime Minister had no other option except to appoint only Masood Mahmood. Had it been a position that Prime Minister had no choice, choice was very limited. You have to select a person who has served in East Pakistan, who has served in Karachi, and he is the person who fulfilled all these requirements. Had this choice been... He was also God-fearing. He was also God-fearing. नहीं वो आगे बात कह रहा है सर वो आगे आ जाएगा वो चीफ साहब नाराज हो जाएंगे मुझे बात को कंप्लीट करना वो अब ये वो कह रहा है अब लॉ क्या कहता है एफएसएफ का एक्ट क्या कहता है इसके नीचे इधर ही मैंने रखा था देखो ये अब एफएसएफ एक्ट में ये सर एक्ट है 1973 का ये है जी ना आपके पास इधर प्लीज दीजिए जी ये पास हुआ है जी ऑन 29th of June 1973 इसका सेक्शन 5 देखिए जी Appointments of officer of the force. For the purposes of this act, the federal government may, by notification in the official gazette, appoint any person who is or has been a member of armed forces, the civil armed forces or the police force. Now, kindly see the choice of the Prime Minister. From 3 places he could pick a person who is serving army officer, who is serving in civil armed forces, and he is from police service, and even retire. Now the point comes when I said I will make this submission why this person will be chosen for the task. In his CV, he has not said anything which could make him relevant for the task. Had he said, sir, I was considered an encounter specialist, and in such and such time, I killed such and such person. Yes, then he could be a relevant person. But how the Prime Minister will go for this gentleman who is a neat and clean person, who is nothing adverse against him, and who has integrity which is praised by the person who is appointing him? Can any sane person will believe? Would any prudent man will believe this story? Would any prudent man believe this story? Why I will hire him? Why I will appoint him? Why? Answer is no. And then, particularly when I have a wider choice, Your Lordship, I could go to the retired person, find a retired police officer, and then there is no condition that he should be a retired officer of grades 20 or 21. Even it could be appointed as retired SP could be appointed. So there were many, and particularly in Punjab, many could be appointed. But why? Why he was threatened? Accept this assignment, otherwise you have small children. Could it be a reason? So this was my submission, which I was making the comparison of personalities of the authority who has to appoint and the person who has been called for this. So my respectful submission is, if we will apply the test of prudent man, and Your Lordship think like a prudent man, not like a judge,
If your lordship think like a prudent man, so there could not be any other answer, there could not be any other conclusion. He would not be offered this job. This is, Manzoor Malik, I bring another perspective. yes. Let's suppose for the time being, I hope you don't mind, I'm the Prime Minister and I'm looking to appoint a Director General of FSF and I want a man of integrity. And I say, I want you to kill my opponent. And you say, yes, I will. I will sack you there and then. And you may say, no, I will not, and I will appoint you. So it could be a test. You understand? No, are you following what I'm saying? I got your The point. mere fact that I've put it to you doesn't mean I intend to. If it's a time of appointment, at the point of appointment, I will ask you, are you prepared to commit a crime on my behalf? But- and he says, yes. It may be I don't appoint you. For that very reason, it may be a trick question. Let me explain. We are assuming. No, quite right. Ji. I will explain. Your example could be correct if in that meeting I appoint him and before appointing I don't say to him that I want to make it a deterrent force for controlling my opponent. So this example doesn't fit in this situation. No, just to see your own integrity. No, I want integrity. I want crush my opponents. Yes. So are you prepared to commit a few crimes for me? And you say yes. No. First crime, first meeting में there is no mention of this killing. This is in the second meeting. In the first, मैं बात we समझ गया are हूँ। accepting whatever he said is partly true. I change the scenario completely, and I say it could be a test. नहीं वो टेस्ट इसलिए I mean, I don't know. नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल अगर आप इसको इस तरह लें कि आप एक बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं और आप समझते हैं ये इंटेग्रिटी वाला है तो आप उसका टेस्ट लेते हैं कि यार मैं तुम्हें कहूँगा ये फाइल नहीं इस तरह कर दो कहते जनाब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा आप कहते हैं यार ये सही है इसको लगा लो रजिस्ट्रार अपना यही बात कर रहे हैं ना आप Exactly. अच्छा और इससे आप मेरा जहन में जो बातें आप क्या अंदाजा लगाएंगे? आपने टेस्ट हमने आप जैसे इंटेलिजेंट बंदे का टेस्ट अप्लाई करना ही नहीं है हमने अप्लाई करना है प्रूडेंट मैन का हमने आपका टेस्ट अप्लाई नहीं करना ये बात आप इसको इस तरह देखें बड़ी मैं समझ गया हूं आपकी बात क्वेश्चन ये है कि आप पहली मीटिंग में कहते क्या उसको आप तो ये कहते ही नहीं कि मैं अपॉइंट करने लगा हूं आप तो उसको कहते हैं कि मैंने एक ये फोर्स बनानी है ये है वो है और आगे से वो ये नहीं कहता वो कहता मेरी तो इंटेग्रिटी इस तक तो वो एग्री हो गया मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उसको बुलाऊंगा क्यों या तो मैं आगे कुछ प्लान किया ही नहीं आपकी मिसाल के मुताबिक ये तो उस हद तक खत्म हो जाएगी कि अगर ये टेस्ट तक थी तो ठीक है उसके बकौल तो मैंने सारे काम करवा लिए उससे हमने तो करवा लिए ना हमने तो कह दिया बंदा भी मार दो ये भी कर दो वो कर दो इसलिए ये पहला टेस्ट जो आएगा ये होगा ही नहीं ये बंदा चुना ही नहीं जाएगा आज भी इसी तरह अपॉइंटमेंट्स होती हैं साहब इंटरव्यू करके जो भी करना है वो अलग बात है अब ये दिस वाज माय फर्स्ट सबमिशन This is my first submission and I will request your lordship to this is not the first category where your lordship will come to the conclusion that this fact does exist. This is the second category where the test will be of a prudent man. A prudent man. It's very difficult. You will assume. Manzoor Malik Sahab, I don't think we are getting too much here because a prudent man in a very first meeting with a stranger who doesn't he know will tell him that actually I want to commit murder. I mean, would you accept that or that person? नहीं वो तो ये हम बात समझ गए point. यही मैं कह रहा हूँ ना जी या तो आप ऑलरेडी छानबीन कर चुके हो किसी की तो वो ये इस किस्म का आदमी इसका रेपुटेशन है सर नहीं दूसरी बात ये है असल में गलती प्रोसिक्यूशन से हुई या विटनेस बड़ा क्लेवर था कि वो अपनी कोई बुरी बात बताना ही नहीं चाहता था असल बात ये थी अगर तो वो सही देखें अगर आप इसको आपसे कुछ लीगल सवाल करना चाह रहा हूँ सर मुझे ये खत्म कर लेने दें मैं लीगल भी बताऊंगा फैक्चुअल भी बताऊंगा ये मुझे बस मैं थोड़ा ही टाइम है बस bear me for another half an hour मैं मुझे कंक्लूड कर लेने दें ताकि मैं प्रॉब्लम है कि मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कह लूँ ये मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब सेकंड सबमिशन इज
as I submitted yesterday, that whether if this statement of approver is accepted as gospel truth, PSG jo kaha theek kaha. So the first test is whether it falls within the definition of conspiracy as it is given in section 120A. May I read that section, if your lordship wishes? As you wish. As your lordship so desires. 120A. So छोटा सा है, कुछ ज्यादा नहीं. जी हाँ, पढ़ा मैं, आप फिर से पढ़ने. बाकी भी शायद पढ़ लें आप. ये जी 120A, definition of criminal conspiracy. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. आगे explanation वो इतना relevant नहीं है. अब क्या ingredients हैं? Two or more person agree to do illegal act. For this case, this is relevant. So, if we consider the statement of this approver, so what he said, may I read it again? He said, I was called in the second meeting. Prime Minister said, a task has already been assigned to Mia Ghulam Abbas through your predecessor to eliminate Kasuri Saab. And you please remind him and get it done. You will be held personally responsible. This was offer, if you take it in the civil law sense, a contract, an agreement. Agreement की definition वही है ना, कि जब आप एक acceptance है, offer है, acceptance है और consideration है. अब इसमें एक offer गई उसको कि भी ये काम करोगे. So what is his reply? He says, sir, I was shaken. I said, no, sir, this is not only against my conscience, but this is against the dictates of court. This is his statement. And then he said, Prime Minister lost his temper and I came. Actually, it was a direction. It was a direction by the Prime Minister. Say ना, मैं तो conspiracy में ला रहा हूँ ना, direction थी ना, तो direction. Is not. So would it be conspiracy? My respectful submission is no. It was not a conspiracy because he then thereafter, and if he see, नहीं, अगर हम इसका चीज ले लें as is, it's not actual conspiracy. The conspiracy was the earlier conspiracy. मैं कहता हूँ इसी को blame ना. Conspiracy on a conspiracy. No, This no. is a very, देखिए, this is a very strange conspiracy where instructions to murder have been given to an officer, and then the conspiracy is diluted by informing another person that I have so conspired. So it's a conspiracy on a conspiracy. नहीं सर नहीं, ऐसे This नहीं. is, in this way, the whole world may get to know of it. नहीं सर ऐसे नहीं. कंस्पिरेसी के आगे आप अगले सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें यह है कि किसी स्टेज पे भी अगर उसमें आप शामिल हो गए तो आप सबके एक्ट के जिम्मेदार होंगे. वो मैं पढ़ नहीं रहा, कोई टाइम बचा रहा हूँ आपका. नहीं, वो पढ़े ना, कहाँ लिखा है? सर वो ऐसे ही है सारे. आप 120 से आगे आप चलते जाएं तो यही लिखा है कि फिर उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे 115 सेक्शन पढ़ ले, ये लंबा हो जाएगा. आप वो अबेटमेंट के सारे सेक्शन पढ़ लीजिएगा. कंस्पिरेसी फॉर्म ऑफ अबेटमेंट. अबेटमेंट की डेफिनेशन में कंस्पिरेसी भी आती है. और Let's read it. I think we should. साहब मैं तो I would love sir. Because it's troubling me, that's why. नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने. मैं तो डर रहा हूँ ना जी आपसे. उस दिन का मैं मुंतजर हूँ. जी. नहीं सर नहीं, मेरा ये है ना 120 तो पढ़ लेना जी कंस्पिरेसी. अब इसकी सजा जो होती है कंस्पिरेसी में वो 109 में होती है. ये अबेटमेंट कंसिडर किया जाता है. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. एक 120 अगर आप पढ़ें A, a definition of criminal conspiracy when two or more persons agree to do or cause to be done. ठीक.
agree to an illegal act. So I'm saying that has already happened, that conspiracy. सर मैं ये This is a second conspiracy. What is it about? उसमें नए बंदे को ऐड किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फेयर असिस्टेंट, मैं आपकी बात मेरे जो कंटेंशन है उसकी सपोर्ट में जाती है, बट आई एम हियर टू असिस्ट योर लॉर्डशिप एज अमाइकस. आई डोंट रिप्रेजेंट एनी पार्टी. No, we know that. मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद अब आप इसका ये पढ़ लीजिए, 120B पढ़ लीजिए पहले, ताकि बात क्लियर हो जाएगी. जी पढ़ें. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he has abetted such offence. Abetment आ गई ना. अब इसीलिए for the purpose of punishment we will go back to abetment. Conspiracy. I beg to differ. I think the conspiracy definition is contained in 120A, and this is a punishment. It does not add to the thing, it just elaborates. It's not adding new definitions to conspiracy. 120 पर B पढ़ा है. बी में तो सजा है. तो मैं उसी को कह रहा हूँ ना, कंस्पिरेसी की सजा कहाँ मिलेगी कि उसको अगर उसकी कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि इसकी सजा क्या है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव अबेटेड द क्राइम. I have understood that. यही है. I am talking about the definition of conspiracy. I'm just saying, if we take Mr. Masood Mahmood's statement in its entirety as true, Yes. does it constitute conspiracy under 120A? That's all. वो यही है ना जी कि ये सब्सिक्वेंटली उसमें आप शामिल हो गए कंस्पिरेसी में किसी स्टेज पे. किसी, ये तो बड़ा सेटल्ड लॉ है ना जी. ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ. नहीं, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ. 2 लोग कमरे में बैठे, तुम इसको कत्ल कर देना. सही है, बिल्कुल. या 3 लोग बैठे, बिल्कुल ठीक. ये हो गई कंस्पिरेसी. सही है. हो गई ना कंस्पिरेसी. सही है. अब एक माह बाद या चंद दिन बाद एक और मीटिंग होती है वन ऑफ द कंस्पिरेटर्स की किसी और के साथ. हाँ, मैं ये कंस्पिरेसी कर चुका हूँ सर. फिर भी वो दूसरी वो कंस्पिरेसी है ही नहीं. सर नहीं सर नहीं. आई बैक वो तो डिस्क्लोजर कर रहा है सर. आप मुझे मैं फिर इसमें टाइम बड़ा लग जाना है. मेरी बात को आप ये सुन के सच मान लीजिए कि ये ठीक है, बाद में आप इसको पढ़ लीजिए. मल्टीपल कंस्पिरेसी हो सर गया. मल्टीपल नहीं है. दिस इज नॉट. आप ये कह रहे हैं कि कंस्पिरेसी एक होती है, उसमें कंस्पिरेटर्स जो हैं वो ऐड होते हैं. क्या बात है. तो आप ये कह रहे हैं माशाल्लाह. मैं नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है. जो इलीगल एक्ट है वो एक हुआ, उसमें लोग ज्यादा आते जाएंगे. जैसे मैं आपका नाम मैं नहीं लेता, मैं अटॉर्नी जनरल के साथ कोई कंस्पिरेसी करता हूँ, इज कैपेबल ऑफ डूइंग. एग्रीमेंट है. मैं उसके बाद ये जाके लाहौर में किसी और बंदे को ऐड कर लेते हैं. मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐड किया उसको, वो भी शामिल हो जाएगा. देखिए मंजूर मलिक साहब, फिर बात फर्क हो जाएगी. फिर होगी कि मैंने उसको कहा था, वो तो बेकार निकला, उसने काम नहीं किया, अब तुम करो ये. सर ये बात, ये हो गई फ्रेश कंस्पिरेसी. मगर ये बात नहीं कर रहा है, तो ये मुझे कंस्पिरेसी तो जरा मुश्किल लग रही है. कंस्पिरेसी फिर इसको ऐसे करते हैं, मैं दूसरी बातें खत्म कर लेता हूँ इसको, फिर कल पूरा केस लॉ मैं आपको लाकर दे दूंगा. इस पे केस लॉ है. आपकी बात सही सर. ये इसमें अभी सारा कुछ है कंस्पिरेसी में जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है. ये जो जजमेंट आप पढ़ेंगे ना उसमें भी जजमेंट हैं. मुझे फिर बार Before I read a judgment, I like to read the plain language of the provision. Plain language of the provision does not seem to suggest that subsequent disclosure of a conspiracy or subsequent calling upon someone else to please fulfill the conspiracy that I entered into earlier. 100% जो मैं बात कर रहा हूँ, that is in accordance with law. I am saying with full confidence. मैं और आप एक conspiracy करते हैं,
मैं लाहौर में जाके तीसरे बंदे को शामिल करता हूँ, इवन विदाउट योर नॉलेज, वो तीसरा बंदा भी शामिल होगा और आप भी उसके एक्ट के जिम्मेदार यानी होंगे। उस जुर्म को आगे बढ़ाने के कहा लिए ये जा रहा है कि 120A में ऐसा नहीं लिखा सर, हुआ। बिल्कुल It लिखा। may be interpreted somewhere नहीं, else, ये सर लेकिन ये बिल्कुल interpret सही हुआ कह रहे हैं। इसी तरह देखिए ना, आप इस केस को ही लीजिए, आप इस केस को लीजिए, कंस्पिरेसी की आप मान जाएं कि मसूद महमूद के साथ भुट्टो साहब की कंस्पिरेसी है, तो भुट्टो साहब ने मौके वाले बंदे को तो नहीं कहा कि मार दो, ना वो कंस्पिरेसी में शामिल थे। यानी वो आगे जब ये एग्जीक्यूट करने जाएंगे, हो सकता है उस नहीं, शख्स ठीक को है, मजीद ओके, लोगों की फाइन। आगे बढ़ते हैं। हाँ। क्लियर हो गया सर, ये कंस्पिरेसी का I will put it this way, you have not been able to persuade me, but आगे बढ़ते हैं। मैं क्लियर है सर जी। ऐसे ही है, मुझे फिर आप टाइम केस लॉ में दे दीजिएगा बाद नहीं, में। केस लॉ इसमें तो केस लॉ की जरूरत ही नहीं है, बहरहाल ये पे छोड़ दें, आप इसको इस तरह चलिए हम समझ इसको लें। साइड पे रखते हैं। अभी आप इसको टेस्ट पे ही रहें कि मसूद महमूद को आप क्या समझ रहे हैं, ठीक। आप उस पे रहिए ना। अगर आप Got it. अगर उसको मानेंगे नहीं तो आपकी डेफिनेशन जाए वो रेलेवेंट ही नहीं रहेगी, मेरी बात रेलेवेंट ही नहीं, आप उसको ऐसे ले लीजिए, ना मानिए मेरी बात। अब मैं अगली बात, मैंने ये कहा कि अगर ये आप वाली बात माने फिर देन इट इज नॉट ए कंस्पिरेसी, ठीक है। अगर मेरी बात माने तो मेरी बात मानने के बावजूद भी इट डज नॉट कम विद इन दैट डेफिनेशन बिकॉज देयर वाज नो एग्रीमेंट। मसूद महमूद का भुट्टो साहब से कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं बिकॉज ही डिड नॉट एग्री टू दैट। देखिए फर्क ये, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, मैं एक तरफ स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप दूसरी तरफ मैं स्ट्रेस कर रहे सरेंडर कर जाता हूँ आपकी बात। नहीं चले आगे बढ़ते हैं। मैं छोड़ देता हूँ, हाँ। कोई बात नहीं, नहीं वी गो ऑन, चलें। कोई नो इशू। अब इस बात को आप रजिस्टर कर लें, ये कंटेंशन को कि ये कंस्पिरेसी बनती ही नहीं है 120A के तहत। चलें इसको यहाँ ले लें, छोड़ दें, अगली बातें छोड़ दें। अब नेक्स्ट पॉइंट, मान लें, आप प्रेज्यूम कर लें कि ये बात उसने सच कही है, अब इसको आगे लेके चलें। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये चीज नोट कीजिए, he said I was reminded several times by Zulfikar Ali Bhutto and goaded by Saeed Ahmed and Mr. Bajwa. इसके बावजूद he has not, this is very important, he has not said a single word कि I ever contacted मियां मोहम्मद अब्बास। ये आप प्रोबेबिलिटी के टेस्ट पे आ जाइए कि आप एक बंदे को शामिल करते हैं, उसको टास्क देते हैं, वो बंदा कहता है जी कि मुझे इन्होंने 10 दफा रिमाइंड नहीं कराया, कितनी दफा रिमाइंड कराया, एंड आई वाज रिमाइंडेड बाय अदर पर्सन एज वेल। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप दूसरे को जाके कहेंगे तो सही ना, आपने पूरा चीफ पढ़ा, उसने एक जगह भी कहा कि मैंने दोबारा उससे पूछा कभी क्या किया है, उसने कि ये बात की नहीं ना। तो ये सेकंड बात है कि इस वजह से भी आप उसकी बात को नहीं मानेंगे कि ये बात प्रोबेबल नहीं लगती। और अगली बात अब ये है कि इफ मियां अब्बास इज ऑन a task which has been assigned to him by is Director General of that time on the conspiracy of Zulfikar Ali Bhutto. So why he will be involved? What for? So had it been the situation that Mia Abbas was in the loop, he knew the task, this is their case, so why directly not talk to Mia Abbas? If IG wants to get something wrong done through a SHO or a police inspector, why he will call to DIG? Because this is not a legal act. This is illegal act. He will talk directly to that man. As if Lordship want to do, a civil judge to do something
जी क्या ये बताएं मैंने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ये मैं आपसे सरेंडर करके मैं मान के जोड़ दे तो ये बताएं ये वो जो मानना आप अग्रीमेंट की बात वो पंजाबी में एक कहावत है जी कि तगड़े दा 70 20 100 मैं तो मान गया हूं आपकी बात ये आप समझ जो नहीं बात आया। कर रहे समझ हैं नहीं अब बाद में बताऊंगा आप बात करें एग्रीमेंट की सपोज करें आपकी बात हम लेते हैं उन्हें एग्री नहीं किया लेकिन उनके एक्शंस ये दिखा रहे हैं हाँ। तो उसके बारे में आप ये क्या तो मैं बता रहा हूं ना आपने बिल्कुल सही बात की पहली बात ये है कि मैं कहता हूं कि एग्रीमेंट नहीं है ठीक है इनको भी नहीं पता जी मुझे ही पता उसका मतलब ये इनको नहीं पता ये पोठोहार की मिसाल नहीं है आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी पहली मेरी आर्गुमेंट है कि ये कंस्पिरेसी है ही नहीं ठीक आप कहते हैं नहीं जी आप इसको माने कंस्पिरेसी जी तो फिर नेचुरली उसके कॉन्डक्ट को देखेंगे ना हम जी तो उसने क्या किया मेरी बात प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के व्हाट ही डिड अभी मैं चीफ पे हूं जी जी क्या कि उसने कहा कि आई रिपीटेड दीज वर्ड्स इन ए परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड बिफोर गुलाम अब्बास दैट्स ऑल व्हाट एल्स नथिंग would it be probable a task has been assigned by the prime minister and that too Bhutto who as per their case will not tolerate any nonsense so क्या prudent man क्या कहेगा ये मान लेगा कि आप 4 महीने फिर खामोश ही रहे you never said in your chief कि I then asked so and so be on the task ये मैं बात कर रहा हूँ और दूसरी I hope I am clear now thank you now I'm coming to the point that if Ghulam Abbas was already on the task this is their case so why prime minister will ask this man why not directly to that person and why the prime minister will send Sayyid Ahmad Khan and Bajwa to this man why those were not sent to Mia Muhammad Abbas Mia Abbas was in Pakistan he was at Islamabad in the same office so that makes it highly improbable no prudent man will believe this story this doesn't fit in the circumstances of the case and secondly next point is this is his claim that at page 75 volume 2 is a part of his examination in chief that when after Lahore's incident he was called by the prime minister and prime minister said you have not achieved the task and you must do it you are responsible now kindly see what he says I will read from my notes. I will not go to the book. इस पेज पे जी वो सर ये पेज है 75 है वॉल्यूम 2 पेज 75 वॉल्यूम 2 ये अगर जनाब आप पढ़ लें इसको ये अब ये चीफ से मैं पढ़ रहा हूँ आई हैव नॉट टच क्रॉस एग्जामिनेशन I was summoned, second line sir, I was summoned by Mr. Bhutto on our return from Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. अब उनका जवाब शुरू हो जाता है. I said to him, at your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor. अपने आप को भी निकाल रहा है ना? And the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore. Ab, can a Director General, who first, it is on your assumption that there was a conspiracy, can he say so to the Prime Minister in so many words? And then the next part, he claims that I have very good relations with the family. I met the deceased several times. We are from the same town.
So does it appeals to the common sense? Would a prudent man will believe this story? Could it be happen? And more particularly, this is the most important point. After these utterances, your lordship remain, many of you remain the chief justices. Your lordship, did any registrar of this court can dare to say such thing to the chief justice? And that is the prime minister. And next submission. If it was so, if we believe he said so, so what was the natural consequence? I don't agree with you there. I encourage the registrar to oppose me on anything. सर मैंने आपका तो नहीं, नाम ही आपने नहीं कहा लिया। कि हाँ नहीं मैंने आपका नहीं, मैंने जज रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के रहे हैं, हम दूसरी तरफ बात की है। आप अपने तरफ ना लेके जाना। आपने कहा all of you। नहीं सर, वो थोड़ा बात निकल जाती है, कोई बात नहीं, but आप you have every right to disagree। मैन लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जी प्रूडेंट मैन है वो, खवातीन का भी इस्तेमाल कर लें वो कह रही हैं। खवातीन का, वो भी तो खवातीन तो सबसे ज्यादा प्रूडेंट होती हैं। खवातीन से तो प्रूडेंट होता ही कोई नहीं है। नहीं, वो कह रही है कि आप प्रूडेंट पर्सन कहें ना। अच्छा सॉरी आई एम रियली सॉरी। लॉ में लिखा हुआ है। वो तो क्या प्रूडेंट मैन ही लिखा है ना? हाँ, वो ऑल जेंडर स्पेसिफिक विल बी रेड एज नहीं, मगर आप अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस से जाएं पाकिस्तानी कल्चर में, तो औरतों तो ज्यादा प्रूडेंट होता ही कोई नहीं। खामद को मैनेज करना, ससुराल को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, सोसाइटी से डील करना, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा होती औरत प्रूडेंट है। मलक साहब, ये टीवी पे चल रहा है, वो घर वाले सुन रहे होंगे, छोड़े आगे चले। चलें नहीं, उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी। क्या अब सवाल ये है कि अगर ये बात वाकईतन ही uttered these words to the prime minister, just so many words, so what would have been the reaction of prime minister? Immediately minimum was that he must have been transferred. यही होगा ना कि भाई अब आप तो उस काबिल नहीं है, चले सैक नहीं करते, ट्रांसफर ही कर दें। He remained DG for 2.5 years. Kindly see. कब तक? ये 77 तक, जब 5 जुलाई 77 तक he was DG FSF. 2 years thereafter. Would it be probable? Would any prudent man would believe this? How it is possible? So this was his examination in chief. His story is not. What happened to him thereafter? वो तो पकड़ा गया ना जी, जब वो 5 जुलाई को मार्शल लॉ लग गया, फिर पकड़ा गया। और फिर क्या हुआ? Is he alive? पता नहीं जी, मैं तो पर्सनली नहीं जानता, चौधरी साहब को पता होगा। I don't know. मसूद महमूद जिंदा है, ये कह रहे हैं फौत हो गया। He's died. Thank you, sir. Where he went to America? Taken? There was nothing. Witness protection तो होता है when you don't know the identity. अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसी चीज नहीं है कोई। उस वक्त तो लॉ नहीं था विटनेस प्रोटेक्शन का। हाँ? और सर ये अब बात मतलब अमेरिका चला गया जी, खुद चला गया या किसी ने भेज दिया, ये तो अब इस पे बहस पे पड़ेंगे, फिर मेरा टाइम बढ़ जाएगा। वो चला गया अमेरिका और मर गया, एंड ऑफ द मैटर। Because मैं जब सवाल पूछूंगा it will be relevant. सर मैं अभी when you give me permission. नहीं, I don't use sir please that words. I'm using that word. No sir, नहीं, permission नहीं है, मैं तो आप खत्म कर लें, फिर मैं सर मैं खत्म के बाद बीच में वो उसका कैलिफोर्निया आ गया। अब मैं ये बात कर रहा था कि ये स्टोरी अब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ सामने रख के I have given 4-5 reasons. Now it is for your lordship to apply the test of prudent man, which includes women as well. डिक्शनरी सही होनी चाहिए। डिक्शनरी को सही कर लें। चलें वो बाद में कर लेंगे जी, अभी इसको करते हैं। I think what the point you are making is not the test of prudent man, because if that we are doing, then we are substituting ourselves with the trial court.
what probably we want to say that even an imprudent man would not do this. So that will shake our conscience. नहीं वो फिर सारा केस ही खराब हो जाएगा. इम्प्रूडेंट मैन और तो भी फिर ज्यादा है. नहीं नहीं वो तो इम्प्रूडेंट मैन वो दूसरी बात मान लेगा. वो भी नहीं मानेगा भी. नहीं बहरहाल वो अच्छा जिसको फिर करेंगे. ठीक है आगे आप बात करें. Now I will touch some part of his cross examination. I have promised that I will conclude by 1:30. Yeah. Cross examination. It starts at page 82. पहला बताना. अब आप मैंने ये बता दिया कि ये रहा डायरेक्टर. Can you remind us what volume? वॉल्यूम इसका वही 2 है जी. 2 है कि 4 है? 2. वॉल्यूम 2 सर. 95 शुरू होती है उधर 82 से शुरू होता है. इसका 64 से स्टेटमेंट शुरू है PW. जी सर जी. अब पेज 95 पे आ जाइए. 95. अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये चीज इस सारे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि ही नॉट ओनली सेड नो टू द प्राइम मिनिस्टर बट इन वेरी हार्श वर्ड्स. ये उसने कहा. अब देखिए क्या हो रहा है. अब ये आई एम एट पेज 95 सर इन द मिडल जहाँ पे ये स्टैंप लगी हुई है ना टेस्टेड की. इसके आगे जरा देखिए. My first visit to the 4 countries was in the end of January 1975, but it is subject to verification, while the second was in November 76 till the beginning of December 76. अब कैसी बात है, ये फॉरेन टूर भी कर रहा है. ये पहली चीज नोट करें इसका. उसके बाद अगर पेज बोल 101. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय लॉर्ड जस्टिस. यस ये जो आपका क्वेश्चन था सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है. प्लीज इसको देखिए जरा. ये है पेज 101 पे. सेंटर पे सर स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट. पढ़ूं सर? मिल गया सर जी. 101 के सेंटर में ये पहला स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट गिव. जी any plan to I did not give any plan of mine to Mia Muhammad Abbas for committing the murder of Ahmad Raza Kasuri, since Mr. Abbas has assured me about the execution of the order given to him by the then Prime Minister. Therefore, I did not give any persons to him for the execution of those orders. Question: did you tell Mia Abbas how and from where he had to arrange the arms and ammunition, if any at all, to be used for killing Kasuri? I did not. So this is a subsequent conflict. So kindly see this answer in the context of the statement of the witness that he was reminded by the Prime Minister, he was goaded by Mr. Saeed Ahmad Khan and Mr. Bajwa. अब उसके बाद वो कहता कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, मैसेज दे दिया अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने. Next page. The next. Can you read the question on this page? The last question. इसके बाद वाला. Same page 101. Last question. When you made a confessional statement in this case on 14th of August, did you know that the attack at the life of Kasuri at Islamabad was a part of the conspiracy? I had the hunch, but it was so. Where is the statement of 24th August 1977? ये रिकॉर्ड पे ही है जी. रिकॉर्ड पे है. अभी मार्क करके आपको दे देंगे, चार्ट में बता देंगे सारी उसकी. अगर कोई बता सकता है पेज. अभी बता दो, पेज बता दो. वॉल्यूम 4 page 687. वॉल्यूम 4 पेज 687. ये मैंने कहा था. पेज 687. मतलब साहब ये अप्रूवर की स्टेटमेंट जो लगा मिस्टर लिखी है उसके अलावा है. हाँ लगा है ना जी. 2 स्टेटमेंट थी ना जी. एक इसकी स्टेटमेंट हुई कन्फेशनल स्टेटमेंट एट इस्लामाबाद एज एन एक्यूज. अब देखा ना जो फर्स्ट चालान आया इनकम्प्लीट चालान, उसमें ही वाज एक्यूज. सो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ हिज फर्स्ट स्टेटमेंट. पहली क्लू इस्लामाबाद में हुई है.
ये 687 पे मुझे नहीं मिला। इस्लामाबाद की ये स्टेटमेंट हुई है 24/8। ये तो जरा दोबारा बताएं। 687 ही है ना ये स्टेटमेंट ये तो कोई कंटिन्यूएशन है। जी जी क्या सर 687 is a continuation of something. तो सर नहीं ये वॉल्यूम 684 से शुरू हो रही है ये तो अब्दुल खालिक का है। नहीं सर नहीं वॉल्यूम कौन सा देख रहे हैं आप 4 और आप तक पहले ये डेट लिखवा ये डेट आप लिख लें 24/8/1977 हाँ, ये स्टेटमेंट बताइए। इस्लामाबाद ये पेज है 6 ये कौन सा वो दूना बेटा 6 आप कह रहे हैं 4 क्या है 687 क्या है नहीं ये तो कुछ और चीज है। किसमें कौन से वॉल्यूम में अब तो खोल देना मैं बताता आप हूँ। पेज भी देख लें उसका। वॉल्यूम 8 में है वो स्टेटमेंट डेट मांग रहे स्टेटमेंट की तो वॉल्यूम तो दे एक सेकंड सर ये देख लेते हैं पर हम आगे चलते हाँ, हैं ओके। ये बच्चे थोड़ा सा समझे आपकी वजह से घबरा जाते हैं 24 अगस्त 1977 का स्टेटमेंट चाहिए महमूद मसूद का। सर आपको मिल गया वॉल्यूम 8 है पेज 135 है यही है वॉल्यूम 8 ये बेटर कॉपी उसकी मिल जाएगी 135 सर आवाज को छोड़ो ना क्या करते हो ये सर इसका सारा चार्ट बना के ना जी आपको दे दिया जाएगा सारा बट ये बता ठीक है जी 164 की स्टेट ये वही है जी ये पहली स्टेट सर अब प्रॉब्लम पता क्या है इतना स्कैटर्ड रिकॉर्ड है कि सारी देखने पड़ते हैं ठीक है अप्रिशिएटेड और ये बेचारे ये सारा क्रेडिट इन ये 3 बंदे जो खड़े हैं इनको जाता है 141 पे डेट है इसकी हाँ। 24/60 वही है ये तो ये तो बेसिकली ये स्टेटमेंट सर अब आगे चलो सर प्लीज। अब 109 पे सर 109 है हैदर आप जरा अलर्ट रहो अब सर अब ये मेरा ख्याल वो वेल्च को तो मैंने टच नहीं किया था बट बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो जिसमें वो जनाब का नॉलेज बड़ा रेलेवेंट है ये क्लेम करता है कि 74 में इसने वेल्च को फ़ोन किया और बताया कि जी टेलीफोन पे कि भी आप ये उसकी टेक केयर करें अब उस वक्त 74 में कोयटा के लिए एसटीडी फैसिलिटी नहीं थी वो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था आपको ऑपरेटर के जरिए बात करनी पड़ती थी तो ये इस चीज़ को साबित कर रही है कि ये बात के भी आपने ये कहते हैं ना कोयटे में बात की Mr. Welch has a general telephone at his office and another at his house. Question: in August 74, Quetta was not served by STD. Answer: I don't remember. अब ये तो the court can take a judicial notice of this कि उस जमाने में ये थी नहीं. Next week. मिस्टर वेल्च की क्या रेलेवेंस वो जनाब उन्होंने कहा कि वो कोयटा में जब ये गया तो उसको कहा गया कि इसकी केयर करो टेक केयर ऑफ हिम और टेक केयर ऑफ से मतलब जैसे कहा इसको फारग करें कोई अल्लाह रहम करे तो वो फिर उसने कहा जी हमने वहाँ कुछ किया ही नहीं कुछ ऐसी बात हुई नहीं इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था उस पार्ट को अब ये पेज है 118 अब ये सर यहाँ से शुरू हो रहा है 118 से लेके 127 तक ये सारी कन्फ्रंटेशन है अगर जनाब हुक्म करेंगे मैं पढ़ दूंगा कि जो जो बातें इसने की अपने स्टेटमेंट में इसको पूछा गया कि तुमने अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट में ये कहा था इसने कहा नहीं कहा था क्योंकि मुझे पूछा ही नहीं गया था सो दिस वाज अब ये अगर चाहते हैं तो मैं इसको एक दो को पढ़ दूं है ना नहीं जरूरत नहीं है चलिए ठीक 130 अब 130 पे आ जाए ये 32 है बेटा क्या हो गया है सर 130 पे सर लास्ट क्वेश्चन पेज 130 लास्ट क्वेश्चन ये लिखे गए क्वेश्चन सर प्रॉब्लम वहाँ ये हो रहा है जो पढ़ के मैंने इंप्रेशन बनाया कि उनकी बात लिखी नहीं जाती थी हालांकि क्वेश्चन नहीं लिखे जाते सिर्फ उसको लिखा जाता है इस फॉर्म में मगर वो फिर उन्होंने क्वेश्चन बाकायदा लिखे अब ये क्वेश्चन है Is it correct that on this tour you requested for leave ex-Pakistan for your medical checkup and treatment? Yes,
but I invite the attention of your lordship to as observation made before this honorable court by Mr. Bhutto a few days ago that I had collapsed in ziyarat and that he sent me for treatment abroad. अब ये बंदे के ट्रीटमेंट के लिए उसको अब्रॉड भेजा जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है नो। Basically he's saying he's not part of 2 साल ये So basically he's not part of the conspiracy. वो कंस्पिरेसी बनती ही नहीं है ना, इसकी स्टेटमेंट, इसका कॉन्टेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये तो मेरे जैसा आम आदमी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रूडेंट मैन, वो भी नहीं मानेगा। ये बात प्रोबेबल है ही नहीं, किसी एंगल से प्रोबेबल नहीं है कि ये बंदे को शामिल किया। और फिर अभी मैं लास्ट में वो जो गुलाम अब्बास का इन्होंने बयान उसको फारग किया कोर्ट ने कि नहीं जी हम नहीं मानते, उसको आप सामने रखेंगे तो फिर बिल्कुल ही बात नहीं बने। इससे आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे आगे आ रही है जनाब, मुझे आई एम कॉन्शियस एट 1:30 मैं क्लोज कर दूं। अब ये पेज 132 है, 132 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। It starts with the sentence, I do not remember the exact date. I do not, last, sir, शुरू से, page 132. जी ठीक है नीचे. I do not remember the exact date when I reached London after staying in Belgium and West Germany for a couple of days or so. Such each I reached London. अब ये अगला जनाब ये एक नोट है, Learned Counsel submits that this question and those that follow pertains to the second visit. Answer, yes. I stayed in Hotel Intercontinental London as the embassy made arrangement for my stay there. अब मैं तो कभी ठहरा नहीं जी इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन। पर आपने ऐसे काम भी नहीं किए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए। We've got the point. आप आगे और भी मजेदार है, नहीं इसे पढ़ा ये पूरा। I stayed in the Hotel Intercontinental. Yes, I stayed in as the embassy made arrangement. During this second trip, my wife was accompanied me as an official attendant, as I was likely to be operated upon in case doctors so decide. It is incorrect that I has obtained a special sanction for $500 British pound and $1 for my wife her trip. In fact, a sanction was obtained for $500 only. I made no request for permission for the release of $1,500 or pound to me for my intended visit to America. It is incorrect that my wife and I stay for 3 weeks in London. वो जो spectacles की बात है, exact period. आगे एक बस ये लास्ट है, अब एक सेकंड लास्ट है सर, ये पेज 133 in the center. I did purchase in London spectacles fitted with a hearing aid, and the price for that 2 pairs was about £400. The total expense incurred on my wife and myself during second trip must have been rupees 50,000. The question as to who was responsible for the payment of price of the spectacles was still under examination when I was taken into custody. अब ये इतने नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं इस बंदे के, अब इसको अब ये भी बात लगती है कि hearing aid he never heard anything before. अगर उसकी hearing aid का प्रॉब्लम है तो उसने नहीं पता नहीं अपने लिए खरीदे के बेगम के लिए खरीदे। ये भी तो हो सकता है कि उसको विन ओवर करने के लिए इतने नखरे बर्दाश्त करें उसके। विन ओवर किसने करना था? प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों? ताकि उससे काम लिया जाए। तो काम तो हो गया, ये तो अब उसने तो इतना बड़ा कह दिया कि जी मैंने करना ही नहीं। चले अब आगे लास्ट है पेज 134, ये सारे 134 सर। ये क्वेश्चन है सर, इज इट ए फैक्ट दैट ऑन अकाउंट ऑफ सच थ्रेट, ये अब ये कह रहा है कि मुझे थ्रेट मिल रहे थे, और ये मैं वाजे कर दूं कि वो जो थ्रेट की सारी कन्फ्रंटेशन जो मैंने आपको पेजेस लिखवाए उसमें है। अब उसका जवाब सुनिए, इज इट ए फैक्ट दैट ऑन अकाउंट ऑफ सच थ्रेट्स यू फेल्ट योरसेल्फ इनसिक्योर? आंसर, I am not too sure about that. I am not too sure of that,
as my faith in God is unflinching. अब ये अनफ्लिंचिंग फेथ का क्लेम करना बहुत बड़ी बात, बहुत फेथ तो सबका ही है, मगर वो बंदा ये बड़ी बड़ी ऊंची बात है ना जी कि मैं तो 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता, तो क्या ऐसा बंदा कंस्पिरेसी में आएगा जिस पे अल्लाह का फेथ? अब इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे अनफ्लिंचिंग को, हाँ, गैर मुतजलजल, यस वेरी गुड थैंक यू, गैर मुतजलजल कि वो जो इधर उधर नहीं होता, फिक्स। इस फेथ बड़ी कैटेगरी है, ये क्लेम तो बहुत बड़े बड़े लोगों का हो सकता है जो अल्लाह के खास बंदे। अब वो ये कह रहा है, अब इसको आप उस एविडेंस से मिलाएं, तो सर माय सबमिशन वुड बी that this statement is not even worth consideration, not worth consideration for a variety of reasons. So sir, at the end I will just refer to an application. I will not read that. It was drafted by, I believe it was drafted by Mr. Bhutto himself. He himself drafted this application. इसका end दिखाना जरा, इसका end दिखाओ, एंड से साइन कहाँ है उसके, फिर क्या करते, बिकॉज इट इज नॉट, मैं जनाब कहाँ से शुरू हो रही हूँ, वॉल्यूम है 8 पेज 1 और ये एंड हो रही है पेज 60 पे। मैं चाहूंगा कि आप पेज 60 जरा देखिए, पेज 60 पेज 1 और खत्म हो रही है 160 पे, पेज 60 सर जी। ये आप देखेंगे कि ये किसी काउंसिल के लिए नहीं है, ये भुट्टो साहब ने खुद डिक्टेट करवाई है और उनके इस दस्तखत हैं यहाँ पे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बेहतरीन इंग्लिश और ऐसा बेहतरीन कंटेंट्स नहीं पढ़ा कभी, इतनी और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे पढ़ लें इसको, इसका बाकी बातें रेलेवेंट नहीं है, वो आप माने ना माने इसको पढ़ें ज़रूर। इतनी खूबसूरत, इतनी सिंपल इंग्लिश कि जो मेरे जैसे बंदे हैं जिनका इंग्लिश प्रॉब्लम है वो भी बड़ी आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, वेरी वेल ड्राफ्टेड। अब इस पे एंड पे उन्होंने एक लिखा, वो बताओ, ये पैरा 31 में उन्होंने लिखा, क्या है, हाँ हाँ वो बताओ ना, ट्रायल ऑफ मर्डर क्या है। और एक एप्लीकेशन उन्होंने गवर्नर को लिखी, वो पेज 83 पे है। इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, क्या इस एप्लीकेशन में कौन सा स्पेसिफिक क्लॉज तो उन्होंने ये किया, व्हाट इज दिस एप्लीकेशन अबाउट, सारी बैकग्राउंड दी कि ये क्यों, मैंने ये मेरे साथ ज्यादती हुई, ये हुई, और इसको जब खारिज किया गया थ्रू ए डिटेल्ड ऑर्डर, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन, ट्रांसफर तो इसकी एक वजह है ना जी। फिर उसके बाद मैंने इसलिए टाइम बचाया, फिर वो बाइकआउट हो गया, वो बाइकआउट कर दिया। मगर मैं सिर्फ कहता हूँ ये पढ़ने वाली है, वैसे भी पढ़ने वाली है, सारी स्टोरी बड़ी, आप इसको बुक की तरह पढ़ें। आप ये, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं फिल्म देख रहा हूँ। ये मेनली फेयर ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं, वही बिल्कुल वही, बहुत बड़ी बातें हैं इसमें, बड़ा लंबा टाइम चाहिए। अब मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये पेज 82 में देखिए, इसी में अगला इसी वॉल्यूम यही है, इसका पेज 82 देखे जरा। ये अनदर एप्लीकेशन व्हिच वाज सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ दैट टाइम, पैराग्राफ 13 की लास्ट लाइन 77 से शुरू हो रही है जी सर। 82 पे जनाब आ जाए, ये क्या है, ये क्या है, इसकी बी लिखा है ना जी नीचे, 13 के बाद बी आता है, रोमन कौन सा, ए लिखा है, ए लास्ट बी से ऊपर आता है, that the trial was illegal, it start with, मिल गया सर, that trial was illegal, that it stood vitiated, that it was not a trial of murder, but the murder of trial, murder of trial। तो मैं भी यही कहूँगा कि एंड पे कि जनाब ये आपके सामने सारी चीज़ आ गई। अब ये बात कि जी ये पुराना केस है, इसको क्यों खोला जा रहा है, ये भी एक ओपिनियन है, मगर क्या जो पुरानी चीज़ें हैं उनको करेक्ट नहीं करना कि हिस्ट्री को ऐसे ही रहने देना है।
मुझे याद है कि जलियांवाला में 1917 में इंसिडेंट हुआ, बड़े इंडियन मर गए। जनरल डायर वाला वाकया बड़ा मशहूर है 100 में। तो कोई 80 years के बाद प्रिंस चार्ल्स आया इंडिया, ही वेंट देयर at that place and he apologized to the Indian people. अपनी गलती को मान लिया उसने कि ये ज्यादती हुई। अब आपके पास ये आ गया, आपके पास 186 में आ गया, जैसे भी आ गया आपके पास आ गया, आपके पास मटेरियल आ गया। अब जनाब ने देखना है कि क्या इसको ऐसे ही रहने देना है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज कि क्योंकि वो स्कोप बड़ा कम है, या अपनी जो पावर, मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मगर आप तो सारे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आप 187 की जो आपकी पावर्स हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो क्या इस सारी जो चीज़ें हाईलाइट हो गई आपके सामने, उसके बाद क्या इस चीज़ को डिनाई कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज? दिस इज ए क्वेश्चन फॉर योर लॉर्डशिप, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल, इस सारे मामले की पॉलिटिकल रिपरकशंस भी थी, मैं वो बात नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि इंटीरियर सिंध के लोगों ने अभी तक इसको नहीं भूला। बस दैट्स ऑल। Now can I ask you a few You are welcome, sir. Please, can you have section 337 of the Criminal Procedure Code before you? Sir, उस जमाने का या आज का? नहीं, ये तो चेंज नहीं है। नहीं, चेंज हो गया ना जी, अप्रूवर वाला। हाँ वो चेंज हो गया, नंबर चेंज। और उसमें अब जो चेंज आ गई है ना, नहीं अब का नहीं, उसी वक्त का। नहीं सर, नहीं मैं अर्ज कर नहीं, रहा हूँ। उस वक्त का। क्या सीआरपीसी की बात करें? सीआरपीसी, मैं भी सीआरपीसी अप्रूवर का जो है सर, वो उसमें ये चेंज हो गया कि अब जो कत्ल के केसेस हैं लीगल एज के बगैर नहीं बन सकता। वो वाला इज नॉट रेलिवेंट। तो आप पुराना उस वो पॉइंट ही नहीं है मेरा। अच्छा जनाब, आपने सामने रख लें। हुक्म करें सर, हुक्म करें। 337 आ गया जी, फरमाइए। ये आप इसके ऊपर ही देखेंगे ना? नहीं, अब जरा मेरा सवाल तो सुनिए। सर हुक्म करें। Masood Mahmood makes a confessional statement on 24th of August 1977. When is he given pardon and where is the order of pardon? बताओ भाई, ये confessional statement थी as an accused। I know. वो फिर दोबारा नहीं, वो बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, मैं जवाब दूँ। ये confessional statement है at Islamabad as an accused thereafter, and that is why he was shown accused in the interim challan. Then his statement was recorded 14th of September 1977. Where is that? At page It's volume 8. वॉल्यूम 8 में कहाँ पे है ये डेट है? ये कौन सी डेट है? 14/9 को। हाँ 14/9 को, पेज 183। This was not referred to. 183. ये सर आई नहीं ना बात, आपने पूछी। 180. 183 पे वो एंड हो रहा है इसका, जिसमें वो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। सर 183 Can you please read the magistrate's order? जी सर, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आप पढ़ लेते हैं? पढ़ लेंगे, दे यार मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर। मैंने तो फिर और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 182 से। 182 से जी। ये सर अब मैं पढ़ूं सर या आप? नहीं, अगर आप पढ़ लें सबकी सर मैं तो, या मैं पढ़ लेता हूँ आप? ना 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 ना, मैं तो इजाजत ली है। कहाँ से पढ़ूं, शुरू से? आई डोंट नो, जो भी रेलिवेंट है। रेलिवेंट तो अब सर वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। या अगर मेरे ख्याल में 182 भी पढ़ लें। मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि वो लास्ट आप देख, आप पूरा पढ़ लें, 2 ही पेज तो हैं सिर्फ। मैं पढ़ लेता हूँ सर, पढ़ लो। मिस्टर मसूद महमूद, एक्स डायरेक्टर जनरल FSF, एक सेकंड सर, स्टेटमेंट निकालो। An under trial prisoner. निकालो। If you want, I'll read it. An under trial prisoner confined in the camp jail Lahore had submitted an application on 7/9/1977 through the Superintendent District Jail Court Lakhpat Lahore, where he was located at that time, stating that he is involved in this case to the extent that he carried out the order of the former
former Prime Minister of Pakistan, Mr. Z.A. Bhutto, to cause the death of Mr. Ahmed Raza Kasuri in communicating the aforesaid direction to his subordinate, Mia Muhammad Abbas, a director in the FSF, resulting in the murder of Nawab Muhammad Ahmed Khan, the father of Mr. Ahmed Raza Kasuri. He has further stated in his application that the commission of this heinous crime haunted his conscience ever since, and he is voluntarily prepared to become an approver in the case if granted pardon to enable him to place full facts before the court. He is also prepared to abide by all the condition of pardon. वो जो अगर वायलेट करे तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाए. The Deputy Director FIA, who is investigating the case, was asked to furnish his comments in the matter. His report has been received and examined. He has reported that there is no eyewitness in the case, and in the interest of justice and in order to see that actual culprits do not get unpunished, Mr. Masood Mahmood may be granted pardon and made an approver. Considering the circumstances of the case, Mr. Mahmood Masood had been summoned from the jail for recording a statement. In this respect, he is present in custody in the supervision of Shahid Anwar, Assistant Superintendent, Camp Jail, Lahore. His statement may be recorded. The provision of Section 337 of Code of Criminal Procedure have fully been explained to him. Statement of Masood Mahmood, age is so and so, so and so. The application Exhibit PA is in my handwritten and is signed by me. It is sent to the District Magistrate Lahore through Superintendent, District Jail Court, Lakhpat, Lahore. I am at page 183. I know the facts which led to, and I am prepared to make full and true disclosure of the facts leading to the commission of murder of Muhammad Ahmed Khan, if I am granted pardon. It has been explained to me, and I have realized that this pardon is being granted to me on the condition of making full and true disclosure of all the circumstances within my knowledge relative to the offense and to every other person concerned with it, whether as a principal or as an abettor in its commission, and feeling that I shall be liable to prosecution. I am making this statement voluntarily without any pressure from any quarter. Mr. Ikram Iqbal Nadeem, Additional District Magistrate Lahore. Considering आप आगे जो कहते हैं ये भी ऑर्डर पढ़ूं? ये जरूर पढ़ें. ये भी पढ़ूं? जी जी. Considering the circumstances of the above noted case, I am of the view that evidence of above mentioned Mr. Masood Mahmood accused is necessary to connect his co-accused with the case, as no ocular evidence is being made available, as Mr. Masood Mahmood has volunteered to make a statement in respect of the occurrence in question, making a full and true disclosure of whole of the circumstances within his knowledge relative to the offences and to every other person concerned, whether a principal or a better in the commission of the above mentioned offence. I grant him pardon subject to the provisions of Section 337 CRPC, which have been fully explained to him. I am satisfied that he fully understand the said provision and have accepted the said conditions in his above noted statement. I hereby direct that the statement of Masood Mahmood may be recorded Mr. Zulfikar Ali Toor, MIC Lahore, today, strictly in accordance with the law. The said person is being sent to him in custody. Where is this statement recorded by Zulfikar Ali Toor? Page 235. Page 235, volume 8. Volume 8, देख लें. 235. 235. इससे पहले एक सेक्शन सर एक पेज देख रहे से मैंने मलिक साहब इससे पहले एक पेज जरा आप क्या सर 181 पे आइए उस पुराने वाले में नहीं इसी वॉल्यूम 8 हाँ जो पहले स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं ना ये 14/9/77 का है इस प्रोसीडिंग से पहले एक रिपोर्ट मांगते हैं
वो FIA से, जी 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 और ये है 12977 जी डिप्टी डायरेक्टर मैजिस्ट्रेट को। जी 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 ये तरफ पैरा 2 181 पे पढ़िए। जी फरमाइए पैरा 2 द ऑफिसर इज ओल्ड वन नहीं 181 181 ही है ना जी 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 यही पैरा मिस्टर मसूद महमूद डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल। ये मैं पढ़ देता हूँ सर मिस्टर मसूद महमूद एक्स डायरेक्टर जनरल FSF an accused person in the above case has confessed before the High Court that he got the murder committed under the ये explicit order कंफेशन 12 को वो लिख रहा है कि हाई कोर्ट के तो फिर पार्डन की प्रोसीडिंग शुरू की है। तो आप पता नहीं जी उसने ये बेसिकली कोई चलान आया था नहीं first सर time नहीं कल। वो मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये रिपोर्ट है जो डिप्टी डायरेक्टर है ना FIA ये उसने उससे कमेंट मांगे वो जो DC है और उस कमेंट में उसने ये लिखा कि उसने ये कोई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है कमेंट्स लेना मगर उसने त्यातन ले लिए उसने लिखा कि इसने हाई कोर्ट में माना है ये उसका वर्शन है ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक अच्छा ये बयान है कहाँ ये जो अप्रूवर वाला जो बयान है वो बता उसने लिख दिया ना कि अब ये 235 बंदा MIC दूसरा जो है उसको रेफर कर दिया कि ये इसका ये आ बयान गया जी आ गया 35 वो कहाँ पे है सर 235 पे वॉल्यूम 8 का 235 ये कैसी राइटिंग है? ये बड़ी माशाल्लाह सर थोड़े गौर से पढ़ें तो बड़ी मजेदार है। ये बस ये 2 पेज का हाँ तो इतना ही है इसीलिए तो फिर जब कन्फ्रंटेशन हुई है ना जो मैंने पढ़ा नहीं है आप नहीं इसमें ये जो है स्टेटमेंट ऑफ मसूद महमूद। जी सर। अच्छा अब एक चीज और मुझे दिखा दीजिए सर हुक्म करें। गुजारिश कर सकते हैं हाँ ये जो इनका दरखास्त थी मसूद महमूद की डेटेड 7/9/1977 वो देखो कहाँ He had submitted an application on 7/9/1977 तो ये जरा हमारा रिकॉर्ड फिर तरतीब में हो जाएगा। ये सर अगर इजाजत दें तो ये बच्चे बाद में कर देंगे ये सारी मैं एक्सरसाइज। सिर्फ वो देख लूँ वो इसमें अब वो ढूंढनी पड़ेगी शायद इसमें या किसी दूसरे वालियों में घबरा जाते हैं। उसका जिक्र जो है पेज 1 वो मगर ये पता नहीं 179 पे सर जो पहले हम 179 पे 179 पे ऐसे क्या हो गया। I have the honor to forward you the application in original. Where अच्छा this is the application नहीं where is the application in original? वो रिकॉर्ड पे नहीं है जी वो नहीं है हमारे अभी हमें तो नहीं मिल रही क्योंकि होती तो इधर ही होनी चाहिए थी मगर वो नहीं है मगर फिर भी वो मैं नोट कर लिया है तो ये इंशाल्लाह ताला वो सारा जो भी आप इनको बताएंगे जो कागज चाहिए ये उसको नोट करके फ्लैग लगा देंगे ये इनकी मैं ड्यूटी लगाता हूँ ये कल भी यहीं रहेंगे आप इनको अपने स्टाफ के जरिए बता दीजिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। मसूद महमूद का ये जो बयान लिखा गया है अप्रूवर के तौर पे उसका बयान लिखा है ऑन ओथ इसमें भुट्टो का नाम है कहीं पे इसमें कहीं जिक्र मुझे नजर नहीं आ रहा ये एक सफे का बयान है इसमें क्या है जरा पढ़ दें अगर इसको जरा थोड़ा सा क्योंकि असल बात यहाँ से शुरू हो रही है ना ये सर ये बयान पढ़िए तो उसे कहाँ पे है इसका बयान मुझे ये लगता है कि ये बयान कंप्लीट नहीं है। यस अभी मैं कहूँ कि इसमें वो किसी का नाम ही नहीं है और वो कंस्पेरेसी का जिक्र नहीं कर रहा नहीं सर वो बयान कंप्लीट है ही नहीं असल में हुआ ये है ना जी तो ये आप ये भी ड्यूटी लगा दें इनकी ये कहाँ से लाए जनाब ये अगर रिकॉर्ड आप में होगा तो ढूंढ लेंगे ये हो सकता है वही हमारे रिकॉर्ड में असल नाइक बिल्कुल साहब के पास होगा ना वो अभी आएंगे ना वो बताएंगे। अच्छा अब मंजूर मलिक साहब चले एक तो ये बात हो गई ये नोट कर लें एक आपको दरखास्त देना है आप प्लीज नोट कर लें और क्या दरखास्त देनी हमने नहीं वो दरखास्त का जिक्र जो है मसूद महमूद की वो नोट कर लो 7 सितंबर 1977 इनको मैं कह रहा हूँ कि यही नहीं अगर ये नोट कर लें उसके बाद ये पूरा का बयान नेचुरली इनको रिकॉर्ड अवेलेबल जितना भी मांगे दे सकते हैं। सर एक सेकंड अब एक सवाल आ रहा था एक सेकंड पहले सर वो ये ना बहुत घबरा जाते हैं जब आपका ऑर्डर आता है ना तो ये इधर जाने के बजाय इधर भाग रहे हैं आराम से पहले अगर इजाजत मेरे ख्याल में आपकी घबराहट है मेरी तो नहीं है। एक बड़ा दरखास्त लिखे जो उन्होंने दी है कि मुझे पार्डन दी जाए ये देखें सरदार साहब कॉपी और सेकेंडली जो उसका बयान लिखा गया एज ए पार्डन उस मजिस्ट्रेट ने लिखा MIC ने उसकी पूरी तफसील लिख के दो वो सारा जी नोट हो गया सर। अब मेरा आपने सवाल ही अब मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूँ पूछे Masood Mahmood, this is without any disrespect to anyone in the courtroom.
Masood Mahmood hails from the same area as Kasoor. Coincidental, has good friendship. Either the person instructing him to assassinate is completely unaware of this fact. Yes. Or whatever reasonable thing, maybe they don't know about the friendship, and he also claims I have very good friendship. You would say, at least let me not ask him, he may go and tell the other side. That's one possibility. I mean, or the person instructing him clueless. The first Director General walks into the room and he says, go and kill this person in Kasoor. I mean, naturally, if someone wants to do a crime in a particular area, you don't get those people of that area because you don't know the connection with the other side. Or they may leak it or let them know. So we have not considered that aspect at all. Did the High Court or the Supreme Court consider that aspect? No. The other thing could be, now this is, yes, he's on the record. Yes, he's from Kasoor. He's a sheikh from Kasoor. I mean, it's on the record. He is, by caste is sheikh. And from Kasoor. From Kasoor. एक और बात मेरे आते-आते रुक गई। नहीं, अब आपने मुझे फिर भुला देंगे फिर मेरा। नहीं, आप भूलेंगे नहीं, आप पहले सवाल थोड़ा कर लें तो मैं तो हाजिर हूँ जवाब देने। नहीं, ये सवाल नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन 100% नहीं, इस पे जरा सी अभी खत्म नहीं हुई बात। जी। Now I'm proposing something else. I don't know if this was suggested at all. I just want to know because I have not read the entire testimony. Maybe, who do you have animosity with? Generally, the closest to you. Your own area. Yes. I mean, a person from Punjab will not have an animosity with a person from Quetta. It will probably be your own neighborhood. Yes, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Could it be that he himself was a perpetrator? Who? Mr. Masood Mahmood. And put it on someone else. The Prime Minister asked me to do it. He admits knowing the person, he admits knowing the family. Was this line of cross-examination conducted or not? No. This was never conducted. Actually, the line of cross-examination on Kasuri Sahab was कि No, on Masood Mahmood. नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बात की नहीं. Because would a prudent man also not consider, by I'm asking a person who lives in the same area to go and kill someone, he may be a good friend. देखें ना जी, criminal trial में basic जो purpose होता है. Maybe coming back to prudent test. मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे याद है, अब मैं जवाब दूँ. जी. क्रिमिनल ट्रायल में सरदार साहब आपके साथ बैठे हैं. टास्क ये होता है कि इस गवाह को हमने साबित करना है कि ये सच नहीं बोल रहा. अगली बात पे हमने नहीं जाना कि पॉसिबिलिटी क्या है. हम कहते हैं जी ये रिलायबल नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे मिल गया, मेरा आदमी बरी हो गया. ये आपने जो बात की है, इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि वो किसी अपनी दुश्मनी से ये करवा सकता है. ये प्रोबेबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मगर ऐसा क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं सजेस्ट करूं, और इस तरह का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं है मसूद महमूद. एक आखिरी पॉइंट. वेलकम सर. It took 3 years to prick his conscience. Was he waiting for the overthrow of the government? Yes, and then his conscience will revive? Because he's a very God-fearing man. अब मैं जवाब देता हूँ इसका. ये बड़ी सिंपल सी कहानी है. कॉन्शियस इसको तो इसी बात पे अगर आप कुछ भी ना लिखें तो इस बात पे इसको डिसबिलीव करें कि ये प्रेशर में आ सकता है. पहले एक के प्रेशर में था, उससे बड़ा प्रेशर आया तो उसकी लाइन ले ली. ये बिल्कुल वैसी बात है. तो ये तो आपको मैंने एक नहीं 10 सर्कमस्टांसेस बताए. खास तौर पे जब उसने ये क्लेम कर दिया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को नो कह दिया, और नो भी बड़े सख्त अल्फाज में, तो उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो पॉसिबल हो नहीं सकती. वो प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल नहीं, अगली स्टेज है. इम्पॉसिबल हो जाएगा. आप उसको कहेंगे ये नामुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने पेंट किया है इस तरह का, वो इतनी बड़ी बात सुन के आपको लंदन भेजेगा सैर करने और इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहराएगा, और आपको वो स्पेक्टिकल्स भी ले देगा, हेयरिंग एड फिटेड, और आपके साथ वो फलाना टूर भी करेगा, और ज़ियारत में आपके गिर गए हैं तो आपका मेडिकल लंदन से करवाएगा.
ये चीजें किसी स्टैंडर्ड से, मैं तो क्योंकि टाइम का मसला है इस केस के अंदर, अगर मुझे ये 3, 4, 10 दफा पढ़ना पड़ा ये केस, फिर जाके मुझे समझ आई है कि ये केस क्या है। इतना लंबा केस बनाया गया, ये भी एक टेक्निक होती है कि इतना केस लंबा कर दो, उसमें इतने कागज लगा दो कि कोई उसको पढ़े ही ना। अब आपको मैंने बताया कि सिर्फ ये विटनेस है अगेंस्ट जुल्फकार अली भुट्टो, देयर इज नो अदर विटनेस, बाकी सारी सपोर्टिंग एविडेंस है। अगर आप, और फिर इस पे डबल टेस्ट आपने अप्लाई करना है, एक टेस्ट है एक ऑर्डिनरी विटनेस के लिए, फिर इसके लिए फिर corroboration लेनी है, वो है ही कुछ नहीं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से कौन है? गवर्नमेंट की तरफ से ये अटॉर्नी जनरल साहब। So, do we have anything on the record, or can you find out that Mr. Masood Mahmood, कुछ किसी ने कहा विटनेस, इत्तेज़ाज़ साहब ने जिक्र किया कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए गए, हाउ डिड ही लीव द कंट्री, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस? My lord. Is it he chose to just move to America, or was some deal offered, or was witness protection? I mean, would the government must have some record of it? If you can just find this out. I will, man. ठीक. अच्छा, now who comes next? Mr. Sir, first of all, this without your help, I don't think we could have done, and I suspect none of the council have done this much research and did it in such great detail. So we really appreciate your endeavor in this regard. And if I may join my colleagues in thanking you and your young और नॉट सो यंग एसोसिएट्स। नहीं, ये यंग ही है जी, मगर मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि मैंने कल भी कहा था कि 90% क्रेडिट इनका है, इनको अप्रिशिएट कीजिए। इस बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, ये रात को 2-2 बजे तक मैंने इनको अपने साथ बिठाया है और ये काम करते रहे हैं, बड़ा काम किया इन्होंने। बहरहाल दिस वॉज ए ड्यूटी, दिस इज ग्रेट ऑनर फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पेशेंट हियरिंग फॉर 2 days. And it was honor for me as well. I'm grateful. Thank you. Everyone. Thank you very much. Shall we take a short break and return and we can continue? आप मैं तो जाऊं। करिए कौन कौन है? नहीं, पहले हम जरा मालूम कर लेते हैं कौन कौन आज कर रहे चले हैं, पूछिए। फिर then we can see how it goes. Next कौन आना चाहेगा? वो फारूक नाइक साहब आएंगे या कौन आएगा? रजा रबानी? हाँ, मैं आई। आप यू वांट टू से समथिंग इत्तेज़ाज़ साहब? जी मैं कर लूंगा। आइए। नहीं, आप सिर्फ हमें बता दें टाइम, हम जरा भी करना चाह रहे हो, हाउस कीपिंग कर लें। हाउ लॉन्ग विल यू टेक? जी आप इधर देना, आ जाए ना माइक पे। जी जी जी। हाउ लॉन्ग? क्योंकि बहुत ग्राउंड तो कवर हो गया है, कुछ नए पॉइंट्स कहिएगा। मैं जी नए पॉइंट्स। हाउ लॉन्ग? आई विल बी डीलिंग मोस्टली। हाउ लॉन्ग सर? हाउ लॉन्ग? 1.5 घंटा तो लग जाएगा। नहीं नहीं, देखें हम इतने लंबे नहीं खींच रहे हैं इस केस को, वी वांट टू ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन। 1.5 घंटा देखें नहीं, मलिक साहब ने बड़ा कवर कर दिया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब तो माशाल्लाह शायद बहुत कम होता जाएगा। तो जरा अगर जल्दी जल्दी कर लेना तो देन वी कैन, एज यू नो माय लॉर्ड इज रिटायरिंग, देन फिर अगेन दिस केस विल, आई मीन इट वाज यू वांट टू। नहीं, इस वक्त आफ्टर मलिक साहब presentation here, we would like it to be concluded. जी, तो quite frankly. और what maybe you can do is wait for the others and see, maybe you आपका 5 मिनट हो जाए 1.5 घंटा से। नहीं, 1.5 घंटे से 5 मिनट। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था कि आपने कहा था मैं 30 सेकंड में केस फैसला करूंगा। नहीं, यू डोंट स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट ऑफ योर्स? फारूक नाइक साहब यही बात कही थी, मैं कहता हूँ 30 सेकंड की बात कही थी ना। वो मैं is right. मैं कहता हूँ वो वीडियो चला दें। आपको हम आपको जरा ज्यादा दे देते। मेरी बात से पहले आप वो वीडियो चला दें जो फारूक साहब के पास है, नाइक साहब के पास। चलें, ये सही है। फारूक साहब आपका क्या है? आप हाउ लॉन्ग वीडियो? Videos and not more than 30 minutes. अच्छा, who else is there? Reza Rabbani साहब is making separate submissions. Most of them has been covered. Because you know we don't want to lose what we have registered here. We don't want to lose that effective presentation either. I compliment my learned friend. He's actually been your learned brother, and but he's joined us as a friend. एक सवाल रहता है जो मैंने पूछा नहीं इनसे। हाँ, वो आपको पसंद नहीं आएगा। नहीं, नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। बिल्कुल आएगा। तो ये 10-12 साल ये केस आपने चलाया क्यों नहीं फिर?
जब आप इस तरफ थे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है ब्रदर रबानी साहब, हाउ लॉन्ग? Sir, You by all means, if you write something, we are good. Sir, I've written, and I'll be submitting that, and from that I'll be making a synopsis. I will essentially be on only two issues. Number one is the impact of martial law. Time. And time about 45 minutes to an hour. कसूरी साहब, आप कितना लेंगे? Are you representing yourself or do you have a counsel? जी, मैं खुद करूंगा जी। मैं एक How long? Time पहले बता दें। इतने लोगों को मैंने अकेले ने जवाब देना है? नहीं, आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना। आपसे पूछ रहे हैं टाइम कितना, जवाब वो कोई ना दें आप किसी को, आपसे अपना टाइम बता दें। मिनिमम 2 hours। ठीक। जाहिद साहब, how long will you take? About 15 minutes just to finish up. Okay, now we can do one of two things. Either we can take those persons who are just going to take very limited time first, so they can go, and rather than one person takes and they come back again. I think you're coming from Karachi. Anybody else, or these are? As far as federation is concerned, after what? No, you are coming last. Gee, but probably unless something I have to say something after Mr. Kasuri has submitted, but what Mr. Justice Manzoor Malik has submitted, we are going by those. I will also be placing my submissions. Many of them have been actually. So हम ऐसा करते हैं, we come back at 2:30. Is that all right? And shall we take Zahid Saab first, if you don't mind, with consent? Because he says 15 minutes, and we can at least cover as much ground. After Zahid Saab, I'll take up some videos and then. आप अच्छा वीडियो का इंतजाम कर दें फारूक नाइब साहब के साथ, बिकॉज इत्तेसाद साहब ने भी कहा कि पहले वीडियो आप देख लें। आप कैन यू मैनेज whatever the video you want it shown, so we can see it? ठीक है, और अगर बहुत सारे irrelevant है, come to the point वाला कर दिया। Videos will not take more than 15 minutes. आप जरा coordinate कर लें, and आप अपने कोई junior इनको coordinate जी हाँ, and Magistrate Iftikhar is here, he'll do the need. ठीक है, तो भी and I'll take 30 minutes thereafter. So we'll come back in half an hour. Is that good? जी ठीक है sir. Once again, Manzoor Malik sir, thank you very much. To make my small we will give you statement. Fullest time. Just 2 minutes to see. जी. Sir, my first question is, have we crossed the bridge of admissibility since Mr. Malik, you see, he has addressed you at length about the nitty-gritty of the case. The prudent impressions which he will gather from his presentation is that he was more of a defense counsel than a friend of the court. Regarding your thing about, we're not going to cut up this case into 2 bits. We're going to hear everything, and if they don't cross the whatever constitutional or legal restriction, then all what has been said would become irrelevant. But if they do, naturally it will become relevant. And whilst crossing that, we may, I'm just really thinking aloud, and I should not say it, but I'm not speaking for my colleagues, but it depends. It's not a question of what minor irregularity has been committed, but something so grave as to shake the confidence of the court or something like that. Yes, we will certainly hear you. And your opinion, you are entitled to your opinion about Mr. Manzoor Malik, but he was appointed, he didn't come forward himself. We chose him as an expert, as he's criminal expert, which maybe none of us have the same level of ability which he has. So therefore his choice was in your presence. And you had agreed to any objection taken by anybody to the choice of amicus. We did not appoint such amicus. Only the persons who were not objected to, we appointed as amicus, and you were one of them who did not object. So he's done his job towards the court, and if you like it or not, that's it. So we will return after half an hour. Nitty-gritty, that gives an impression of a defense counsel than an MSQI. Opinion. But that's my opinion. Thank you. Thank you. I'm free, sir.
My lords. Yes, Hazrat. जी My lord, two queries were put to us. One was मिल गया आपको My आंसर lord, that was very fast जी My lord, one was the application which was submitted by Mr. Masood Mahmood for recording his statement. That application is dated 7th of 9/77. no we know the date My lord, it is Exhibit PW 2/5 and that will be in the record of the High Court. exhibit PW 2/5. नहीं आपके इन डॉक्यूमेंट में नहीं इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है. हमारे पास हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है अच्छा if you can just also my lord. wade through that and the other The other document, my lord, a complete statement of the approver dated 14th of September was sought. That is Exhibit PW 2/6. हाँ वो है कहाँ My lord, we have requested your staff, my lord. अच्छा आप if you can अब just हम उनको assist- देख के जी इनको आइडेंटिफाई करके जाएंगे. ठीक जाहिद इब्राहिम साहब अगर आप हमें जो ये सबमिशंस हुई थी जनरल जिस तरह आउटलाइन आप हमें वो अगर राइटिंग में दे देना और जो जिस तरह आपने साथ ये एग्जिबिट और पेज नंबरिंग कर दें तो हमारे लिए आसान हो जाए. We'll do that, my lord. ठीक है ना आपने तो फैक्चुअल दिया है ना जो सबमिशंस हुई है ना उसमें अगर आप हमें जस्ट जनरल चीजें लिखते और जिन जिन के ऊपर आपने रिलाई किया. We will be doing that. जी My lord. Lord, I represent grandchildren Fatima Bhutto and Zulfikar Ali Bhutto. I have filed my CMA 64. Fatima Bhutto and Zulfikar Ali Bhutto. junior Yes. जी I filed my CMA 64. CMA 64 4 of 20 as far back as 6th of January. 2024 ठीक shall we keep it before us Yes. got it जी So I'm mindful of the fact that, I don't want to retrace what has already been traveled upon. I'll just make 3 very brief points. The way I've structured my concise statement, if your lordships will be kind enough to consider just glancing at paragraph 12, which is at page 4, it reproduces the question which was recorded in the order of 21st of April 2011. Page 4. Which paragraph? Paragraph 12. Paragraph 12. What is this document? In my concise statement, आपका paragraph जी 12. मेरे paragraph 12 में मैंने वो सवाल reproduce किया है. yes Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. If it does not, its effects and consequences. Now, is this a question of law or fact? This is a question of law. And in fact, even the amicus, Mr. Makhdoom Ali Khan Sahab, had said that his arguments were also focused on this question. And this question is directed by the President seeking an opinion from this court in relation to a decision which has become final and binding. There is no doubt about that. नहीं ये क्वेश्चन रेफरेंस में तो नहीं है Sir, reference में है. कहाँ है If your lordship sees the ये तो order, कोर्ट ने उस वक्त बनाए जब सब्सिक्वेंटली ये बने क्वेश्चन देखिए रेफरेंस में कहाँ पे है पढ़िए if your lordship sees the order of 20, नहीं आपसे ये नहीं आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस में ये कहाँ जिक्र कहाँ है ये वहाँ तो ओरिजिनल रेफरेंस में नहीं है सर. हाँ तो देखिए लेकिन ना उसके- 186 पढ़िए सर उसके बाद अगर आप सिर्फ इजाजत दें. नहीं हम आप जरा सवाल सुन जी लें सर. आपकी बात ठीक है जी. ऑर्डर आया लेकिन आप लॉ पढ़े लॉ में तो प्रेसिडेंट जो पूछेगा वो हम देंगे ना क्या हम अपने क्वेश्चंस को रीड्राफ्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं नंबर 1 कर सकते और ये जो कैसे कर सकते हैं? How do you say that? सर 21/4 का जो ऑर्डर है
वो कहता है कि this question has been forwarded in continuation of the reference. Yes. They were forwarded by the president. By the president. Not by the court suo motu. Not by the court suo motu. So that is what I'm trying to point out, that this question is part of the reference, चलें आगे बढ़ें not the original Come on, reference, but okay, we can spend a whole day debating that. Yes. What is the point you want to make? the point that I wish to make now in relation to this, in my concise statement, the way I've structured it, I have referred, my lordships, to the role of the complainant, which was also alluded to by my... चलें आप अपना... जी sir. In paragraph... If you keep saying it was alluded paragraph to... 25, page 8, से लेके page 9, paragraph 30 tak. This is in relation to the role of the complainant. Yes. After filing of the FIR and before the trial commenced. What was his role and what was his stand in relation to the accused? Where do you want to read from? If I may read paragraph 27. Yes. Yet in less than 2 years of lodging the FIR in April 1976, Mr. Kasuri rejoined the PPP. He continued to remain a member of and attended the meetings of Tehreek-e-Fikr-e-Qaid-e-Awam, an organization meant for propagating the political philosophy of Mr. Bhutto until April 1977. Mr. Ahmed Raza Kasuri even applied for the PPP ticket to contest the general elections of 1977 but was denied. Mr. Kasuri's letter to Zulfikar Ali Bhutto dated 8/6/1976 is particularly revealing. Where is this letter? My lord, this has been referred to at page 540 of PLD 1979 Supreme Court, the Supreme Court judgment. It has been referred to it. I'm reproducing it from there. I take this opportunity to express my deep gratitude for nominating me as member of the Pakistan delegation that participated in this year's spring season of Interparliamentary Union held at Mexico City, Mexico, and goes on to claim, we found that your image as a scholar statesman is emerging and getting wide acceptance. In another letter of 30 January 1977, reference? Again, at page 541 of the same judgment. Earlier, I have requested over half a dozen times to your MS for an interview with you, but to this date, I have not received any reply from him. I wonder whether Major General Imtiaz Ali ever made it known to you. I am taking this liberty to write to you and to request you personally to grant me an interview at your earliest convenience. I have to discuss many matters which concern the party and government. He ends the letter with the hope, I trust this letter finds you and Begum Bhutto in best of health, happiness and prosperity. Yet, the same person, months later, when martial law is proclaimed, becomes PW1. My lord, next in my concise statement... What's the point you want to make? The point that I wish to make is, if your lordship looks at the trial and looks at the conduct of the parties, the believability factor, that is this a person who could have been believed as PW1 when his stand in relation to the main accused is reflected in his own correspondence, in his own conduct. How did the Supreme Court attend to these letters? My lord, Supreme Court, these letters were referred to in the minority opinion of... no, in the majority opinion. My lord, majority opinion में तो इसका तस्करा नहीं है. Okay. Minority only mention in minority opinion. इतना बता दीजिए कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में ये लेटर आए हैं? जी हाँ, एग्जिबिट हैं. एग्जिबिटेड है? जी, एग्जिबिट नंबर्स दिए हुए हैं. एग्जिबिट 119/D is the first one and the other one is exhibit PW3/16D. Citation? Lahore judgment? Supreme Court. 1979 Supreme Court 53. जी सर. ये दोनों ने डिफेंस ने भी एग्जिबिट करवाए. जी.
दूसरा वाला और प्रोसिक्यूशन ने भी इसकी पहला वाला एक्सप्लेनेशन वो देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन वो जरूर देते हैं कि ये तो मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू समहाउ प्रोटेक्ट माई सेल्फ, which again does not go into with the character of the person that he himself put him out to be as someone who would never compromise on principles. It just does not match up. Then what I have done is, the important peg of this reference is the interviews of Justice Naseem Hassan Shah Sahab. There's an interview in minority opinion. What do they say? That if we can complete the story, the minority opinion refers to these letters and says what? It goes, I think it says exactly this, that... What do they say, the judges? सर इस वजह से तो उन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन टर्न नहीं करता, वो तो टर्न करता है ऑन द लीगल क्वेश्चन ऑफ corroboration पे. No, what did they say? That these letters show that he couldn't have been a target. What do the minority opinion say? They quoted these letters. What do they express then? It alludes to the fact that this cannot be the conduct and character of a person who was earlier waxing eloquent about a person who now he's accusing of murder. Is it pertaining to the conduct of the complainant or the conduct of the accused? Or conduct both? Conduct of the complainant. Okay, that's the point I wanted to ask you. Cheek, move ahead. In relation to Justice Naseem Hassan Shah Sahab's interview, I've reproduced again 3 quotations in paragraph 33. I will not read those. And also the quotations from his books, Memoirs and Reflections, that is in paragraph 34. Again, I will not read those because they've already been read. There is one quote which is very important. And it sort of matches with one of the many queries that were raised, that this case cannot be divorced from the context in relation to the environment it was conducted in. It was martial law. And Justice Naseem Hassan Shah Sahab is also very aware of this. And he writes, if I may take your lordships to paragraph 34, Roman E. Page 13 of the concise statement. He writes, this is on page 33 of his book, I observed from the bench that martial law is not unlike a military occupation of the courts. We are helpless, but once this occupation is over, it is our duty to mete out justice. I felt this one quote encapsulates the mindset of Justice Naseem Hassan Shah. When he himself recognizes... It is just his mindset, or is it, would you say, depicts reality? It of course depicts reality, but it is, since he was on the bench, since... Let's talk about this case. You see, this is a general statement made by a judge. Where is the correlation between the statement and the case which is before us now? So this particular quote was made in relation to Haji Saifullah's case after General Ziaul Haq had passed away, died, and Prime Minister Junejo's government... So we are to presume that this is a general statement for all cases which were decided? This is what he says. This is what he says in relation to his own mindset as to when he sat on the bench, how did he view the courts? He says, I'm not putting in any words. These are his words. It is not unlike a military occupation of the courts. We are helpless. But once that occupation is over, it is our duty to mete out justice. All cases decided during martial law are where judges are helpless. Because one of the questions raised was that why did Justice Naseem Hassan Shah
in 2002 make these revelations. He says in his in the introduction paragraph of this book. Got it. आगे बढ़े. इसको अगर बिलीव कर दें तो फिर मार्शल लॉ के दौर में जितने फैसले हुए सबको ओपन करेंगे? नहीं. Presidential reference नहीं है. One presidential reference and two, because he himself says he has made specific admissions. तो खुल जाएगा ना यार, फ्लड गेट तो खुल जाएगा अल्टीमेटली. तो आप देखें ना, कोई भी आ सकता है. वो अब्दुल वली खान का केस था और बहुत सारे केस थे, सियासी केस सुप्रीम कोर्ट तक आते रहे उन दौरों में. तो वो सारे अगर खुलना शुरू हो गए, अभी लेटेस्ट भी एक केस अभी पिछले दिनों में भी हुआ है, अगर वो भी खुलना शुरू होगा फिर क्या क्या होगा? सर अगर आप देखें डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब जस्टिस ने सिर्फ इस केस के बुनियाद पे उन्होंने स्पेसिफिक. Basically you're saying these observations have been made not about all cases. And if any other judge makes an observation about some other case, then maybe that could be opened up. It doesn't mean that all cases are to be opened up. Indeed. No, but how do you say that this was made about this case? I say that if you see the earlier admissions that he makes, one, about that he was an ad hoc judge. He himself felt that he would not be included in the bench. Two, that Justice Mushtaq Hussain came and met him with the Attorney General, trying to convince him to sit on the bench, which he himself says that this was not proper, this was improper to do. His revelations in relation to the trial itself, I'm saying look at those revelations and look at this statement. This statement simply explains how he has made those revelations. I'm just drawing the connection between them. My Lord, the second point that I wish to make is that in relation to presidential reference number 2 of 2022, in relation to the Recodic case, again, the Maulvi Abdul Haq Baloch case judgment had attained finality. The presidential reference came, and I will only refer, if I may, to a paragraph from the additional What was the question of law in Recodic? My Lord, the question of law in Recodic and that Recodic judgment is that whether in light of that judgment could the government enter into these agreements. And these agreements were being entered into this time without any public auction. This judgment is not reported, but it was included in the booklet filed by Mr. Makhdoom Ali Khan, volume 1A. उसका सिर्फ एक पैराग्राफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के additional note का मैं पढ़ना चाहूँगा, if your lordship allows me. This is at page 509 of this bundle, volume 1. It's not reported yet. It's not reported. जी. I think वो आपको निकाल के दिया हुआ है 1A, volume 1A. Volume कौन से? Volume 1A. जी. ठीक है, पढ़िए. जी. पढ़िए. Paragraph 12. The judicial intrusion of this court in the Maulvi Abdul Haq Baloch case, with all the humility at my command and with utmost respect to my learned brothers, when viewed in retrospect, appears to be a rushed decision where there was no live issue left for determination. The very issuance of a mining license, which was the subject matter of the petition before the court, had already been cancelled by the appropriate licensing authority. In fact, time has proved that the financial exposure for such a judicial intrusion far exceeded the benefits it aimed to achieve and the financial losses it purportedly claimed to save. All I'm saying is, adopt the same legal reasoning and in retrospect make a determination in relation to these judgments, the judgment of the Lahore High Court and the judgment of the Supreme Court, to come to the conclusion that that
trial in retrospect was nothing but an intentional and premeditated conviction of guilt of a former Prime Minister. Why do you use the word former? Of a Prime Minister of this country, elected Prime Minister of this country. If you use the word former. I use the word former because, he's no longer there. He was a Prime Minister. His term had At that time he was Prime Minister. At that time he was Prime Minister, yes indeed. So that legal reasoning should be followed. Last, I will just conclude by just one. There's this apprehension that the opinion of this court in its advisory jurisdiction should not damage the finality principle. Yes. How to avoid that? Lord Atkin had said this as far back as 1933. He said, finality is a good thing, but justice is better. That's all, my lord. Thank you for being to the point. Grateful, sir. Short and sweet. Is anyone else who will be short? We'll take them first and we'll take the longer people later. If anyone can be precise. नाइक साहब आप आइए. वो आपने कर दिया है नाइक साहब को वो जो रिकॉर्डिंग दिखाना चाह रहे थे. You want us to hear this first? जफर साहब कर ठीक है चलने दें. We let it run? जी सर. Okay. कोई आ जाता है कि जनाब माशाल्लाह गैर कानूनी है, उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, आइन को तोड़ दिया है, लिहाजा आप माशाल्लाह को गैर कानूनी करार दें और उन्होंने जो कार्रवाई की है उसकी उन्हें सजा दें. जज साहिबान बैठे हैं ऊपर माशाल्लाह वाले ऊपर बंदूक के लेके खड़े हैं, तो फिर जज साहिबान क्या करें? आप ये कर सकते हैं. ये मेरे ख्याल में मेरी तो हकीकत पे मबनी है कि लोगों का तो ख्याल है ना जजेस को करवाने करानी चाहिए और मिलिट्री वालों को यानी रेत तो लाहौर कर देना चाहिए, इन्होंने गलत किया है. मगर वो मिलिट्री वाले उन जजों को निकाल सकते हैं. और दूसरा ये है कि लोग बिल्कुल उसका करते नहीं. जब तक पब्लिक ओपिनियन ना हो वो कोई भी कोर्ट या कोई भी अदालत अपने सर इसके ट्रांसक्रिप्ट हम देख लेंगे. ट्रांसक्रिप्ट देख लेंगे, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेंगे. Why should we hear it? ट्रांसक्रिप्ट वो पढ़ लेंगे. Sir, who read the transcript? I don't have time to read it. They will read it. I want to see the body language. Body language will देखना. शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और सरकारें के लिए बेहतर रहेगा. क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह पे मकतूब ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा. इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने हमें दी है? जी हाँ जी दी हुई है जी. CM 59 थोड़ा सी मैसेज खाली है मगर यानी अपनी सीट से केस में मौजूद थे. आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान की अदालत की तारीख में ऐसी कोई मिसाल है कि महज मशवरे की बुनियाद पर किसी को फांसी दी गई? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये मशवरा तो नहीं था. उसमें तो वो था कि उनका ऑर्डर था कि वो यानी अपने यानी सबॉर्डिनेट्स को इसको खत्म कर दिया जाए. तो लिहाजा मशवरे की और बात होती है, ऑर्डर की और बात. सर ये जो जब मैं अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं एक्यूज हूँ, मैं कहूँ कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको बतौर जज क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा ना कि क्या आप देखते हैं. तो वज़ीर आज़म आपके सामने पेश हूँ, मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बैठा दिया गया, मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो
ये किस पेज पे जी इसकी ट्रांसक्रिप्ट? सर एक मिनट, पेज 7 सर जी ये जियो न्यूज ने अलग से दी थी, ये दे दी जी जी 58 है जी इसकी आप वो जो ये जो इनके ट्रांसक्रिप्ट है वो बता दें कौन सा? ओके सर ये जियो हमने नहीं दी थी, ये जियो न्यूज ने से आपने मंगवाई थी तो जियो न्यूज ने दी हुई है ये जो है ना वीडियो जियो न्यूज से जियो कौन न्यूज सा ने पेज है वो फाइल हमें दिखा दें। वो ये आपने फिर क्या फाइल की है? हमने जो दूसरी फाइल की थी वो पहले हमने सुना दी थी, तो चीफ साहब ने कहा था कि जियो की मंगा के जियो की सुनी जाए, उनके ट्रांसक्रिप्ट वो कर देते हैं, वो करके आपको दे देते हैं सर। किस पेज पे? सजा में कमी के बारे में दरियाई करना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है साहब, जैसा जब आप कन्विंस्ड थे, जब आप फैसला दे रहे थे डिसेंडिंग नोट ही आपको लिखना चाहिए था, केस हद तक सजा न दी जाए। जी हाँ, हो तो सकता था, मगर जब वो जो उनका वकील है वो कहना मुझे सजा की कोई परवाह नहीं, मुझे तो टोटल चाहिए। मैं समझता हूँ भुट्टो यानी जो है वो आप डिसेंडिंग नोट दे सकते थे ना, दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमजोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी, उसने हमें एक किस्म का नाराज कर दिया। देखिए सर, आप लोग तस्वीर करते हैं कि इसमें which is a point आप हमें ट्रांसक्रिप्ट देख के बता दें जो रेलेवेंट है। No need to go through the whole thing, we will go through it on our own. But he is not saying that he convicted wrongly. Where did he say that? So he basically he's saying that he's not saying where is that portion where he said? No, he's saying right now. ये जरा ट्रांसक्रिप्ट ले लें, आप हमें बता दें जो आप हमसे जो कराना है। Where is that point, if at all there is this point? एक तो जनरल बात हो रही है ना, जनरल माहौल है, fine. Okay, now does he at any stage say that this was a wrong conviction? Sir, जो judgment आई देखे ना, ट्रांसक्रिप्ट से बता दें। Does he say this or he doesn't say? सर ये जियो की वो है ना, जियो की वीडियो है, ये हम आपको देते हैं, आप इसमें से बता दें। ठीक है। Because you wanted it played and I just wanted to know that does he actually say that, because he's saying कि वो आपको रिक्यूज कर देना चाहिए था, वो पूछ रहे हैं ना कमेंट जो who's interviewing him, and he's giving a general opinion about the state of martial law. But does he act, and he's saying that Yahya Bakhtiar should have argued this point, but where is he saying, but that was only on punishment, not on conviction. Where is he, does he at all say that the conviction, I did it contrary to what I've agreed with or whatever? बड़े नजर वो बात कहीं कहते हैं या नहीं कहते हैं, हाँ या ना बताएं ना हमें। ये है ट्रांसक्रिप्ट जो जियो न्यूज ने दी है, इसमें आप हमें वो ऐसी कोई बात है या नहीं है? ऐसी बात नहीं है कोई, मगर उसने बेसिकली ये कहा कि इट वाज अ केस ऑफ अ लेसर पनिशमेंट। हाँ, वो बात तो उन्होंने कह दी। That is what उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, हो सकता था उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, चलें वो तो ठीक है, फाइन। It's a case of lesser punishment and not of death. This is what he's saying of in the. But he doesn't say कि conviction नहीं होना चाहिए। But see, if it is not a case of death, तो वो जो सारी 4-3 है वो मैं समझ गया। दिस इज द बेस, क्या कहते हैं, दिस इज द बेस कि 4-3 खत्म हो जाता है। नो 4-3 पता नहीं, वो फिर एक अलग बात होगी। I may decide a case, but later I may think it was wrong. I can say that it should be less. आप दिखाएं कि कहाँ पे उन्होंने कहा that it was extraneous pressures and influences which convinced me to pass that order. सर इसमें जो और टेप्स हैं उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। If your lordship allow me to hear the other tapes also. Please, आपके सामने आप ट्रांसक्रिप्ट में हमें बता दें, पहले पढ़ लें, फिर हम देखेंगे ना। Sir, there are other videos also of other persons कि जो कि juxtaposition में आपको देखनी पड़ेगी। First and foremost, it's him.
जी जी। सो आप इनका दिखाएं कि इनके कौन से आप ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, आप वो देखें, उसमें हमें बताएं कौन सा है। जब उसमें आप कर लेंगे देन वी विल गो टू समथिंग, यू कांट जंप टू समथिंग व्हिच इज वो तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप पहले इनका बताएं, बी वेरी क्लियर। जी जी। That is there any statement made by this gentleman saying that there was extraneous influences other than judicial which convinced me to pass an order in this case? Sir, in few words he has said that के martial law था। Please आप पढ़ लें, उसमें से आप जो आप समझते हैं वो पढ़ लें आप। ये क्लिप नंबर 4 है जो इफ्तिखार अहमद सर, इफ्तिखार अहमद का क्वेश्चन है सर, आपने एक दफ़ा ये भी कहा कि फौजी आमरों के दौर में अवाम ने अदालतों को बेबस देखा और उनके दिलों से अदलिया का एहतराम जाता रहा, जस्टिस नसीम हसन शाह। जी हाँ, ये अभी कुछ हद तक दुरुस्त है कि फ़ौज जब आती है तो ये कहती है कि जिन बातों में हम फैसला करते हैं उसमें अदालत को दायरा इख्तियार से बात बाहर होगी और इस मामले में नहीं दखल दे सकते, तो लिहाजा उसका बहुत मनफी असर होता है। इफ्तिखार अहमद सर, ये फ़ौजी हुकूमतों के अलावा सियासी हुकूमतें ऐसा नहीं करती। जस्टिस नसीम हसन शाह जी नहीं, सियासी हुकूमतें करें तो उनकी बात कोई नहीं मानता है। ये जो सच्ची बात है कि क्योंकि आखिर जुडिशरी जो है वो उनके ताबे तो नहीं है, ना इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर अव्वल तो इफ्तिखार अहमद तो जर्नलों के ताबे है, जस्टिस नसीम हसन शाह हाँ ताबे है, क्योंकि वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जर्नल जो होते हैं वो पीसीओ कर दें, कुछ कर दें, और क्योंकि जुडिशरी में सबसे अहम बात है कि उनकी मुलाजमतें हैं। इफ्तिखार अहमद सर, ये जो भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हिस्टोरिकल केस है उसमें जर्नल असर अंदाज हुए थे, जस्टिस नसीम हसन शाह नहीं। मेरा नहीं ख्याल असर अंदाज, हमें तो किसी ने नहीं कहा इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब से बात करते हो और थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। मैं 26 यानी this is the statement that he does not admit that there was any instructions or any influence by those people to him for a particular decision. पर ये कहता है थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते सर, nobody, if your lordship would appreciate सेंटेंस फिर से पढ़ें। जी मैं फिर से पढ़ता हूँ। नहीं सर, नहीं, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो। हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब से वो बात करते हो और वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो, और वो वो हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। तो सर, यू हैव गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। Nobody would admit क्या कहते हैं, he was influenced by sitting as a judge. I don't know whether somebody would be or not be. We don't want to go into the realm of conjecture. We are just going to take what it is said. But this is what the reality is, my lord. No. We got the point. We'll see it if we require it ourselves. But we don't want to take up valuable court time, because I just wanted to know if he actually says this. He says a lot of things, but doesn't categorically say that. The only thing he talks about is the lesser sentence. But that doesn't erase the conviction. That doesn't. Your lordship is right over there. But that we can't do anything about in any case. But that creates a doubt. आगे चलिए, अब फिर आप आगे नेक्स्ट पॉइंट बताएं। सर, नेक्स्ट एक वीडियो और देख लें। नहीं, बता देना, बता दें। आप पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। बात ये जी आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के बताएं कि जी देखें ये बोला है, फिर हम देखें ना कि मेरा जो व्यू है फ्रॉम रीडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, व्हिच ट्रांसक्रिप्ट इज नेक्स्ट वीडियो देखा है, वीडियो जो हमने देखा है, नहीं इन्हीं की वीडियो है नेक्स्ट। जी जरा नेक्स्ट भी देख लेना, देन वी आप पढ़ देना पहले। सर, मैं आपको पढ़नी, जो मेरा कंक्लूजन है वो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसके साथ आपको मिलाना पड़ेगा। पॉइंट तो बता देना। सर, पॉइंट यही है कि ही वाज बीइंग मैनूवर्ड, Justice Naseem Hassan Shah was being maneuvered by Justice Mushtaq Hussain and Sharifuddin Pirzada Sahab, Attorney General of Pakistan। कह चुके हैं वो, हमने कल वो सारी बातें सुन ली थी। इसी के ऊपर वीडियो है जो क्लैरिटी देता है। क्या कहते हैं मजीद? सर, वो वीडियो देखिए, आप जरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें जो आप वीडियो हमें दिखाना चाहते हैं। ये आपका CM 59 हमारे सामने जी 59 के अंदर
असल जब है तो असल पहले ट्रांसक्रिप्ट दिखा दें, उसमें अगर कोई बात हो तो जरूर देखेंगे। पहले ट्रांसक्रिप्ट आपने सर मैं बताऊं ना, वो जो कई वीडियोस हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आपने फाइल करा हुआ है जी। नहीं सर, कई वीडियोस ऐसे हैं कि उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। अगर आप जरा वीडियोस देख लें तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। दैट वुड सेव द टाइम, क्या कहते हैं। I think that if you are only worried about the time will be saved if you just tell us. इसे उसका ट्रांसक्रिप्ट इधर नहीं है ना हमारे पास। आधे घंटे का वीडियो देखें, आधा घंटे 10 मिनट है सर, 2-2 मिनट के वीडियोस हैं। इतने में तो आपने वीडियोस देख लिए होते। आपने देखे नहीं है? मैंने देखे, इसलिए तो Why don't you just tell us the point? We got this point now, we want to know the next point. सर नेक्स्ट पॉइंट इज वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। नहीं आप बताएं तो सही ना, कहते क्या है, क्या कहा कुछ तो बताएं ना। वकील से सर वो जो पेज कौन सा है आप बताइए ना। पेज ये आपका सीएम हमारे पास है, इसमें कौन सा पेज है? पेज 60 एक सीएमए 58 of 24 भी है, उसके अंदर 59 में आप बता रहे हैं ना ये तो। जी हाँ जी, सीएमए 59 है ना ये। पेज 66 देख लीजिए। पेज 66 जी जी, इस सीएमए में 59 ये उसकी किताब है, क्या कहते हैं ये फाइल कौन सा पेज है? पेज 66 जी। सवाल आखिर लास्ट क्वेश्चन सर। जी पढ़े। लेकिन जस्टिस मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे, क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी? फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने एतराज़ किए थे। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की, कुछ वाक़यात भी रोनुमा हुए। अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाइल के साथ भुट्टो साहब के एतराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुल्जिम अपनी मर्जी से बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए जज मेरे केस की समाअत ना करे। सवाल, जनरल ज़िया के जजों से ताल्लुकात थे, सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट में तो हॉटलाइन भी थी। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मुझे हाई कोर्ट के मुतालिक इल्म नहीं, ज़ाती ताल्लुक तो होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो से नाराज़ थे, क्योंकि 8वें नंबर के एक जज को चीफ जज बना दिया गया था। हालांकि मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को राह किया था। मौलवी मुश्ताक ने बड़ी दलेरी के साथ उसकी दरख्वास्त को समाअत करवाई, यहाँ तक कि भुट्टो ने कहा मुझे इत्तला मिली है कि मेरे जहाज़ को बम से उड़ा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूंगा। मौलवी मुश्ताक के ख्याल में उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, हालांकि वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन बड़ी ताकत से जनरल ज़िया और मौलवी मुश्ताक का ताल्लुक ये था कि दोनों भुट्टो से खौफज़दा थे। अगर ये आ गया तो एक जाएगा और दूसरे से भुट्टो पूछेगा बेटा मेरे साथ तो तुमने ये किया था, अब तैयार हो जाओ। ये चलो मुश्ताक के बारे में ये उनकी राय है। जी 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 सर, what does it mean? दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्रेसिंग, क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्रेसिंग। You may have an opinion, I may have an opinion. जी 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 सर। अबाउट मौलवी मुश्ताक। ये पेज 66 वाला सवाल अगर दोबारा से पढ़ लें आप। जी जरूर सर, जरूर। जस्टिस मुश्ताक के बारे में। जस्टिस मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे, क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी? फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने एतराज़ात किए थे। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की कि कुछ वाक़यात से भी रोनुमा हुए। अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाल के साथ भुट्टो के एतराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुल्जिम अपनी मर्जी का बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर ये अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए ये जज मेरे केस की समाअत ना करें। This is in fact relating to Maulvi Mushtaq and Anwarul Haq. Anwarul Haq sir, Anwarul Haq, जी जी जी। There is no वो मटेरियल बताया ना, where he says I was pressure in deciding this matter। अपना कोई एडमिशन है, ये रेलेवेंट है ना हमारे लिए। बाकियों की तो स्टोरी नहीं है चाहिए सर। ये अगर आप ये किताब है रफ़ी रज़ा साहब की, ऑन पेज 73। पेज 73 किताब में तो पढ़ी। पेज 75 पे
मेरी सेट की किताबें किसने दो मेमोइर्स और वो रशीद शाह साहब की मेमोइर्स और दूसरी आई नहीं शायद पेज 75 ये कहीं है किसी बुकलेट जी इसी सीएम के अंदर ये जो भी आप सीएम देख लीजिए सीएम पेज 75 सर नहीं पेज 75 पे थर्ड पैरा से मैं पढ़ूंगा क्लियरली there was considered Mr. Naik, sorry to interrupt you, but a presidential reference number 1 of 2011 was sent to us. Now, that is reported in 2011 as CMR 962. The questions of the presidential reference are there. Now, we can keep reading this book and that book and that book, but we have to focus on the presidential reference and the questions that have been formulated. So, first tell us where are you, what you want to say arises from which particular question that we have to render an opinion on under Article 1. And can I just add to that question? Can you first tell us which is the question of law? Yes, I'll do that. पहले वो पढ़ देना क्या question of law? Sir, now I'll address your lordship before we even hear the videos. I will address your lordship on 2 points. Not hear the video. First of all, you tell us. Yes. Read this presidential question. And then we will read it. there are 2 main points on which I will argue out before your lordship. This question of presidential Please reference. आप articulate कर दें हमें. 186 says the president will send a question of law. Not question of fact, please. उसी पर मैं आता हूँ. Please tell us what is the question of law. मैं इजाजत हो तो मैं सर मैं इजाजत हो तो मैं बोलूँ ना क्या कहते हैं. This is there are 2 points on which I will dilate. One is the maintainability, this is the question of law, and second is the legitimacy and the credibility of the trial. These are the 2 points on which I will address your lordship. Number 1 is the maintainability, as my Lord Justice Mansoor Shah has pointed out. Let us read Article 186 first of all. It's been a while that we read that. 186. It's on my mind. ये 21/4/2000 का है ना, ये खुला हुआ है सामने, यही है. Farooq साहब, on a lighter note, कभी कभी हम पिटिशन डिसमिस कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं, तो हम दूसरी साइड से पूछते हैं, डू यू वांट टू हेल्प द काउंसिल? जी नहीं सर. बस ये बस on a lighter note. बिल्कुल सर. So let us read 186 sir. If at any time the president consider it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. Now there are 2 things into as far as this article is concerned. Now president has to decide that वो तो उन्होंने कर दिया, भेज भी दिया सवाल. अब आ जाता है what is the question of law. Question of law has not been defined anywhere in the Constitution. The Constitution is totally silent as what is the construction of question of law. I think we can figure it out. I mean, this is such going on for years. But the phrase question of law, the phrase question of law has been used at 5 places in the Constitution. The phrase question of law. You think Article 185 it's a mystery? In Article 185 it is written, the words which have been used in Article 185 is substantial question of law. Then in Article 180, that's fine. But what is the question of law in this case? इसमें तो नहीं लिख के दे दिया ना ये. नहीं वो पढ़ मैं चाहता हूँ आप बताएं ना हमें question of law कौन सा है जिसको हमने आंसर करना है. ये लिखे हुए आप पहले सर ये question of law इसके अंदर जो है not question of law. I want him to answer. जी आप पढ़ दें precisely which is the question of law that the president sent, because we can't change it. President must have decided that public importance का ये सवाल. This is president's prerogative. Right. That he decides that this is a question of public importance. We can't go changing that question because the president's discretion, he has thought about it, he says it's of public importance. The court cannot change and modify and change the question. So having said that, which is the question?
The question, why don't you pick up पढ़ देना कोई question 2011 CMR दे देना इनको, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? उसमें लिखे हुए सारे. First of all, I would submit the words any question of law has to be given the widest interpretation. No, we are with you. President has all the power, authority to send it. वो questions पढ़ लें, ये आपके लिए आसान होगा. This is 2021 SCMR. भाई ऐसे भी सवाल पेशते हैं कि secret ballot, does it mean secret ballot? 11. ये भी कभी-कभी 2011. किसी ने कहा तो अंग्रेजी का सवाल है, तो law का नहीं है. ये पढ़ लें आप. ये question ये जो क्या कहते हैं 2011 SCMR 962 के अंदर, let's read from page 963. उसके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ किए गए हैं, whether the president has or Pakistan has forwarded. Actually, come to the point that number paragraph 1 पढ़े ना. जी हाँ, 1. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4, sub-articles 1 and 2A, Article 8, Article 9 and Article 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if it does not, its effects and consequences. नहीं, अब आप ये बताइए कि ये question of law है? नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा. I will not answer the question. Let the president answer the question. Fair enough. Fair enough. Why we debate this? This is for us to consider. If we don't consider the question of it is law, for us, before we assume jurisdiction in the matter, we need to know what the question of law is. This is actually a question of fact. Please look at the judgment and tell us whether at all it is violative of articles fala fala fala. This is a question of fact. I'll go visit the judgment and then say, oh, this is wrong, this is wrong, this is right. The question of fact is a different thing altogether. So please tell us, because before we assume jurisdiction. The question of law, my lord, question of law. नाइक साहब, जब हम आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 8 की, आर्टिकल 10A की बात करते हैं, लेट्स टेक ड्यू प्रोसेस. Question of law and fact are both in it. You can't separate one from the other. Definitely, sir. So it's a question of fact. I can say it's a question. I can make it into a question of law. I can leave it into a question of fact. That's for us. Or not. This is what is due process? ये due process तो कहीं defined तो नहीं है ना? What's a fair trial? Article 10. Fair trial, we don't know what a fair trial. मैं बताता हूँ question of law कैसे होना था. Question of law ये होना था, whether can a trial or can a murder trial be decided when a judge is biased? This is a question of law. So one would answer, no, you cannot. This is a question of law. You can tell a question of law when there is a question of law, because you just have to think about it and answer. You're not supposed to. This is equally a question of fact. Fair enough. Everybody has a right to speak. So I'm saying that you have a question of law. There's a difference between the two. Question of law must be answered by looking at it, by not investigating into the matter, by not carrying out an inquiry, by not going into the facts of the case. Question of law has to be answered as a question of law. Question of law could be, as I said earlier, could the trial be, can a trial be concluded or had to be correct if there was bias of the judges? Could there be any trial where the judges are under pressure? General question. आप तो कह रहे हैं फैक्चुअल बताएं हमें सारी चीज़. फैक्ट्स में तो मैं नहीं जा रहा सर. मेरी आप देखें. नहीं नायक साहब एक चीज जरा देख लीजिए. मिस्टर नायक एक चीज देखिएगा, ये पेज 963 के ऊपर जब ये शुरू हो रहा है ना ऑर्डर आपका, तो ये बेंच ने जो लिखा है, यही झगड़ा है इस वक्त, क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. तो ये आप पढ़ें, टुडे आई 21 April 2011, फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव बीन फॉरवर्डेड, नॉट फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ लॉ हैव बीन फॉरवर्डेड. ये खुद बेंच ने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, लॉ तो लिखा ही नहीं आगे. ये तो वैसी फैक्चुअल है. ये following question has been forwarded, not question of Mr. Amir Rahman, maybe you make a note, because maybe you have to respond. Amir Rahman sahab, if he can wake up for a while. अगर नायक साहब आप आर्टिकल 4 पढ़ लें. Amir Rahman sahab अगर उठ जाए तो नायक साहब sorry to get you out of slumber. But I just wanted that the question we will asking you also, because the president को represent करेंगे. May I draw your lord's attention? What's the question of PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट जरा हम देख लें. जरा दीजिएगा. अगर आप इस केस के तनाजुर में नायक साहब जरा
अगर आप आर्टिकल 4 अगर आप सर, अगर नहीं एक मिनट आर्टिकल 4 पढ़ ले, ऊपर की 3 लाइनें पढ़ो। इसके ओपनिंग वर्ड्स देखे ए में। सर मैं आपको एक PLD जिसका जो आंसर है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, जरा उसको देख लें, पेज 563. I would like to read that. What is the question of law? इसका मीनिंग पता चलेगा if we will read PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 563. दीजिए. The relevant is at page 569. ट्रिब्यूनल की क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आप रिफ्रेश कर लेते हैं ना रेफरेंसेस के लिए। ट्रिब्यूनल की पेज 569 पर आ जाइएगा सर. जी पढ़ें. Thus, many questions of law, 1, that involves interpretation of the law, rules, instructions, notifications, or governmental policies. 2, that has not been finally settled by the Supreme Court or is not free from difficulty or ambiguity or calls for discussion of alternative views. 4, that highlights a state of uncertainty in the law arising from a contradictory precedent or that points out blatant abuse of due process may pass for a substantial question of law of public importance. This is where this court has given the meaning to the word question of law. अभी तक जितने भी आर्टिकल 212 में तो और वर्ड ऐड हो जाता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इधर तो मैं सर्च कर रहा हूँ, इधर है एनी, इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। रेफरेंस में क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मगर ये 212 का रेफरेंस आप दे रहे हैं पैराग्राफ 7 में जो जजमेंट आप कोट सर मतलब तो वही हो जाएगा, एनी जो लफ्ज है इट इज मोर लिबरल देन द वर्ड सब्सटेंशियल। No, any would say that you can have multiple questions of law, but does not mean any के उससे आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बना दे। क्वेश्चन ऑफ देखें any का मतलब है मल्टीपल पूछे, 6 पूछ ले प्रेसिडेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, यस, no problem on that, but that doesn't mean that any gives a license to go into question of fact. After hearing the videos जो अभी हमने सुने भी नहीं है, वीडियोस तो बाद में आएंगे ना, पहले आप सवाल तो बताएं। Sir, ambiguity has been created, uncertainty has been created in the judgment, and as a consequence thereof, it has become a question of law. Naik sab, ek second. I mean, one is all for fixing miscarriage of justice. There is no dispute about that. There could be different ways of doing it. We are examining whether at all this miscarriage of justice, if at all there is, could be fixed under 186. That's the precise question. It could be fixed through legislation. It could be fixed through some other curative review concept. If there is any in India, they did it. So they did a curative review. They said, okay, this has to be seen. That there might be options. There could be legislation. Parliament बना ले law के judgments को revisit किया जाए, कोई अगर गड़बड़ हो जाए। हमें सिर्फ देखना है कि 186 की jurisdiction में हमें दरवाजा खोल सकते हैं कि नहीं। ये मत समझिए कि miscarriage of justice के against में। Of course we should fix our errors and we've no shame in fixing it. But तरीका तो बताए ना, आइन कह रहा है question of law बताए। हमने पहले देखना है question of law क्या है, फिर फैसला कर देंगे। अभी तक नहीं पता चल रहा question of law क्या है। प्रॉब्लम ये है। नायक साहब अगर आप देखें ना आर्टिकल 4 पे अब आ जाए, आर्टिकल 4 में नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। जी अब ये जजमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनली अटेंड कर चुकी है, दिस इज बाइंडिंग अपॉन ऑल कोर्ट्स एंड एवरी पर्सन। अब अगर इस जजमेंट को आप फॉलो करेंगे जिसमें बगैर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की एग्जीक्यूशन हुई है डेथ सेंटेंस, क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? नंबर 1, नंबर 2 ये कि जो हाई कोर्ट ने ट्रायल चलाया, क्या उसने इनकैपेसिटी ऑफ हाई कोर्ट चलाया या इनकैपेसिटी ऑफ सेशन कोर्ट चलाया? उसमें अपील का राइट भी गुजारा है। तो ये अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो कल को किसी का केस भी चला जाए कोर्ट में, किसी की भी एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी विदाउट कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट देते जाएंगे सेंटेंस। दिस इज नॉट लॉ पॉइंट for other people to come, उनके लिए। The question आएगा कि whether the Article 4 को नजर में रखते हुए whether the Supreme Court and the High Court had rightly interpreted Section 120 of the Pakistan Penal Code regarding conspiracy. That's very important, sir. If there is no conspiracy, the whole case falls. भाई प्रेसिडेंट साहब ये भेज देना सवाल, फिर देख लेंगे। सर अब आपके पास आ गया है ना 120 देखिए ना, Section 120 जो है that has become very relevant of the Pakistan Penal Code. Where was the agreement? वो खुद कहता है कि there was no agreement. See, if there was no agreement, there cannot be a conspiracy. I think Mr. Naik was
what Justice Jamal is saying, you didn't pick up, that can we leave such a, I mean, however the President has framed the question, who had sent it, who was the law minister or counsel? Your friend, Mr. Babar Awan. Dr. Babar Awan, sir. Where is he? He's disappeared. But anyways. He's joined another party, sir, now. So the question, basically, my Lord has observed that if, I mean, we understood the substance of the matter, the language used by the President, how appropriate or inappropriate it is, may not reflect it, but we've understood it. Do we want this as a precedent? For instance, can the High Court bypass the confirmation process? Can investigation, once closed, it be open? Can transfer application be taken up without consent? Because whilst hearing this matter, a number of other questions have been arisen. So this is a judgment by 7 judges. At the moment, the answer to everything will be yes. Sir, you can rely upon an approver. You can approve. It has, वो तो छोड़ दी ना judgment 4 or 3 वो judgment है ना. तो approval is okay. What is the standard of approval? That has not been discussed. So I think the substance of the matter has been placed before us. Now we can see the language, whether we can redraft it for, maybe that was the intent, but maybe it was not gone into the kind of detail which Mr. Manzoor Malik has taken us into. Maybe the record was not available, but we've understood what the President wants. Do you want this as a precedent on the law books? That's all, to be followed by, because otherwise it's a judgment 189, it's binding on all courts. Yes, tomorrow the high courts will continue holding trials, murder trials, will not do confirmation of sentence if they convict. So these are, I think, we need to address him, whether we do it in this jurisdiction, whether we overrule it like we did the Sanaullah Baloch case. But I think, I mean, exactly what the President is, I won't put too much weight on his particular language that has been used, but the intent of the language is there. And I think a lot of water has also flown on the bridge, because this court has taken cognizance of the matter. कि शुरू में कहते थे कि आप प्लीज रीड्राफ्ट करके भेजो, अब हम टेल एंड पे जरा मुश्किल हो जाता है ना, अब जैसे इश्यूज भी रीड्राफ्ट हो सकते हैं कोर्ट्स में. So why can't we redraft a question of, if we don't change the substance of what the President wants? Do you have any objection with that? Sir, we don't mind. What we want is the vindication in the history, number one. This should not be treated as, this judgment should not be treated as a precedent at all. We understand that. If you look at the substance, if we've understood the whole thing, it is that this was a mistrial. यही है ना? बिल्कुल. So आप हमसे opinion ले रहे हैं कि ये mistrial है. This is a factual question. ये जो आप कह रहे हैं ना, binding precedent. Sir, ये factual, it's not a factual inquiry. How is this illegal? It is, after looking into the material, your lordships will come to the conclusion that it is a mistrial. It's a factual exercise. It's not an inquiry. Inquiry is, sir, with due respect, inquiry is something else. It is just looking into the material which is already on the record. Already on the record, on the basis of that. Factual core क्या होता है? आपने देखना है सारा evidence और देखना है कि सही decide हुआ था कि नहीं. Let me come to your rescue. Let me come to your rescue. I think we can look at this reference in another perspective. That we don't go into the merits of the case. We don't go into the sections, but we look at the events which were taking in the periphery, whether they meet whether justice has been met or not, whether Article 4 was met, whether due process was complied with when the trial was taking place. And these are events which have come to light because of certain statements made by a certain member of the bench. So we don't go into section 336 or section 120A. We don't go into that. We look at the situation which prevailed at that time and whether the process was in accord with law or not.
Sir, आप देखें, as it has been argued upon, FIR was registered on the. Let's break some new ground. नहीं सर, मैं खाली थोड़ी सी इजाजत हो. In November 74 the FIR was registered. अगर आप चाहते हैं 6 साल चलाएंगे. नहीं सर आप थोड़ी सी थोड़ा ये सर मैं FIR का मैं आपको एक सर आप इजाजत होते हैं 2 मिनट के लिए. जी. सितंबर 75 के अंदर केस फाइल हो जाता है अनट्रेस्ड. 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगता है. ये हमें पता है. अच्छा, जब मार्शल लॉ लगता है तो उसका जो लॉ कंटिन्यूएंस ऑर्डर है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं. ये भी हमें पता है. ठीक. अब कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है. ओथ ऑफ जजेस को भी चेंज कर दिया जाता है. जो सेगमेंट था विद रिगार्ड टू द सारी बातें तो दिस इज वेयर द लेजिटिमेसी, जो मैं आर्टिकल 4 की बात कर रहे थे. You are repeating what has been said. We want you to say something new. आप क्या कहते हैं ये सब कुछ खाली इस केस के लिए चेंज किया गया है? नहीं सर, ये पूरे मुल्क के लिए किया गया है? नहीं सर, because basically the whole General Zia-ul Haq was orchestrating and controlling the entire proceedings of the trial. मुश्ताक साहब को, जस्टिस मुश्ताक को एक्टिंग चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 216 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बातें तो सदर ने की नहीं है ना. सदर हम आपको केस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप और स्ट्रीम पे जा रहे हैं. सर, all these things, the legitimacy of the trial effect हो रहा है. The person who is heading the trial has become the chief election commissioner. आप अगर पैराग्राफ 17, 18 और 19 पढ़ ले रेफरेंस सर जी, तो प्रेसिडेंट ने किसी हद तक अटेम्प्ट की है जी तो वो एक लीगल लॉ पॉइंट क्रिएट कर सकते. पढ़े जरा उसका रेफरेंस, मेन रेफरेंस का, और 25 पैराग्राफ भी. My lord, it seems that subsequently it was supplemented with the questions of 5 questions of law, this reference, and I have with me, I as President of the Islamic Republic of Pakistan consider it desirable to obtain the opinion of the Supreme Court of Pakistan on the following question of law relatable to the reference, the question being referred here in below be treated as part of the reference. Subsequently, whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan, ये वाले जो reported है, my lord, this was sent by the President, signed by Mr. Asif Ali. उसमें पहले वाले मर्ज कर लिए ना उन्होंने. फाइनल अब ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ. पिछले वाले भी हैं, पिछले वालों से बात अब ये फाइनली जैसे सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह मादा, ये पहले रेफरेंस में था. आप कोई नई बात करेंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कोई भी हमें नई असिस्टेंस मिली अभी तक, क्योंकि इस्लामिक प्रोविजंस की हम बात तो बड़े करते हैं मगर कोई हमारी मावनत नहीं करेगा. भाई बार बार कह रहा हूँ भाई क्या वो जी अमेरिकन फैसला, ये फैसला भी कुछ हमारी भी बहुत रिच हिस्ट्री है, उसका कोई हवाला दे दें. कोई नहीं दे रहा है. भाई इस्लाम में अप्रूवल की एविडेंस होती है, कोई हवाला नहीं दे रहा है. कि उसने मुझे कहा कत्ल कर दो तो मैंने कर दिया, अब उसको बख्श दिया जाए, दूसरे को सजा हो जाए. ये है इस्लाम में गुंजाइश इस बात की या नहीं, इसका भी हमें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है. तो जो नए सवाल जो हमने आपसे पहले दिन से पूछ रहे हैं उसमें तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है. मतलब बात तो करता है हर कोई इस्लाम की, मगर जब हम एक्चुअली केस उठाते हैं इस्लाम का फिर कोई नहीं आता है हमारी मुआवनत करने के लिए. आप 2 पढ़ें जी, तो पहला आ गया ना 2, और सारे पढ़ लेते हैं जो उनने भेजे, जो क्वेश्चंस भेजे. सप्लीमेंट जी, बात किसने करना? This is the last one. Whether the conviction leading to execution of Shahid Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all other courts being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. ये तो क्लियर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया ना. जी जी भाई हाँ सही फैसला है, बस ठीक है, खत्म. नहीं गलत फैसला है जी, तो कम से कम मावनत हो जाएगी हाई कोर्ट की, दूसरे सेशन जजेस की, कि उनको पता होगा यार इस जजमेंट को हमने नहीं रिफर करना है, क्या करना है. अब इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई फैक्चुअल बात पे जरूरत नहीं है मगर to form a opinion of law you sometimes have to go into the facts. This is what I'm saying. पहले दिन कोई शख्स आए और वो सेशन जज बगैर ट्रायल के आई कन्विक्ट यू ऑफ मर्डर,
भाई फिर आपको देखना होगा नहीं ये कन्विक्शन यहाँ तक जिसकी गवाही नहीं दी उसको 342 का बयान करने का स्टेटमेंट नहीं दिया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी टू लीड डिफेंस एविडेंस, तो फिर इट विल कम टू दोज लीगल क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स द इनिशियल क्वेश्चन में बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट इट ओपन्स योर डोर टू क्वेश्चंस ऑफ लॉ एज वेल एज factual. What are the facts? There's no question of fact. We shouldn't say question of fact. We should just say facts. It's a question of law. So factual, khatam. नहीं दी गई, legal consequences. So totality will be seen, and what is the result? I think maybe this is how I think about it. Your Lordship is right. This is what I've been submitting. The material and record has to be seen. Inquiry has not to be, and no inquiry need to be conducted. मैं अपना substitute finding नहीं करना चाहता हूँ हाई कोर्ट के, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब ये इसीलिए पहले दिन भी मंजूर, it is something so troubling to the conscience. Maybe I would have done things differently. Would it change the result? That's the test. It is so unconscionable. I think we have a very high bar to jump over. Yes, and once it is so unconscionable, then you lead to Article 4, Article 10A, the other Article 8. All those things come into the picture. वो जो बाकी चीजें, what is a fair trial? I mean, ये आपने opportunity नहीं दी. सबसे बड़ी बात जैसे जस्टिस मलिक ने पॉइंट आउट किया कि ट्रांसफर हो गया केस एंड नो नोटिस वाज गिवन टू द अक्यूज्ड. सो सी दिस इज व्हाट आई एम सबमिटिंग. आप कह रहे हैं कि आप पे मुझे भरोसा नहीं है जी जी एंड वजूहात दे रहे हैं, वो एक दिन में हो जाता है. ये सारी बातें एक ये मिक्स ले सकते हैं. मे बी वन लैप्स ऑन इट्स ओन मे नॉट बी सफिशिएंट, बट व्हेन टेकन टुगेदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट यही है कि देयर इज अ कंप्लीट क्या कहते हैं वायलेशन ऑफ लॉ इन द ट्रायल दैट टुक प्लेस. देयर वाज ये बातें तो हो गई हैं, आप हमें कोई नई बात बता. सर सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं खाली इसी पर क्या कहते हैं कन्फाइन करना चाहता हूं कि फैक्चुअल इंक्वायरी नहीं कर रहे. पाबंदी लगाऊंगा. जी जी अच्छा. अगर आपने बाहर जाके ये कहा कि 10 साल से केस का फैसला नहीं हुआ, तो फिर ये साथ साथ ये भी कह दीजिएगा कसूरवार हम नहीं आप हैं. सर मैं तो ये वैसे ही भागता हूँ. ये बुरा ना माने. ये अगर आप ये देखें ना, ये आगे आप सेकंड जी तीसरा पढ़ें. तीसरा पढ़ते हैं. Whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. See, all the arguments which have taken place till date before your lordships, I don't want to repeat, goes to show the answer has to be in positive, not negative. And the material has to be looked into, and no inquiry needs to be done. Whether the decision in the case of the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirement of Islamic laws as codified in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether present case is covered by doctrine of repentance, specifically mentioned in the following surahs of Holy Quran. See, it's a question of repentance is tawbah. Repentance बाद वाली बात है, पहले वाली बात है fulfillment. ठीक है जी. तो देखिए, अब या तो आप कहें कि those are not applicable. If Islamic provisions are not applicable, then why should we follow UK precedents? I think Islamic provisions are more applicable than any. Definitely. There is a rich tradition of Islamic jurisprudence. So repentance is probably referring to maybe Justice Naseem Hassan Shah's interview. I don't know, because it's not clear what is meant by it. अगला भी पढ़ लें. 50 पढ़ लेते हैं सर. Whether on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. ये मटेरियल की बात आ गई ना, फिर टोटल फैक्ट ये हम नहीं करेंगे. सर मटेरियल को पहले दो में कवर हो जाए. सर मटेरियल को तो देखना पड़ेगा ना. दो चीजें नजर से मैं ये नहीं कहता हूँ फैक्चुअल इंक्वायरी, मैं खाली रिक्वेस्ट करूंगा मटेरियल टू बी लुक्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन. वी ऑलरेडी डन सो. 2 दिन हमने सुना है. दिस इज व्हाट आवर सबमिशन इज. ये बताएं आपके ख्याल में और आपके क्या व्यूज हैं इस पे कि अगर एक डिसीजन ऑलरेडी बायस पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, क्या हम अभी उस पे दोबारा से बैठ के अपना व्यू दें? सर कर सकते हैं आप, क्यों नहीं. देखिए ना, आपने 187 में कंप्लीट जस्टिस करनी है. वो चीजें जो कि नहीं उनने कंसिडर की हो, हम उस पे कर लें, चले ठीक है. और जो उन्होंने गलत भी की हैं, ग्लेयरिंगली गलत है सर, ग्लेयरिंगली गलत है. थोड़ा सुन. जी देखिए, दोनों साइड्स को देखना है. हमने एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की हो गई है
और वो एक्सिक्यूट भी हो गई, हमने उसे भी जहन में रखना है। और फ्रेश चीज़ें आई हैं जिसकी वजह नहीं तो फिर आप हर केस को इसी तरह, हर केस में हर एक हमारा एक व्यू होगा, हमारे बाद दूसरे आएंगे उनका दूसरा व्यू होगा। सो ये चीज़ मेरे ख्याल में थोड़ी सी देखनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि उस जजमेंट में ना एड्रेस की गई हो और आप हमारे सामने ला रहे हैं। हम बिल्कुल आप बताएं कि जी ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं आई दोनों में, तो प्लीज आप देखें ये मटेरियल आ गया है, इस पे आपका क्या व्यू ओपिनियन है? मेरे ख्याल में दो चीजें इसमें है। सर देखें, नसीम हसन शाह खुद कहता है कि ज्यादती हुई है। उनको छोड़ दें। जी जी, लेकिन ना ओवरऑल पिक्चर अब आपने देखनी है। जिस तरह ये ट्रायल हुआ, मैं नहीं समझता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ट्रायल इस तरह हुआ हो। जी जी, स्टे फोकस। ठीक, मैं फोन में जस्टिस याया का जवाब सियासी बातों में चले जा रहे हैं। अब आप फोकस हैं, इस पे खत्म करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे ख्याल में इसमें एक बात ये है कि एक तो वो जो डेथ पेनल्टी को कंफर्मेशन नहीं हुई हाई कोर्ट से, जो कि 374 की खुलम खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की वजह से अपील का राइट, जो कि फंडामेंटल राइट है, प्रिंसिपल राइट, वो डिप्राइव। ये आज तक किसी ने बात नहीं की जो माय लॉर्ड कर रहे हैं। एक राइट तो गया, तो there must be some outweighing considerations before the court के, या वो आदमी खुद के कि जी आप मेरा ट्रायल करें, मुझे लोअर कोर्ट पे भरोसा नहीं है। वो तो समझ जाता है, वो अपना राइट, एवरी पर्सन कैन फॉरगो हिज ओन राइट, बट द स्टेट कैन नॉट टेक अवे समवन एल्सेस राइट कि तुम्हारी जरूरत नहीं है एक राइट की, मैं फैसला करूंगा। मैं अपना राइट फॉरगो कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ आप मेरा फैसला कर लें, मुझे नहीं चाहिए अपील, ठीक है, मैं तो कर सकता हूँ। This is what the state मगर ये किसी ने इस पॉइंट पे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं किया है। Maybe you can give us some case law on that. Can you take away someone else's right? You can forgo your own right, but I cannot take away your right. That's I don't think ये किसी ने इस पॉइंट पे टच नहीं किया। बड़ा आसान था नाइक साहब कि ये सवाल भी बन सकता था कि could there be conviction without a confirmation, without a reference and a confirmation under 374? A simple question, and one could have answered no. As a consequence, वो सारा unsafe हो गई judgment. इस तरह क्यों नहीं सवाल इस तरह के? सर देखें, आपने भी जो लेटर ऑन क्वेश्चन जो बनाए, क्वेश्चन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनाए, क्रिमिनल क्वेश्चन बनाए। नहीं, मगर ये अपील की, आप जस्टिस जमाल साहब ने जो बात की अपील की, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं सर बात बड़ी क्लियर है, देखें ना, राइट ऑफ अपील खत्म हो गया। सेशन हमारी बात मैं बोल नहीं रहा कि मंजूर मलिक साहब ने बड़ी क्लियरली बताया कि सेशन ट्रायल होना चाहिए था। जब सेशन ट्रायल होगा तो उसकी राइट ऑफ अपील होगी, कंफर्मेशन होगा, मगर इसमें राइट ऑफ अपील भी खत्म हो गया। एक राइट ऑफ अपील खत्म हो गया ना इसके अंदर। इस पे कोई आप हमें केस लॉ दें ना, कुछ तो करें ना इस पे। सर केस लॉ आपको दे देंगे। हाँ वो करें ना, ये पॉइंट पे कर लें, इस्लामिक प्रोविजंस पे दे दें कोई केस लॉ। इस्लामिक प्रोविजन और इसके ऊपर मैं आपको केस लॉ देंगे। क्वेश्चन ये हो सकता था कि क्या मर्डर केस हाई कोर्ट सुन सकता है डायरेक्टली? सर वो नहीं बने ना क्वेश्चन। सुने तो सही ना, तो नहीं बने तो हमें बताएं ना, हम क्या करें, बना लें। अच्छा दूसरा आपने बनाए 8 क्वेश्चन बनाए, ये भी बन जाता। नहीं ऐसे आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि कैन वी चेंज एंड ऑल्टर द क्वेश्चन ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर टू कैन वी से द क्वेश्चन कुड हैव बीन कि जी ये जो कंफर्मेशन वाली बात हो गई, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, जो मलिक साहब ने सारा जिक्र किया, सारे क्वेश्चंस थे, ये इस पे जनरल हमारी फाइंडिंग आ जाए तो जजमेंट ऑटोमेटिकली क्वेश्चन 1 पढ़ा जाए, उसके अंदर कवर हो जाएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना माय लॉर्ड, क्वेश्चन 1 कवर हो सकता है जी। क्वेश्चन 1 लेट्स रीड क्वेश्चन 1 सर। Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shahid Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4. 4 के अंदर ये कवर हो जाएगा सर, जो आप बात कर रहे हैं। सब आर्टिकल्स 1 and 2A, आर्टिकल 8, 9, आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 14 प्रोसेस था, 10A था भी नहीं सर, खाली ड्यू प्रोसेस देखने, 10A तो नहीं था, ड्यू प्रोसेस तो था ना सर, ड्यू प्रोसेस था। दिस इज द आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। अगर इसको हम वजाहत से कर देते ना तो थोड़ा बेहतर होता। आप यस बाय इम्प्लीकेशन यू कैन से हैं कवर्ड, मगर जो वैसे माय लॉर्ड जस्टिस शाह ने बात की है कि वो अगर हो जाता तो आसानी हो जाती। वो क्लियरली क्वेश्चंस नहीं बनाए गए इसमें। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखिए, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ठीक करना बिल्कुल, आई एम फॉर इट, नो मैटर व्हेन इट हैपेंस। Our problem, my thinking for myself is
can we do it in this particular case in the kind of question sent? And secondly, the question is by the discretion of the president, who must have examined the public importance and then framed a question. It's the president, matlab is the highest office. Definitely. I say, okay, आपने तो चलो सवाल A पूछा है, वो तो गलत है, मैं नए सवाल बनाता हूँ, actually सवाल पूछना क्या चाहिए था तुम्हें? ये हम कर सकते हैं. सर, मेरी खाली आपसे अर्ज ये होगी कि ये What is your answer to can a presidential reference the questions as sent, can they be redrafted? ये बताएं. नहीं, आप अपना opinion ना दें, कुछ reference. Case law is against you on this one. सर, मैं ये नहीं कह रहा आप रीड्राफ्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप ये आंसर दे सकते हैं. आप बताएं ना, कोई जजमेंट पढ़े ना. सर, आप कहते हैं रीड्राफ्ट नहीं कर सकते. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है. Reference to any textbook, legal precedent, कुछ तो देना पढ़े ना कुछ आप. ये तो हम भी कह सकते हैं. The weight of judgment is against you. Judgments are that reference का question president का change नहीं हो सकता. आप बता दें हमें. सर, हमें ये flexibility दे दें, हम सवाल. सर देखें, दो जज फॉरेन जुरिस्डिक्शन से रिट ऑफ कहते हैं कोरम नोबिस की बात की थी. एक कैनेडियन कनाडा के अंदर भी इसी तरह की पावर है और कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया था. अगर पावर है तो बात खत्म हो गई ना. कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया था बाय द कोर्ट. देखें, दुनिया में केसेस हैं. बर्मिंघम 6 का केस है, मटन का केस है. उनकी अपनी अपनी तरीकाकार है ना. किसी जगह लेजिस्लेशन है, किसी जगह कॉमन लॉ ने जुरिस्डिक्शन ले ली है, तरीकाकार है. आपसे सिर्फ इतना सवाल. कनाडा के अंदर एग्जैक्टली लाइक दिस है. अगर आप इजाजत दें तो कनाडा का मैं आपको बताऊं. नहीं, हमने पढ़ लिया है, आपसे पूछा. तो आप ऐसा करें मेरे ख्याल में. अब आपको पता चल गया है. एक फर्स्टली पहली बात ये कि क्या सदर साहब के दिए गए सवालात में तरमीम हो सकती है. पहला बात आप हमें इस पे नोट दे दीजिए. ठीक. दूसरी बात हमने आपसे पूछा है राइट ऑफ, अगर एक अपील चली जाए किसी मुल्जिम की, उसका वो लिया जा सकता है या वो खुद राइट ऑफ फॉरगो कर सकता है. दूसरी बात. तीसरी बात जो ऑलरेडी सवाल में रिकॉर्डेड है कि इस्लामी तालीमात के मद्देनजर ये हम इसको कैसे इस फैसले को देखेंगे. बिलखसूस अप्रूवर का रोल कि भाई मैं आपको कहता हूँ आप फलां को जाके कत्ल कर दो, आप तो बच गए, मुझे सजा हो गई. ये मतलब ये आप हमें पॉइंट्स दे दीजिए. ठीक, दे देते. आई नो आप शायद नहीं है, मगर हम आपको वक्त दे देंगे कि आप हमें लिख के दे दें. I'll give it in. अगर हम आप आगे थोड़ा बढ़े, किसी और से सवालात करें, ठीक, तो फिर अगर आपके जहन में कोई और बात आती है, बस that's it. आपने जो क्वेश्चंस हो सकता है आपके जहन में और बेहतर बात है. एक चीज और मैं उसी के अंदर जो नोट दूंगा उसके अंदर जो ऐड करना होगा ऐड करके आपको दे देंगे. राइटिंग में आ जाएगा. ये जो आपने जिन वीडियोस का रेफरेंस देना चाहते हैं, प्लीज आप उनका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको दे के जो क्वेश्चंस आप समझते हैं कि ये रेलेवेंट हैं उनको आप हाईलाइट कर दें कि जी दीज आर द इश्यूज, दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आई वांट टू रिलाई अपॉन. ओके सर. ठीक है. तो वो आपके इंस्टेड ऑफ वॉचिंग हमारे सामने होंगे, हम वो ट्रांसक्रिप्ट में देख लेंगे कि कौन सी चीज हमें आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है. ठीक है सर, दैट विल बी डन. ठीक है, थैंक यू सर. चलें, अब नेक्स्ट जाहिद साहब हो गए, ये हो गए. रह कौन गए? इत्तेजाज साहब रह गए. नहीं, रजा रजवानी साहब आप किसके लिए? ये भी माइकस. Are you Michaels or you? No sir, I'm representing Miss Sanam Bhutto and the two. Farooq Saab, who did you represent? Farooq was representing Bilawal Bhutto. तो आप you want to finish? You also, अगर आप ही you want to add something? Yes, my lord, I would be adding. Do you want to go first or shall इत्तेजाज साहब पहले करें? आपस में आप लोग फैसला कर लें. हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते. इत्तेजाज साहब. ठीक, आइए इत्तेजाज साहब. My lords, we have identified the documents. मिल गए आपको? They have been flagged. Excellent. My lord. Very good. Thank you. But we need that write up which we said. My lord, will be given. ठीक है. Take your time, लेकिन कर दें. Thank you for all your assistance. Wonderful. We may we proceed back to Lahore, my lords. Well, okay, no problem. Thank you. Islamabad is a good city. Spend the night. We have a case. Great one. एक सेकंड, don't go before. एक सेकंड ठहरिए. One was the application. नहीं, एक तो ये हो गया, दूसरा किधर है? इसकी मुझे फोटोकॉपी कर दें जितने जजेस हैं. हाँ, सबको कर दें. बल्कि थोड़ी 2-4 और भी करवा लें कि बाकी वकीलों को भी दे दें. एक तो ये हो गई. This is the application which was yes. But maybe for the council's benefit.
5-6 पेजेस उसमें एक लगा हुआ था ना, ये उसमें एक लगा हुआ था। आप ऐसे करें ये दोनों चीजें अलग अलग तरतीब से, हाँ कुछ जरा 10-15 सेट बना दीजिए, ठीक है? This is the complete statement. ठीक है, for the benefit of council and for us also. Thank you for your assistance once again. My lord, I just wanted to confirm one thing, that would you be winding Meeting it up tomorrow, or would you be convening tomorrow तो नहीं जाएगा, tomorrow we are here. have a lot of work. We are here. The night is young. Okay. Or the evening is young. Okay. No, unless, like I said, then take on the burden of this case never finishing on your shoulders. If you're prepared to make that statement, we will give you all the time in the world. It is a sub. Who do you represent? I'm a guy. You, acha, am I? Any new points? With your considerable vast experience, we would like to hear some new points. New point. Although I've submitted in writing my submissions also. Which one, CMA number? Yes sir, CMA नहीं लगी. Oh, wonderful. हाँ. इसमें मैं इस पे नंबर भी लगवा लीजिएगा, हाँ? ये अभी ये दे रहे हैं आप हमें? दे रहा हूँ. अच्छा, ये सबके इतने सेट्स हैं? आ गए सारे. Do you want us to go through this? I'll take you through this and fast. Thank you very much. But I will. Just if you can just go take us through it. जी. मैं पहले तो अर्ज करना चाहूँगा this paralysis we have everybody. Not just a judicial paralysis, but a paralysis that we don't have any paralysis here. That we cannot revise or go into a judgment that has been attained finality. ये finality का जो issue हमारे पे हमें paralyze कर देता है. It doesn't let us work on that. ठीक. If you look at एक चीज मैं पहले जरा अर्ज कर दूं, ये फॉर दी रिकॉर्ड, आपने 5 सालों पे हमने बात कर दी है, आपको किस वक्त है. मैं एक चीज अर्ज कर दूं, and I want to say that loud and clear. I am not prepared to answer question number 4. Question number 4. We're not asking you. I am not prepared to answer. I want to go on record. Because, सर ये जो है इससे तो मैं डरता हूँ इस सवाल को जवाब देने से. इस्लामिक लॉ वाला. हाँ. अच्छा. छोड़ दीजिए. इसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया और किसी को नापसंद हुआ वो जवाब. इतने फिरके इतने यहाँ, तो मैं तो मारा गया मुफ्त में. I पता नहीं है हर एक चीज में this has to be brought in. और इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल के शेर है, and I've had to use these verses in the National Assembly, in public gatherings many times, क्योंकि कोई बात कह दो तो कोई ना कोई उठ के कहता जी ये तुम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो. भाई एक ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरी, वो इस्लाम का उससे ये अब फॉर्मली पूछ रहे हैं. ये देखिएगा whether the decision in the case of murder trial against Shahid Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirements of Islamic laws as codified by the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether present case is covered by doctrine of repentance, especially mentioned in the following surahs of the Holy Quran, Surah Al-Nisa, Surah Al-Baqarah. Any point बताइए ना. अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो ये आपके सवाल पे इन पे बहस करते हुए नहीं, मैं कुछ इस्लामिक आप तो स्किप करना चाहते हैं वो कर लें. हमारे हम कोई जबर तो नहीं, आप जो मर्जी करें आप छोड़ दीजिए. वो अल्लामा इकबाल ने कहा जी, वायदों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा. दिस इज अल्लामा इकबाल. मैं सिर्फ इसमें ये करके छोड़, वायदों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा, अपनी हर बात को आवाज़ खुदा कहते हैं. बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती, बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती, दीन की आड़ में क्या करते हैं क्या कहते हैं. और तेरे बंदों का जो ये हाल है शाफ़ायाश, मेरे जैसे को तो क्या जानिए क्या कहते हैं. So I am
not going to. नहीं, आप इतना तो कह सकते हैं कि ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल को रेफर कर दें क्वेश्चन। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक। अच्छा सर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 186 को जरा देख लें। जी। 186 ये अगर आप मेरी ये किताब देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इतना कुछ जो कि मलिक साहब के पेपर में पॉइंट्स हुए थे वो मेरी सारी बहस खा गए। दिस इज ऑल प्रिपेयर्ड वॉल्यूम्स नंबर 9, 8 ये सब कुछ हमने भी जुनैरा और कैसर ने किया है। आई डोंट टेक क्रेडिट ऑफ दैट बट दिस वाज अ पेंसटेकिंग सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। सर ये जो है पेज आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 186 लेट अस ये आपने रिप्रोड्यूस किया हुआ है जी वन पे। जी ये मैं इसी में से जाता हूँ, पढ़ता ही जाता हूँ। आई वोंट वो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ आर्टिकल 1। जिस कंपनी में जिस ऑरा में और गैलेक्सी में ही आता है आर्टिकल 186 उस आर्टिकल उसके में ये आर्टिकल्स हैं 184, 185, 186 से 187 इनमें क्या फर्क है और आर्टिकल 186 क्यों डिस्टिंक्टिव है? आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा इसमें है कि मे पास एन ऑर्डर ऑफ द नेचर ऑफ आर्टिकल 199 दैट इज द नेचर। अब वो फंडामेंटल राइट्स की भी कंडीशन है और पब्लिक इंटरेस्ट की भी है बट बेसिकली ऑफ द नेचर इन 199। 185 में may hear and determine the appeals from other decisions in the high court। ये 185 की बेसिक चीज है, अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट। अब 186 को अभी मैं छोड़ रहा हूँ 186 से the Supreme Court may, if it considers expedient to do so in the interest of justice, transfer any case, appeal or other proceeding pending before any high court or any other high court. The compulsive use of the word any really widens this actually. Then 187, subject to clause 2 of article 175, the Supreme Court shall have the power to issue such direction, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice. And any such direction in number 2 order or decree shall be enforceable throughout Pakistan and shall, where it is to be executed in a province or a territory or in the area of forming part of the province, but within the jurisdiction of the High Court of the province, be executed if it has been issued by the High Court. Then, sir, 188. 188 is the Supreme Court shall have the power, subject to the provisions of any act and of any rules made by the Supreme Court, to review any judgment pronounced or any order made by it. This I pause. This itself is a power that your lordships have. It is to be exercised under the rules, no doubt, but it is a power that you have even in this case. And I will come to that a little later, but then 189, any decision of the Supreme Court shall, to the extent of it decides the question of law, or is based upon the or enunciates the principle of law, be binding on all other courts of Pakistan. अब इसमें इस फैमिली में 186 को आप एग्जामिन करें एंड आई फोकस ऑन 186। सर आपकी इजाजत है। जो कुछ आपने पढ़ा है
वो तो ऑलमोस्ट आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं और पेनल्टी आ गई। अब उसको दोबारा उसको पढ़ने का तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि 188 में क्या लिखा है, 189 में क्या लिखा है, 187 में क्या लिखा है। यू हैव एग्जॉस्टेड द रिव्यू, वो खत्म हो गया। अब रह गया 186 पीछे रह गया। आइए सीधा सीधा 186 को देखें, ये बड़ा दिलचस्प है। 186, if at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court or any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. The Supreme Court shall consider a question to be so referred and report its opinion on the question to the President. Now, in this, we have judgments which clearly say that it cannot be sent back unanswered. The questions have to be answered, even if your Lordship's answer, this is not a question of law. I think one point which you missed, if you look at clause 1 and clause 2, the clause 1, the restriction is on the President, what he considers to be a question of law. But it doesn't say the Supreme Court will consider only questions of law. It says the Supreme Court shall consider a question so referred. Now that is the opinion of the President. Even if it's a pure factual question, I think we have to consider it. I don't know. Maybe that could be one interpretation and give your opinion. Or we could say that this is not a question of law. You could, of course, say that. Answer हमें वो उनकी सवाबदीद है. अब उसका प्रेसिडेंट खुद मुख्ता है या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करना है, वो एक अलग क्वेश्चन है. अब दूसरी बात, एक बहुत ऑपरेटिव पॉइंट किसी ने नहीं बताया. इफ द प्रेसिडेंट, आप जरा देखें ना सामने, आपको पॉइंट समझ आएगा जब आप जरा देखें. इफ द प्रेसिडेंट, इट कुड हैव सेड इफ एट एनी टाइम. इन तीन लफ्जों का मतलब क्या है जी? इफ द प्रेसिडेंट क्यों नहीं लिखा है? पेज नंबर 3. इफ एट एनी टाइम क्यों लिखा है जी? दैट मीन्स के पुरानी बातें भी आ सकती हैं सामने. नहीं तो एम्फसाइज हुआ है ना. अदरवाइज यू कैन कन्वे द वेरी सेम मीनिंग बाय द वर्ड्स इफ द प्रेसिडेंट. व्हाई से इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट? So either these words are redundant or they give... No. Any is a word that expands the categorization. It is unlimited. अब part 2 में नहीं लिखा है Supreme Court shall consider a question of law so referred. Shall consider a question so referred. The referred can only be a question of law. Shall consider a question so referred. अब वो प्रेसिडेंट के जहन में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है. हमारे नजदीक ये क्वेश्चन ऑफ, सपोज इस केस की नहीं बात करें, हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता ही नहीं है. हम उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? सर ये जो सवाल पड़ा, उसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है सर. मैं इसे अर्ज करूं, अगर हर हालत में हमें कुछ ना कुछ लिख के भेजना है. बट वो जो ये जब इस तरह का होता है, सो रिफर्ड फॉर इंस्टेंस, इट अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर एंटिटी or concept that has preceded. Something that has preceded. But can we, that is desirable. Was it desirable? Can we go into that? I don't think we can go into desirability. That is for the President to decide if it is desirable or not. And I don't think it is justiciable. Exactly. I don't think it is justiciable. Yeah, I agree with you. जी. Unless वो Cameron जैसा. इंतज़ार साहब देखिए, इसी में ही the President on any question of law which he considers of public importance. So the President must sit down, think, apply his mind, and think that this particular question is of public importance. मतलब ऐसा तो नहीं ना उन्होंने भेज दिया कोई सवाल, उन्होंने पहले सोचा कि सवाल क्या है और public importance का है. तो इसलिए बात हो रही थी कि आप for instance, आपकी जो बात है ना justiciable है या नहीं, suppose it is not of public importance. Can we say we not answer it because it's not of public importance? I think we still have to answer it. That's, I don't know, my tentative view on the matter. As far as the public importance is concerned, that is the domain of the President.
the court cannot enter the domain of the president's discretion when it considers whether it is of public importance or not. Yes, the case law which has developed is whether it is a question of law or not. But a point has been raised by the worthy Chief Justice in which he talks about subarticle 2 saying the question so referred. It's not question of law so referred. So this has to be looked into. अगर पहले सवाल एक सेकंड इसमें ऐड कर दूं उसको लिमिट कर दिया है। इंतजार साहब इसमें जरा मैं ऐड कर दूं जो जस्टिस आया ने कहा कि देखें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस है ना कि हम प्रेसिडेंट की चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन्होंने एक ओपिनियन बनाया है कि मेरे ख्याल में ये सवाल है क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये उनके मुताबिक है ना जी, हम उसमें नहीं जा सकते। तो हम फिर किसी चीज में नहीं जा सकते, हम सिर्फ इसमें जाएंगे कि ये सवाल है इसका जवाब क्या है। हम इसमें भी नहीं जाएंगे कि अच्छा आपने पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल तो ये सोचा है लेकिन हमारा ख्याल है कि सवाल यूं होना चाहिए था, ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं है, और इसमें सर जब सो रिफर्ड है सो इट विल बी रिफर्ड। Are you saying the word so means that it becomes justiciable that the question is of public importance, number one? Is it justiciable that it's a question of law? Is it justiciable that the president desire was properly exercised? Then we make all these things justiciable. If you are saying so referred implies all these things in it. No, sir, I'm not saying that. I'm not saying that because when it's the Constitution or any legislation or you and I in general conversation say that this was so referred and it refers to an entity which has been identified as a question of law in the previous, because the so referred has to come after something that is being referred and has already come. Correct. Now, so it will be to the law point. It won't. The numbers. You saying it will be the law point? Clause 2 will not expand the category. हमारे यहाँ मैं एक चीज अर्ज करूँ सर, ग्रामर में मुझे बड़े हम वो कहते हैं लिखते लिखते उसमें, and for instance for such एक जगह आपने कहा कि 100 bags of wheat were going on a truck and the truck crashed with such wheat. अब वो सच का यहाँ सच की जगह इट कर दें, आप उसकी जगह ये बड़ा सिंपल था, पर हमारे एक वकूला में सच का बड़ा जिक्र आता है और एक वकालत में इस किस्म के एक दो अल्फाज हैं which grammatically don't appear necessary. But अब सर इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था, इसमें अब 4 चीजें इस 166 में 186 ये हमने कवर कर ली 4 चीजें। सर मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा किसी, मैंने तो आपको किताब दी है जो वो देखेंगे आधी से ज्यादा वो मलिक साहब वाली वो पैराज नंबर्स और वो भी सारे निकाले हुए जो हैं वॉल्यूम्स हैं, एंड आई वाज फीलिंग सॉरी नॉट फॉर माय सेल्फ बट फॉर माय एतजाज साहब इसका एक जवाब दे दीजिए मिस्टर एतजाज। जी सर, ये सुनिएगा, ये सब आर्टिकल 2 के अंदर ये वही बात है जो 186 में भी हो रही है। The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President. So after considering the question, can we answer that these are not the question of law? Yes. Hey, of course, if it is not a question of law, then your lordships have to advise the President that these are not within the purview of his jurisdiction or his authority to seek an opinion on anything other than on points of law. And I will, in challenging, contesting the decision, the judgment of in Mr. Bhutto's case, I will be avoiding going into any statement, any piece of evidence. I won't even go. Nor we can reframe the questions. No. Reframing the questions में you will have. Reframing the question में आपकी अथॉरिटी कुछ होगी। वो 186 में कहाँ है? सर मैं उसमें जजमेंट्स हैं
इसमें ये जो वो गवर्नर जनरल नहीं इसमें अगर सब्सटेंस वही है वो आप उसकी अंग्रेजी में थोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, देयर कैन बी यू कैन रीड्राफ्ट सर इसमें ह्यूजली डिफरेंट ह्यूजली ये रेफरेंस जो हुई सवाल जो Were you consulted when this reference came? Which reference है This one. ये जो आपको क्वेश्चन आए नो आई एम नॉट So who was? Babar Rawan साहब. Where is he? Babar Rawan was the lawyer for the referring authority, and then he the brief was taken away from him and was given to me. That was a bit late in the day, don't you think? In fact, I inquired, and the Attorney General, learned Attorney General, said he was going to appear for the referring authority. So I reverted back to my amici position. There is an order by your lordships appointing me amicus, and I have not been withdrawn. So I'm here to serve your lordship. Milord, ये बड़ी उसमें जो गवर्नर जनरल रेफरेंस थी यही इसमें आया कि क्या चेंज कितना कर सकते हैं, उसमें चेंज किए उन्होंने क्वेश्चन, उसमें कौन सी प्रोविजन के नीचे आया था ये सर ये 56 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 213,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 213 213 है जी इशफाक, और ये reported as, of course, as your lordships know, you wear your law on the sleeves. ये under ये है सर PLD 1955 Federal Court 213. Oh, sorry, 435. 213 to section 435. इसमें इन्होंने ये किया था, जो क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 3 था, और आपको याद होगा कि तमीजुद्दीन साहब इंडिया एक्ट है while the National Assembly, on grounds that it had not formulated a constitution, was dissolved by the Governor General. Tamizuddin Saab challenged that Sindh High Court restored the. इसमें क्या क्वेश्चन क्या था? ये सर इसमें ये क्वेश्चन था, ये पढ़ देना, ये whether the Constituent Assembly page sir 449 जी सर, whether ये पैरा subsequently नीचे है, subsequently as suggested in the course of the court's order. ये सर the questions originally referred to were, ये दरमियान में इस पेज पे है 449 के दरमियान में, the last line है paragraph की. The questions originally referred were, what are the powers and responsibilities of the Governor General in respect of the government? आपने चेंज किए थे क्वेश्चंस, वो कहाँ हैं? वो सर ये इसी में आ रहा है ना, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन ही देख लें, दूसरे को पहला तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, पढ़ेगा. What are the powers and responsibilities of the Governor General in respect to the government of the country before the new Constituent Convention passes the necessary legislation? इसको इन्होंने change किया. Subsequently, as suggested in the course of the court's order dated 18th April 1955, the following further questions were also referred for opinion. जो आएंगे यहाँ नहीं बनाए जी सर, वो दो और आ, whether the Constituent Assembly was rightly dissolved by the Governor General. ये उन्होंने वो उन्होंने भेजे. जी सर, उन्होंने भेजे. हाँ उन्होंने भेजे. हाँ तो हम नहीं सर, नहीं आपने किया, मैं कोर्ट में सजेस्ट किया
आर्डर में पर जिक्र आप किया। शायद अभी कुछ और सवाल पर बनाना इसमें चाहें। आपने चेंज किया ये जरा देखिए दूसरा डिफरेंस ये भी है ना, ये कि एग्जीक्यूटिव एक्शन पे ओपिनियन लिया जा रहा है। एक तरफ हम ओपिनियन ले रहे हैं एक डिसीजन पे ऑफ द कोर्ट। प्लीज कीप दैट डिस्टिंक्शन। सर आई शो योर लॉर्डशिप उसमें भी सर। अच्छा, इसमें ये जो वो हाँ ये इन्होंने किया ये था कि ये जो लफ्ज राइटली है, वॉज इट राइटली डिजॉल्व, इसको इस केस में द कोर्ट टुक इट एंड आंसर्ड इट एज वॉज इट लीगली एंड लॉफुली डिजॉल्व रादर देन राइटली। ओके, ये सब्स्टिट्यूट किया। ये मैं आपको एक मिनट में दिखाता सेक्शन हूँ। 213 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकालें। इम्प्लाइड ना भी करते तो उसे इम्प्लाइड राइटली डिसॉल्व करते, लॉ के मुताबिक डिसॉल्व हुआ था। डिस्ट्रिक्ट को जो मॉडिफाई हुआ वो भी तो कोर्ट ने तो मॉडिफाई नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं अभी आगे पढ़ रहे हैं कि ये वाला जो राइटली वाले की जगह लॉफुल कर दिया जी। वो दे लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली। लीगली इनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो किधर क्या है? अगर पेज 521 पे जाएं तो वो तो वही रखा है, whether the Constitutional Assembly was rightly dissolved by the Governor General. They discussed it as legally. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। आप जो प्लेसेटम आई पढ़ें। जी सर। प्लेसेटम आई पेज 461। एतजाज साहब, अगर आप वो एतजाज साहब रिकॉर्डिंग वाले रेफरेंस पे अगर आप देखें, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोर्ट ने अपने लिए इश्यूज बनाए। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, सम इश्यूज वर फ्रेम्ड। उस इश्यूज को डिसाइड करते हुए हर क्वेश्चन के जवाब आता गया। जी जी, वो इस तरह तो आप कह सकते हैं कि बजाय इसके नए क्वेश्चन बनाए, उसको रिजॉल्व, उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए पॉइंट समझ लें, इश्यूज समझ लें, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, इस तरह की। उस अगर आप वो तो अगर आप जिस फॉर्मेट में भी उसको कर रहे हैं, यू हैव योर लॉर्डशिप हैव द अथॉरिटी, जवाब क्वेश्चन का ही देना उसी क्वेश्चन का होगा। जी जी। बैरिस्टर साहब, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता था तो वो क्या हो सकता था? अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड था कि इसमें होता तो वो क्या होता? क्या मुनासिब क्वेश्चन ऑफ लॉ, मुनासिब नहीं यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें तो मुनासिब क्वेश्चन थे बुनियादी तौर पे कि असेंबली whether at all you can have a murder without that is in the first question that covers that. फर्स्ट में फिर ये कवर होती है किस तरह? क्यों नहीं, वो कवर करते हैं पहला क्वेश्चन। सर अब इसमें आप एक मुलायजा करेंगे, आई जस्ट गेट दैट आउट, आई डोंट नो व्हाई एस्केप सर। अब ये रीफ्रेज क्वेश्चन के तहत इसको लिया गया। अब इसमें एक दिलचस्प चीज आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको रिक्वेस्ट की थी कि प्लेसेटम आई पढ़ लें। आई जो है पेज 461, वो इसमें जुरिस्डिक्शन को वो किया हुआ है एक्सप्लेन। सॉरी, आई 461 reference under we cannot on this reference undertake this inquiry or record any findings on the disputed questions of fact, because any such course would cover us into a fact-finding tribunal, which is not the function of this court when its advice is asked on certain questions of law. The answer to the legal question always depends on facts found or assumed, and since we cannot try issues of fact
the reference has to be answered on the assumption of fact on which it has been made. The Privy Council also has, under Section 4 of the Act of 1833, similar advisory jurisdiction, but no precedent from that similar advisory jurisdiction, but no precedent from that board or from the federal court has been shown to us where a reference was ever made to ascertain a legal position after a trial of facts by the advisory court. We consider that there is nothing improper or peculiar about the manner in which the reference has been made. The Governor General has merely asked us to report to him what the legal position is if those facts are true. Mr. Itizaz Ehsan, you have placed us, or probably yourself, on the horns of a dilemma. You say that the Zulfikar Ali Bhutto case is bad law, should not be cited. And to support your contention, you reply upon the Maulvi Tamizuddin Khan case. It's a bit ironic. No, it's a bit ironic. This is unless you say this is good law. I am not relying on Maulvi Tamizuddin case. This is the Governor General's reference. वही डिसोल्यूशन की बात हो रही है डिसोल्यूशन की बात हो रही है पर मैं गवर्नर पॉइंट तो वही है नहीं सर पॉइंट बिल्कुल नहीं है वो क्यों ये तो मुनीर साहब की जजमेंट है हाँ तो वही भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन का सवाल है इसमें आपको दिखा देते हैं नहीं हम कॉर्नेलियस अगर जरा आप देख लीजिए ना ये आप हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं नहीं सर ये तो मैं आई एम नॉट नहीं देखते हैं आपकी बात शायद सही हो हम गलत हों क्या इस डिसोल्यूशन को तो यानी इसमें ये बात शायद रजा रब्बानी साहब अगर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं भी we have to take the facts as they have been sent by the president as admitted facts. So we can't question the facts narrated in the reference itself. मैं अगर आपसे ये राय पूछता हूँ या मशवरा लेता हूँ which is related to a Toyota car तो आप उसको तो फैक्ट समझेंगे कि इसके पास 1986 मॉडल टोयोटा कार है जो चल रही है और उसके साथ ये बेचना चाहता है आप यू विल नॉट बी गिविंग मी एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू मेरा सिंपल सवाल है इस सारी चीज को एक सवाल में बना सकते हैं हम क्या ये सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा कि प्रेसिडेंट ये कहता है कि भुट्टो's ट्रायल ये जो जजमेंट है ये मिस ट्रायल बस सिर्फ यही सवाल पूछ लेते ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्योंकि फैक्ट्स वुड ऑल बी एक्सेप्टेड इसको डिटरमिन करने के लिए हमें वो सारा एविडेंस देखना पड़ता एज एन एपेलेट फोरम और फिर हम फैसला करते कि ये इन्होंने गलत डिसाइड किया तो ये तो एक्सरसाइज नहीं ना इसमें एनविजिज्ड नहीं इसमें इस वक्त इन्वेजिज नहीं है इस वक्त मैं बात कर रहे हैं आई एम ट्राइंग टू एंड आई विल अवॉइड ऑल getting into appreciation of evidence. My learned friend was and वो तो हमने कर लिया है बाहर ठीक है आप नए पॉइंट्स बताएं मैं बिल्कुल मैं आपसे I will not tread on that territory. Mr. Itizaz, if we can take a short break now or you want to finish soon we don't want to push you but we want that today you finish. Short break now पर अगर कल पे ही रख रहे हैं तो नहीं कल नहीं हो सकता है चलो आज ही होना है मैं हाजिर हूँ मैं not unless you're taking a few minutes we'll wait if you're going to take more than few minutes no I'm going to take more than that I'm going to take more so we'll take a short 10 मतलब हम घर बता दें ना कि आप इधर ही हैं आपके पास सर बता ही दे और बताइए कुछ बातें हैं अभी करने वाली आप घर बता रहे हैं या शाह साहब बता रहे हैं घर अपने घरों में मेरी बेगम तो मायूस ही रहती है इंतजार ही करती रहती है I will take 15 minutes we'll come back and take your time sir 20 minutes is सारा time 20 minutes
जी जी ये जी वन सजेशन सर हाँ आप पहले करना चाहते हैं सजेशन एक मेथड जी जी फरमाइए Since there is no formation of law point in the body of presidential reference, which is a requirement of Article 186 of the Constitution, hence it has to be returned back to the President to resubmit resubmit a fresh modified reference. ठीक You want to make your complete submissions now? No, अभी कर लें फिर अगर आप चाहते हैं मैं बात करूं नहीं ये तो फिर नहीं है ना मुनासिब अगर we have interruptions for which आप कर लें we will persuade एतजाज साहब to come later. You want to go ahead first? मेरा ख्याल जी नहीं देखिए वो उनका देखिए वो चेन ऑफ थॉट टूटती है ना लोगों की फिर life also, so I would not substitute. चलें फिर आइए चलें कंटिन्यू प्लीज जी सर वो जो था where they were changed from rightly to lawfully वो पेज 450 पे है of this federal court judgment PLD 1955 Federal Court, page 435, at page 450. और इसमें ठीक है ये इसमें जो ये पेज 450 पे ये इसका प्लेसिटम नहीं है ये मेन पैराग्राफ जो है इसके एंड पे है और अमेंड नहीं किया कैन ओनली मीन जी which is slightly different but they've addressed it in that manner. This position is recognized by the 19 subsection 4 of the section 10 of the Government of India Act 1935 which prohibits the court from inquiring into the question whether any and if so what advice is intended to got it thank you समझ रहे हैं to the question whether the Constituent Assembly was rightly dissolved by the Governor General can only mean lawfully or legally. So they've changed it virtually. They haven't sought the reference to be amended and to be returned with these. ये तो natural corollary थी ना उन्होंने कहा rightly का actually मतलब lawfully है वो ये कह रहे हैं फिर भी एक अल्फाज सब्स्टिट्यूट कर दिए trying to understand the question. सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दो ये जो 186 है इसमें एक दिलचस्प बात मुलाहिदा फरमाएंगे आप ये बड़ा होता रहता है ओपिनियन क्या है डिसीजन क्या है एडवाइस क्या है 186 जो इसमें ये हेडिंग है इसकी जो छोटी वो इज ऑन एडवाइजरी jurisdiction but the word advice is not in the main body of the article it is opinion so advice and opinion are virtually substitutable intercede अब सर इसमें jurisdiction की बात करें advisory jurisdiction है जी in which they'll seek an opinion जी मैं एक गुजारा 3 मिनट लूंगा लफ्ज एनी पे या 2 मिनट आई जस्ट रेफर टू सम जजमेंट आई विल देन on bias and public interest ये जो है इन पे मैं making if at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. ये मैं आता हूँ इसमें अभी Sir, the situation is that
any, as I said, any is really unlimited expanse and scope of the idea or the entity mentioned. अच्छा. Now, एक बड़ी दिलचस्प माइनॉरिटी जजमेंट है, but it's a very interesting or it's relevant time में ये जजमेंट है वो इंडिया बाबरी मस्जिद. ये जजमेंट, इस जजमेंट में माइनॉरिटी व्यू है, बट माइनॉरिटी जजमेंट में गलत है, आप चेक कीजिए जी. क्या साइटेशन है? ये साइटेशन है सर 1994 SCC 360. इसके साथ और भी होगा वॉल्यूम 1, 2. इसमें वॉल्यूम SCC के बाद AIR की भी है. मैं नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ SCC के बाद एक ब्रैकेट आती है. हाँ, दोनों तरफ ब्रैकेट आती है ऐसी. उसमें वॉल्यूम यहाँ आपने ये आपने लिखा है पैरा 151 पेज 441. जी सर. 1994 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस. ये वो है सुप्रीम कोर्ट केसेस वाले. सुप्रीम कोर्ट केसेस की रेफरेंस बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि उसमें वॉल्यूम भी होती है. 6 है जी. 6 जी सर. 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस. जी आप ठीक. 360 इस पे माइनॉरिटी ये है अबाउट द बाबरी मस्जिद. In 1994 the government authorized kind of research in where the foundation work, and the two judges who, this is Dr. Farooqi versus the Union of India, and the two judges, Justice Bharucha and Ahmadi, they at page 441, it's a delightful little thought. अगर आप इसको देखें, I'm not 441 पे एक ये they are justifying why and for what reason can the president pose a question. यहाँ ये कहते हैं thirdly कोट किया ना पेज 3 पे, सब कोट किया ना आपने ये पेज 3 पे अपने. जी सर मैंने कोट किया, उसको बीच में से सेंटेंसेस छोड़ के किया. Thirdly, there is the aspect of evidence in relation to the question referred. It is our suggestion that a court of law is not competent to decide such a question. It can be done by if expert evidence of the archaeological and historian is read and is tested in cross-examination. The principal protagonists of the two stands are not appearing in the reference. They will neither lead evidence nor cross-examine. The learned solicitor, government, ये मैं उससे चलता हूँ. The court being ill-equipped to manage and evaluate such material, it would have to appoint experts to do the field evaluation would go unchallenged. Apart from the inherent inadmissibility of rendering a judicial opinion on such evaluation, the opinion would be liable to the criticism of one or both sides that it is rendered without hearing them or their evidence. This would ordinarily be of no significance, for they have chosen to stay away. But this opinion is intended to create a public climate for negotiation. What a noble thought! To create a public climate for this jurisdiction could be used by the president. Tomorrow, if there are two factions fighting, I think the only recourse, and they don't tolerate each other. They're at each other's throat. Blood is flowing. Bullets are being fired. And this jurisdiction could be a key because unlike some, by and large, the body of the Pakistani nation accepts your decision. And but I thought मैं ये आपको दिलाऊंगा तो इतनी मुझे ये इस पे
but this opinion is intended to create a public climate for negotiation, and the criticism would find the public ear, to say nothing of the fact that it would impair the court's credibility. It would not impair the court's credibility, but now, so this, when you look at it from this purpose, it can, an issue can arise on which the president seeks advice from the court, and maybe 1/3 of the exercise required is to advert to facts. Your lordships, I would beseech, in that critical kind of a situation, would not hold back. Your lordships would say, we'll also decide the fact, and let us take this issue. It may be a sectarian issue, it may be, हमारे यहाँ तो काम यहाँ तक चला गया कि उसने हलवा की है लिखी भी है और सारे पीछे पड़ गए उसको, उस खातून के, और there is close to this lynch mob जो element आ गया है, इसमें I believe this court would have a role to play, an important role. When I Chief Justice इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब बहाल हुए तो उन्होंने मुझे उसी दिन बुला लिया. मैं लाहौर में था, लाहौर से वो आ रहा था लॉन्ग मार्च के साथ, वो मैं गुजरा वाले से पहले उन्होंने क्या बहाल हो गए. नवाज शरीफ साहब थे, मैं था, हम वापस चले गए. मुझे इनका फोन आया कि वापस आओ. मैं नेक्स्ट डे, एक दिन छोड़ के मैं गया, तो वी डिस्कस कि अब क्या कर. मैंने कहा चीफ साहब एक चीज आपको अर्ज करूं, and I was the only one until some other things happened. मैंने कहा इसमें आप एक काम करें, ये जो ऑडिटोरियम है सुप्रीम कोर्ट का, ये मुझे बड़ा एक ऐसा फोरम लगता है जहाँ एक थिंक टैंक बना के और आप हर फोर्टनाइटली मीटिंग करा दें, उसमें 2-3 ही जज सुप्रीम कोर्ट के बैठे होंगे, तो एवरीबडी विल बी, और उधर सुन्नी को भी बुलाएं, शिया को भी बुलाएं, वहाबी को भी बुलाएं, सब, और कोई इशू लेके उस पर डिबेट कराएं. और एक हम ये जो ऑडिटोरियम है इसमें डिसिप्लिन भी होगा, इसमें बड़ा कुछ रहेगा, और एक नई, तो ये काम तो पार्लियामेंट भी कर सकती है. जी सर, ये काम तो पार्लियामेंट कर सकती है इजीली. पार्लियामेंट भी कर सकती है, पर पार्लियामेंट के बारे में अगर मेरे जैसे 5-6 या 20 पार्लियामेंटेरियन भी बैठे होंगे तो हमें तो वैसे ही तकल्लुफ इतनी करते हैं MNAs और अपने पार्लियामेंटेरियन, आई बीन इन बोथ हाउसेस, कि वो कोई हमें सीरियसली नहीं लेंगे. आप में से 4 बैठे होंगे और इशू हो रहा होगा कि यहाँ हिंदू मंदिर को गिराया जा सकता है कि नहीं गिराया. It will, I tell you, it will change, and I hope. This was also presidential reference? This was also presidential. ये उसके बारे में बाबरी मस्जिद में. सर, इस पे मैं एनी का removes all restrictions. अब इसमें what did the Supreme Court say? It removed the friction or it contributed to the friction? बाद में तो it contributed to the friction. So? बाद में. But I have a different philosophy, since we are now in the realm of philosophy. जी सर. The venom which one usually sees expressed sometimes on the political divide is expressed most by those who till yesterday was in the other party. I don't know if that is so or not, because one has to continuously keep in focus which party it is. Acha, you there, now you're there, now you're there, now you're there. Does this happen in other countries of the world? I mean, that you virtually every day change your party? I mean, you know, people born in Labour, they usually die in Labour, Conservatives. I mean, unless there's a great dispute on a matter of principle,
यहाँ तो you don't know who's in which party. I mean, sorry, I don't know. Developing countries में तो बहुत होता है. नहीं मगर ये खासतौर से पाकिस्तान में खुद ज्यादा है. Developing democracy. Developing इसमें डेमोक्रेसी की क्या बात है? आप एक असूल पे हैं, एक पार्टी में रहें, फलें फूलें. नहीं काफी होता है इधर डेवलपिंग डेमोक्रेसीज में, इंडिया में. Are you holding brief or you are agreeing or what? I'm just asking ऐसे. ब्रीफ आपने नहीं मेरा मतलब कि क्या हम ये नजरियाती नफरतें बहुत बढ़ती हैं. ख्याल है इस बहस को रहने दें, वापस भी आ जाते हैं फिर दोबारा. कोई मसला नहीं, स्टार्ट करिए जी. तो ये तो आपने एनी के ऊपर केस लॉ भी दे दिया है पेज. जी सर. तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव ओवर? सर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ. ये इसमें जो bias है, that floats on the surface, and that floats on the surface. But that has been decided by the Supreme Court. That has been decided by it. But what I'm saying is, I'm not going into the questioning that decision as such, nor can your lordships in the ultimate analysis, because your lordships can only give an opinion, not a judgment, not a decision, just an opinion. And what I would try to do, is to look at this entire matter that is contained in PLG 1979 Supreme Court from the outside, like from the moon looking down at the earth, at the entire controversy, rather than digging in and trying to find what is wrong, what is malignant. I'm not going to do that. I am before two forums. One forum in the Lahore High Court, headed by Chief Justice Maulvi Mushtaq. One forum in the Supreme Court, headed by Chief Justice Anwarul Haq. And it is amazing the way I am treated. But I am also going to submit that besides, and what my Lord Chief Justice, आपने एक दो दफा इस तरफ इशारा किया है कि क्या अगर सारी एटमॉस्फेयर, सारी एनवायरनमेंट जिसमें ये केस सुना जा रहा है या कोई काम भी हो रहा है, वो सारी ही हॉस्टाइल है, तो उसका क्या, उसका असर नहीं होगा. मैं आपको अर्ज करूंगा कि ये सारी एनवायरनमेंट, and it was an institutional bias. There was an institutional bias against Mr. Bhutto and the Pakistan People's Party. I will show concrete evidence of that. I'm not making a. I know. उसमें शक नहीं होगा, हो सकता है ये ऐसा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा कह दिया कि बायस नहीं है. क्या रेफरेंस में हम बायस को दोबारा उठा सकते हैं? सर ओपिनियन दे सकते हैं आप. क्या अपनी ओपिनियन? प्रेसिडेंट साहब, हम तो ये ओपिनियन दे सकते, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, फॉलो करो. नहीं सर, तो हम ये कह सकते हैं. नहीं, आप अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसमें बायस था, तो फिर आपको पर ये फर्ज बनेगा कि बायस आप का उसका जिक्र करें. यानी आप ऐसे क्यों नहीं कहते? आप कहें कि जी ये जो अभी फ्रेश एविडेंस आई है, फ्रेश मटेरियल आया है, सॉरी फॉर द वर्ड, फ्रेश मटेरियल आया है, look at that material and not the grounds which were taken by the High Court or the Supreme Court. जी सर. And in that perspective, look at the case whether there was bias or not. सर ये तो एक है, ये तो मेरा सिल्वर बुलेट है. मैं तो चाहता नहीं, सिल्वर बुलेट पे मटेरियल तो बताएं कौन सा है. सर सिल्वर बुलेट एक दफा आप देख लें. जी दिखाएं ना. 6 में जो उस पे वीडियो पे है फारूक नायक साहब से, वो एक दफा देख तो लें. उसके हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेंगे जी. आप बताएं उसमें है क्या? सर ट्रांसक्रिप्ट से कोई उसमें मतलब असर नहीं करता. क्यों जी? क्या आप अगर उनने कुछ कहा होगा वो सामने आएगा, हम देख लेंगे. ये सर वो इट्स अ 4-3 जजमेंट. यस, 4-3 judgment. Had Justice Naseem Hasan Shah not gone on to the conviction side
and remained on the acquittal side, as is reported, and it is almost general knowledge, was until a few days before the... The only thing we could gather from that is that he may have been inclined towards life imprisonment. That's something there. But he nowhere says that I was inclined to acquit. I mean, we can see the video 100 times, but if he doesn't say it, he doesn't say it. What can we do? No, but even if it was to save life, but देखिए अब तो वो तो गई ना, लाइफ का इशू नहीं रहा. The more the अब तो issue है on the conviction part. I mean, that is an unfortunate fact. It is a fact. So we can't really do anything about it. If the person had not been hung, then yes, that would be very relevant. Look at their thing. So I don't know, maybe it's a, I mean, he's not saying that anywhere. वो कहते हैं हमने फैसला खिलाफ किया, खिलाफ इसलिए किया. मगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि फैसला मैंने गलत किया. और वो कह रहे हैं कि जी प्रेशर होता है, जजेस तब्दील हो जाते हैं. मगर देखें, अगर वो या बख्तियार साहब अगर बहस करते उस पे लेसर सेंटेंस पे, तो हम उसको देख सकते थे और ये बात हो सकती थी. मगर वो ये कहीं नहीं जाके कहते हैं कि मैंने जानबूझ के गलत फैसला कर दिया. उन्होंने ये कहा सर, उन्होंने कहा हमें गुस्सा दिला दिया. वो भी चले. अब सपोज आप देखिए ना, इसका ये मतलब नहीं मैंने फैसला किया. सपोज आपने खुदा ना खास्ता, ऐसी बात नहीं होगी, मगर मफरूजे के तौर पे आपने मुझे गुस्सा दिला दिया. इसमें ये मतलब तो नहीं हो कि मैं गलत ही फैसला कर रहा हूं. गलत फैसला, ये बुनियाद उन्होंने गुस्सा दिला दिया सिर्फ इस पॉइंट पे कि उनको हमने कहा मिटिगेशन पे बात करते तो कहते हमें एक्विटल चाहिए. इस बात पे कह रहे हैं, वो कन्विक्शन के बारे में नहीं, मिटिगेशन की बात. लेकिन वो इंक्लाइंड थे, प्रोबेबली लाइफ की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन वो गुस्से में आए और उन्होंने हाँ, तो मगर उससे चले, अगर हम ओपिनियन में क्या देंगे कि जजमेंट सही है, लाइफ होना चाहिए था. आई डोंट थिंक दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. उन्होंने अगर आप जरा ये सुन लेते मल्टीमीडिया पे, तो आप देखिए, सुनने की हर चीज तैयार है, रेलेवेंस बता देना उसकी, या बता दें ऐसी बात उन्होंने कही है. कहते हैं हमारा फैसला गलत है, सुनना चाहते हैं, हमने इस गुस्से की वजह से किया. आप ऐसा करें, आप हम देखते हैं, हम तैश में वो तो जफर आदमी उसे ना जानिए. देखिए नहीं, देखिए जहां तक उसकी बात है ना रिकॉर्डिंग की, वो तो हम अपने चेंबर में भी देख सकते हैं. मगर जहां तक आप नहीं हमारे साथ शेयर कीजिएगा, सुनिए ना, अगर जहां तक आपके दलाइल, खूबसूरत दलाइल हैं, वो हम चेंबर में नहीं सुन सकते. वो हमें आप के सामने आप हमें बताएंगे, हम सुनेंगे ना, वो तो हम देख लेंगे. चले, आप कहते हैं पढ़ लेना. 6 मिनट की फिल्म है जी, और मेरा ये आपसे बार बार इस्तदा करनी कि उसको सुनना, इसमें शायद आधा घंटा टोटल लग जाए. हमारा तजस्सुस बढ़ गया है कि हम उसको देखें. अपना प्लीज प्रोसीड विद योर सबमिशंस. अगर एक साहब आप ये जरा ज़हन में रख लें, सपोज एक मिनट के लिए आप इस बात को भूल जाए कि ही वाज एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स नहीं कहूँगी, ही वाज प्राइम मिनिस्टर. एक तरफ एक शख्स का ट्रायल चला, आप कहते हैं कि जी वो गलत था या बायस था, जो भी. तो अगर हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि यस वो गलत था, अगर आप, शायद मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा, 1992 तक वहाँ पे रेगुलर लॉ नहीं था, वो जरगा सिस्टम चलते थे, एसी, डिप्टी कमिश्नर MBR से होते हुए गलत फैसले होते थे. तो क्या सारे लोगों के फिर लोग आते रहेंगे, हम ये कहते रहेंगे वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत? नहीं सर, मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा यूनिक है. इसमें जो पब्लिक इंपॉर्टेंस पे मैं आऊंगा ना, तो आपको दिखाऊंगा कि इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है. आप चलें, लेट्स टर्न द टेबल्स अराउंड. अगर नसीम हसन शाह साहब इंटरव्यू ना देते हो, किताब नहीं लिखते, तो फैसला दुरुस्त नहीं. तो देखिए ना, आप अगर अपना सारे पुट योर एग्स इन दैट बास्केट, देन इट्स अ वेरी डेंजरस बास्केट टू बी इन. सर, तो अगर आपका सारा दौर-ओ-मदार उस पे है, और अगर वो हट गई, तो आप हमें उसका पढ़ देना ये है, फिर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देख लें ना बात को. Sir, as I think it was Justice Frankfurter, मुझे जो याद पड़ रहा, but this was said by the judge on finality versus correctness. Your lordships are final, not necessarily correct. But your lordships are correct because you are final.
वो सही है, वो लॉर्ड जस्टिस जैक्सन ने कहा था। अच्छा नहीं, मैं खाली आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये बिल्कुल वो नहीं है कि मिसकैरेज ठीक नहीं होना चाहिए। nobody could disagree with that and there is no such thing as final। जो गलत है गलत है, लेकिन हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं इस जुरिस्डिक्शन में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? सर मैं ये तो ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें एनी का लफ्ज आया है, जिसमें अब आपको प्रेसिडेंट साहब कुछ भी पूछ सकते हैं पॉइंट ऑफ लॉ। और पॉइंट ऑफ लॉ इसमें आप इसको इस तरह फॉर्मुलेट करेंगे आंसरिंग कि जी क्या ये जजमेंट दुरुस्त है कि नहीं। इट्स अ पॉइंट ऑफ लॉ। पूछ तो सकते हैं कि हम जवाब देने के पाबंद है, जवाब देने के पाबंद यही कह सकते कि नो कमेंट्स, ये कह सकते हैं। इंतजार साहब देखिए, मैंने पहले भी ये कहा, फिर आई एम एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, बट लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ ये हो सकता था कि हाई कोर्ट में ट्रायल हो सकता है कि नहीं, विदाउट कंफर्मेशन कन्विक्शन हो सकती है कि नहीं, और इस तरह के लीगल सवाल हो सकते थे ना। और सर लेकिन आपका अगर ये कहना कि जजमेंट ठीक है कि नहीं, ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन एक दफा क्लोज हो गई मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर, तो हाउ दैट वाज री इन्वेस्टिगेटेड विदाउट गेटिंग ए फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट? बिल्कुल, ये भी हो गया था। और so many questions that arise from this। पर ये सवाल अगर हम पूछें, अगर आप कहते हैं तो इनको उस तरह बना लें, आप ये सवाल हमसे पूछ लेते कि जी बताएं कि ये जो अभी आपसे पूछा कि ये इस तरह ट्रांसफर हो सकता है, हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता था नहीं कर सकता था, ये कंफर्मेशन, ये सवाल पूछते ना। ये सवाल जनरल सवाल है, हमने सिर्फ लॉ में देख के इसका जवाब देना था। आपका एक्चुअल सवाल ये है कि ये मिस ट्रायल हुआ है, तो हमें तो जाके सारा एविडेंस देखना पड़ेगा ना इस फैसले पे आने के। कानूनी तकाजे पूरी नहीं हुई जो उसके फंडामेंटल राइट था। जी उस वक्त उनको तमाम वो कानूनी रास्तों पे जाता है जो किसी और को अवेलेबल थे, और सबको अवेलेबल और मैं अभी आता हूँ इस पे। और ये 5 जजेस ने एकदम वहाँ पे जुरिस्डिक्शन एज्यूम की और जाके वो केस ट्रांसफर हो गया। और कैसे एफआईए को इन्वेस्टिगेशन कैसे ट्रांसफर हो गई? वो भी कोई ऑर्डर ही नहीं है रिकॉर्ड पे, और एफआईए ने जाके सब इंस्पेक्टर ने उधर से पकड़ लिया होगा फाइल। ये सारी बातें अगर आप भी जाए तो फिर हम क्या कहेंगे? मैं पहले जरा आपको एक माहौल बता दूं। नहीं, सारी बातें हम मान लेते हैं, जैसे मैडम ने कहा ये सारी बातें दुरुस्त है, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा? आपने एक ओपिनियन देनी है क्या कि ये खिलाफ कानून हुआ है, आपने कुछ और नहीं करना। आपको अपनी ताकत का नहीं है। मैं just one minute. Then if you want to finish on that thing, we'll see it. ठीक है, नहीं मैं उसके बाद उसमें तो आर्गुमेंट करनी है हमें। चला लेना नहीं, but don't देखिए, then we'll go by the text literal, ये नहीं कि he meant this or meant that. It may. Sir, you will hear me. Okay, लगा दे। I will be saying. यार रेलिवेंट बता देना, बहुत लंबा वाला ना। नाइक साहब उनसे पूछे कौन सा पॉइंट पे दिखा। नाइक साहब आप बताइएगा, उनसे पूछे ना, हमें क्या देखना। हम तो कुछ मूव नहीं कर सकते ना उसको। आप बता दें एग्जैक्टली कौन सा कितने मिनट की है जी? अब 1 घंटे का हम वीडियो नहीं देखेंगे। 6 मिनट। हाँ तो पूछते कौन सा वाला दिखाना है। 6 मिनट्स का उन्होंने बताया। क्लिप बता देना कौन सी क्लिप है। कोई नहीं पता है, जो गैर जरूरी उसको फॉरवर्ड करते जाए, वो फास्ट फॉरवर्ड होता जाएगा, उसको देख लेना। नहीं ये तो नहीं है, जल्दी जवाब दे। ये नहीं, आप हमारा टाइम नहीं जाया करें, उनको बोले एग्जैक्ट बताएं। 7 मिनट की एक क्लिप निकाली है, 6 मिनट की, और एक कोई 2 मिनट की है। ये तो वही जवाब दे आ गया ये। आवाज आवाज ये मेरे ख्याल में मेरे को हकीकत से मबनी है। लोगों का तो ख्याल है ना, जजेस को तलवारें चलानी चाहिए, इंडस्ट्री वालों को देश का कानून कर देना चाहिए, गलत किया है। मगर वो मिलिट्री वाले जजों को निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि लोग बिल्कुल करते नहीं, जब तक ये तो हम सुन चुके हैं, तो चल चुकी है, वही है ये। We heard this already. ये तो हम सुन चुके हैं भाई, वही बात क्यों लगा रहे हो जो हम सुन चुके हैं? वो या बख्तियार साहब वाला भी सुन चुके हैं। वो नहीं सुना। पहले ये तो सुना देना जो सुनाना पोर्शन आपने। नहीं वो यार आप हम
YouTube पे ये available. तो हम सुन चुके हैं ना सारा। चलिए आप आर्ग्यूमेंट्स तो करें ना जब तक वो फैसला कर लें। आप कंटिन्यू विद योर आर्ग्यूमेंट्स। I am not going shirking away from arguments. अब मैं ये बताना अर्ज करना चाह रहा बात करें प्लीज। सेकंड फांसी से 7 घंटे पहले आपने अपनी किताब में लिखा कि फांसी से 7 घंटे। Who's he now? ये कौन है? इतना सब एटलीस्ट भी हमें तो कुछ जरा सा हेल्प तो करे ना, कोई और आ गया बीच में। मैंने तो नहीं लगाया तो ये तो who is responsible? Can someone pick up their finger and say I'm responsible? I take So please tell us which one. We're not going to sit here and see 20 clips. ये है ना, रेलेवेंट है ना। कर्नल उनको पता ही नहीं क्या करना। हो गई। That we have seen. सर अब इसमें जो ये उस वक्त का टाइम है, and I want to establish 2 things. The discrimination and bias which was inherent and which straddled divides like class, like religion, sect, and they focused and discriminated against Zulfikar Ali Bhutto Shaheed has been written Shaheed in the reference, and his opponents, political or otherwise. And that distinguished and discriminated between the Pakistan People's Party and the rest. Again, I don't want to go into a political domain. It won't serve your case. ये तो आप अपना case demolish कर रहे हैं. Sir, मैं आपको दिखाता हूँ. अब for instance, even if we agree with you because of a particular climate, हम change कर देंगे. Sir, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी vicious environment थी. उसमें जितनी ये जो मेरा रिप्लाई है, इसमें मैंने आपको एक दिया है, इसमें आप मुलाजा फरमाएंगे कि मैंने ये इसका डिवाइडर के जरिए इनको डिवाइड किया गया, और मैंने इसमें जो ऑर्डर रिगार्डिंग द मार्शल ऑर्डर, the environment that came between 5th of July 1977 to April 1979 while the prisoner was held. उसमें ये आप देखेंगे, ये पेज 1 है of the 3rd divider, ये second divider. See, that's part of history, we know about it. Sir, but sadly or unfortunately, all these acts have been sanctified by constitutional amendments in the Constitution, which that House did, not us. So they have been sanctified. उनको आप छोड़ देना. We are not going into the political domain. We are going to the presidential reference. They have. I mean, we may agree with you, but it doesn't make any difference. Nothing has been sanctified. आप एक मेरे साथ ये judgment देखिए, PLJ लाहौर दिए. PLJ लाहौर पूरा citation साल तो होगा कोई 1980 इसमें ये हुआ 1980 PLJ लाहौर और पेज 166 जी क्या है सर मैं अर्ज करता हूँ आप जी which is third in the series towards achieving the same end, deferment of sentence of death. मैंने दी थी 2 ये है यार, ये है ये इत्तेफाक हुआ कि ये है गुलाम जिलानी वर्सेस PLJ 1980 Lahore, page 166. What had happened, and I will read a very painful part of this judgment. Painful part. In this case, what had happened, on the 6th of February 1979, Mr. Bhutto's appeal was dismissed by this honorable court.
I was in England and Malik Ghulam Jilani. अब बताए ना कौन सा पार्ट पढ़े? मैं अभी पर सर एक मिनट में आप मुझे क्योंकि आपको इसकी हैयत समझ आएगी. He said कि we have to go. I am going back and you come with me. और भुट्टो साहब की उसी दिन अपील डिसमिस हुई थी. And he had word from Begum Nusrat Bhutto Sahaba to come and file some petitions. तो मुझे कहने लगा चलो मैं भी आई. I came with him. On the way he said क्या किया जा सकता है. मैं कहा 2 challenges I can possibly after the sentencing, after he has been the appeal has been dismissed. Sorry to interrupt you, but again, your personal reminiscence will not help this with this case. Sir, it's I'm sorry, but we are running against a clock. We want to finish this matter. अगर आप मुझे मौका देंगे तो टाइम थोड़ा लगेगा. देने में अगर आप ये तो ना बताएं मैं उन्हें लंदन में मिला ये हुआ. टाइम थोड़ा लगेगा. ये आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है. So मैंने कहा 2 है. एक ये है. जी सर जजमेंट बताए ना कौन सा पढ़े हैं. ये जजमेंट आपको बताई है ना सर. आप मुझे अगर आप मुझे बोलने दें तो टाइम आधा लगेगा. अब इसमें मैंने कहा क्या मैंने कहा एक कि ही हैज बीन कन्विक्टेड. We can't get that set aside except in review, but we could get 2 reasons. एक के 12 फरवरी से 10 फरवरी से ज़ियाउल हक ने ऑर्डर कर दिया था कि यहाँ इस्लाम चलेगा एंड इट कंट्री विल बी रन अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू द शरिया और ऑल लॉज विल बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू दैट. एक ब्लैंकेट. अब उसमें हमने कहा कि हाँ मलिक साहब ने कहा कि मैं ऑफर करता हूँ दयत ऑन बिहाफ ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो. And he came and he made an offer that whatever the relatives his what's the relevance all this? सर मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा इस पे. देखिए sorry we will not now be kept captured and say I'll take forever to decide. Please come to the point. I am coming to the point. If you ये देखेंगे ये जो इतने 1 मिनट आप बाहर तकरीर करते हैं कि मैं 30 सेकंड में लूंगा और देखिए ये फिर एटलीस्ट भी कंसिस्टेंट. अगर आप सुनने देंगे तो बिल्कुल 30 मिनट भी लग जाएंगे. कम 30 सेकंड से डायरेक्ट आ जाए जजमेंट पे. अच्छा जी जजमेंट. अब इसमें हमने ये बजाय ये पैराग्राफ 3 पढ़ने के मैं आपको बता रहा हूं कि ये है उसमें. अब इसमें आपने पहले 2 पैराग्राफ सेंटेंसेस पढ़ने में सारा जुमला नहीं पढ़ रहा. ये para 2, he has also moved the detaining authorities, namely Superintendent Jail and the control by the Home Secretary and Chief Secretary Punjab, calling upon them that execution of sentence of death cannot take place unless the mercy petition is disposed of as required under subparagraph 2 of etc. of the prison. The reliefs also sought by the petitioner, मैं छोड़ता हूँ relief basically ये थी कि he should be. Are you saying that Mr. Zulfikar Ali Bhutto submitted a mercy petition? No. Why what's the relevant of this? His friend submitted and under the rules the friend can rules मैंने quote किए. अब उसमें मैं जाऊंगा तो लंबा करूंगा. मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें. अब जुल्फिकार अली भुट्टो के एक दोस्त गुलाम जिलानी ने ये फाइल की और मैंने ये रिट कर दी उसी दिन कि इस पिटीशन पे एक शख्स है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक वो ना फैसला करे because he is not the president of Pakistan. He's usurped this office. मर्सी पिटीशन तो दायर ही नहीं की गई ना. कहाँ दायर की गई है? और ये दायर की गई वो पिटीशन दी गई. तय हुई ना आपस में लेकिन दायर तो नहीं की गई. भेजी रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू फाइल कर दी थी ना ये. रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजी. मैं जो कह रहा हूँ भेजी इसमें है दिया हुआ है कि वो बात. पर मुझे अगर सारे पढ़ने पड़े फैक्ट तो देर हो जाएगी. कहते हैं तो मैं सारी जजमेंट पढ़ देता हूँ. आप कह रहे कि वो हमने कहा जी ये ज़ियाउल हक का फैसला करे जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट आएगा वो फैसला करे कि दिस इज प्रीरोगेटिव. got the power. We got the point. सर आप इसमें ये देखिए पैरा 4 में
The sum and substance of the arguments of the learned counsel for the petitioner is that though ordinarily the mercy or pardon power is prerogative of the Crown, in our state of affairs with a written constitution and Article 45 of the Constitution, and in a different context under the statutory provisions of the provincial government through the President, etc., the power is exercised. The execution of the sentence should the superintendent jail and other superior authorities concerned with the detention of the convict not to carry out the sentence till the de jure president takes over the authority. अब मैं paragraph छोड़ता हूँ, paragraph 7 पे आता हूँ. Which provision of the Constitution deals with mercy petitions? 45. Article 40. Article 45 अभी भी वही है. The learned counsel has very ably assisted me in understanding not only the problem which required consideration and decision, but also the peripheral area of adjudication concerning exercise of the public power, particularly the pardon power. At this stage, while I am dismissing the petition in limine, I do not want to go into the greater detail than is absolutely necessary. The first circumstance which stands in the way of the petitioner, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक paragraph पे आना I'll tell you what you're doing, Mr. Etizaz Ahsan. Now, be clear in your mind what you want to do. The minute you invoke the power of pardon, you admit guilt. Sir, if you want to go that road, please be clear in your mind. No, ऐसे ना करें ना. How? देखें एक चीज. Wait a minute. ना. I am asking for pardon for myself. If I've not done any wrong, surely not. The pardon implies guilt. Mr. Bhutto did not endorse this. तो फिर आप ये क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये अब देख तो लेके एक जज का वहन क्या था, ये मैं दिखाना चाहता हूँ. इस जज का तो ताल्लुक ही नहीं. Please let me go through this judgment and then ये सर इसमें मैं कहाँ था? अगर आप प्रिंसिपल बता दें क्या है, फिर मैं भी अप्रिशिएट विद यू. मैं आता हूँ. मैं रुकवा रहा हूँ. मैं एक्सिक्यूशन रुकवा रहा हूँ. जज साहब क्या लिखते हैं, मैं उसी पे आ जाता हूँ. पैरा 10 डायरेक्ट उस पे आ जाता हूँ. मैं एक्सिक्यूशन रुकवा रहा हूँ. और पैरा 10 क्या कहते हैं जज साहब? कहते हैं another point. और मुझे क्या बड़ा एबली another point which has been engaging my utmost attention is not so much in the domain of legality as of equity. It is that what the petitioner is seeking is not to perpetuate, maybe indefinitely, the agony of the convict by keeping in abeyance the exercise of mercy power, for one does not know, nor has it been made clear as to when a de jure president of his liking is to come into office. Kill him. Yes. This was the mindset. इससे आप इससे क्या पॉइंट क्या बनता है? मैं कह रहा हूँ एक ओवरऑल माइंडसेट था. There with institutional bias. There is a category. I am reinforcing that category of institutional bias. In this court, in another building in Rawalpindi and in the Lahore High Court, there was institutional bias. It didn't have to be. But that would apply to that period. You see, so all the decisions in that period would suffer due to that institution. If they were contrary, all the decisions, or overwhelming part of those decisions were against somebody. ये कहना थोड़ा मुनासिब इसलिए नहीं होगा because there were judges who went the other way. So saying it was institutional bias, I think that will not go. It would have been unanimous. क्योंकि देखिए अगर unanimous होता ना तो हम आपकी बात ठीक थी. यहाँ there was 4-3, so there were judges at that time who stood up and said no. वो तो decision था. तो ये कहना कि institutional ये थोड़ा मुनासिब नहीं होगा. ट्रायल कोर्ट में तो 2 जजेस ने बेल भी दे दी थी. जी ट्रायल कोर्ट में तो 2 जजेस ने बेल भी दे दी थी. 2 जजेस ने उनके साथ क्या हुआ? जो भी हुआ. लेकिन देखिए you cannot blame the entire institution. You can't do that. Are you arguing that the judgment is correct?
Because these submissions, probably Mr. Kasuri will be saying what you are saying. So how am I arguing that judgment is That's the impression you're going mercy petition. Mercy will come in when you confess, you admit to guilt. On behalf, mercy petition was not endorsed by the prisoner. It was made by a friend. And he had We've understood your point that there was an institutional bias. चल आगे चलते हैं. Institutional bias. अब इसमें मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. ये जरा मुझे तो 1993 सुप्रीम कोर्ट. देखिए हम बिल्कुल प्रेसिडेंट ने इंस्टीट्यूशनल बायस की बात नहीं की है, हम वहां नहीं जा रहे. आप अभी इतना खोलेंगे इस केस को, क्या आप चाहते हैं कि हम फैसला ही कभी ना कर पाए? सर मैं how much are we expected to read? We are human beings. Please give us a little bit of time. I have given you already my undertaking that I will finish today. When we are finished. Whenever you want to finish. I want to finish. I won't go on to tomorrow. Otherwise, I would like to do it tomorrow. खत्म करें ना, आप नया पॉइंट बताएं कोई. I would like to go. ये नया पॉइंट दिया है सर. ये I am not going to step on Malik Manzoor's area that he is very ably competent. नेक्स्ट पॉइंट बता दें क्या. ये सर अब 1993 the National Assembly is dissolved. ये सर PLD 1993 Supreme Court page 473 Mian Mohammad Nawaz Sharif versus the Federation. Again, I put my foot down. I will not read this judgment. We are talking of the events of 1974. Sorry, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें मैं जो मर्जी में कहूँगा. No, you are a friend of the court. We have treated you with respect. You cannot go. We are going back in time, seeing how things were done. Now we are coming to 93. Sir, 90. Sorry, this is not on. There is a principle. We'll adjourn. Learned Counsel, thank you, but we don't want to hear more. Please stay focused on the presidential reference. Let's do. देखिए, as far as institutional bias आपने कह दिया. Let's move on to the next आपका ground. मैं एक और एग्जांपल देने लगा. मैं किताब को रिफर नहीं करता, मैं एग्जांपल दे देता हूँ. आप देख लें. There are people sitting on the bench who. Mr. Raza Rabani, will you come to our aid? Research and. Mr. Raza Rabani, please come to our aid. Please tell us how this. आप आ जाइए ना, Rabani साहब. Are you supporting Mr. Tezaz's contention or not? I'm supporting. No, he is the. Let him answer. जी बताएं जी. It's very difficult for me to. No, it is difficult because it's also difficult for us. We want to know. I can't understand. Are you supporting the fact that mercy petition was submitted? No. So how is it relevant to us? That was submitted. Sir, I mean, it was submitted before a single judge. I would not like to sit in judgment on his arguments, but here we are sitting on the. We've been asked to give our opinion on a judgment of this court. My lord. So you have to make your submissions if he asks. My lord, I will be making my submissions, but I would rather refrain from commenting on the submissions being made by Mr. नहीं हम आपसे नहीं कहते, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर फर्ज करिए कि आप खुद पार्डन मांग भी रहे हैं और आप कहते हैं हम दियत की अमाउंट ले लेकिन के पीछे घूम रहे हैं, इसका एडमिशन नहीं होगा कि आपने कराया है. जी. फिर क्या होगा इसका मतलब? ये तो फिर बिल्कुल आप दूसरी तरफ जा रहे हैं ना. ये तो आप डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं. ये पिटिशन किसकी तरफ से थी बैरिस्टर साहब? ये मलिक गुलाम जिलानी. ये भुट्टो साहब की तरफ से नहीं थी ना, उनसे कंसल्ट किया गया. आपको उनके अब इतना ही ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट थी कि ये पैराग्राफ की वजह से मेरे पास रात को पहुंच गया. मैंने वो ले ली उसकी कॉपी मुसद का उसी दिन. आप कह रहे हैं उनकी कंसेंट के बगैर फाइल हुई थी, तो पिटिशनर के वकील तो आप ही थे ना एतजाज साहब इसके अंदर. पिटिशनर मलिक गुलाम जी. जी. तो वो कैसे फाइल कर सकते हैं अपनी तरफ से मर्सी पिटिशन विदाउट कंसेंट ऑफ दी. उसमें प्रेजेंट रूल्स में लिखा हुआ है फ्रेंड कैन फाइल, और इसमें भी ये इन्होंने. Mr. Bhutto didn't file the petition. Mr. Bhutto did not file. फ्रेंड का ये मतलब है कि वो उनके बिहाफ
behalf पे करें, अपने behalf पे तो नहीं करेंगे ना? सर उनके behalf पे नहीं, he did it on his own behalf as a friend. They were friends. Mr. Bhutto used to stay with him in Lahore. Are we entitled to say, please don't argue this? नहीं सर. No, do you entitled give us this? नहीं देखिए अब देखिए it's 6 o'clock in the evening. Sir, you are trying. नहीं, we are stopping you on this. You are trying to paint me in a corner by inferring that something that was not done on behalf of Mr. Bhutto was done in the best of intentions by a late friend of his. And वो अब आप उसमें से ये निकाल के. हम तो नहीं निकाल रहे, आप निकाल रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं. आगे चले, ये नोट. मैं आगे चलने को मुझे आप बस इस खत्म कर ले आगे. Let's move to a point other than institutional bias. कोई और, let's go to the next one. 93 में आप क्या पॉइंट बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट? अब मैं वो कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बायस का जिक्र ना करूं. ये तो सारे इंस्टीट्यूशनल बाइस्ड पे ही सारा कुछ है. हमें नहीं पता कि उससे हम किस तरह निकलेंगे. चलिए नोट हो गया, हम ये जजमेंट भी पढ़ लेंगे, मैं पढ़ लूंगा. अब आगे चले. इसमें मैं अर्ज कर देता हूँ. जी जी, इसको मैं खोलता नहीं हूँ किताबों में. 1993 में असेंबली डिसॉल्व और उसमें एक चार्ज था ऑन करप्शन. नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे. करप्शन का जो चार्ज था उस चार्ज पे ये कहा गया जजमेंट में, जब रिस्टोर कर दी 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी असेंबली, और ये कहा गया कि करप्शन के अनप्रूवन एलिगेशन अखबारों में निकली हुई है, कॉलम आए हुए हैं, वो लगाए हुए हैं सारे. दीज आर नॉट सफिशिएंट टू डिसॉल्व एन असेंबली. और उनकी अगर चार्जशीट देखें जो जिस पे डिसॉल्व किया है, वो तकरीबन वही है जो फारूक लगारी साहब ने इस्तेमाल की, जो गुलाम इसाक साहब ने. वो प्रूफ नहीं हुआ. चले अब एक में असेंबली रिवाइव हो गई. हमने जब I don't know what, this is not a dissolution case, Tazasa. Please make your point. I don't like stopping you, but I'm forced to do so. Sir, otherwise we should just hear you and nobody else. There are others also waiting. इसका relevance क्या है? Please carry on with this point of line of arguments. Please, I want to hear आप आखिर में कहना क्या चाहते हैं. 93 के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? असेंबली बहाल हुई तो उसके बाद सर मैं आगे चलता हूँ. अच्छा, ये अगर वॉल्यूम देखें जो मैंने दिए है हमारे सामने, ये पेज 13 पे अगर इसके आ जाए, ये पेज 12 पे, नीचे बायस एंड डिनायल ऑफ ड्यू प्रोसेस. आप इसमें देखेंगे कि मैंने ये फैक्ट्स ऑफ डिनायल एंड डिनायल ऑफ राइट्स दैट आर प्रूवन ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड कैनॉट बी डिस्प्यूटेड इंटर एलिया, ये वो दिए हैं. ये लिस्ट है पूरी बहुत सौ की, और आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर वो हैं जो कि मलिक साहब ने भी जिन पे रिलाई किया है, और वो वॉल्यूम 10 पेज 72, और कुछ मेरे उनके ज़्यादा हैं, कुछ मेरे ज़्यादा हैं. तो ये आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. उन्होंने अब प्रेजुडिस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने दिए हैं. ये denying him the 4 valuable rights, ये AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 1531, इसमें आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी पे 14, 19 ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, 21 ऑन लाइफ एंड पर्सनल सिक्योरिटी, ये इनको डील किया है.
प्रेजुडिस, ये अब आप सिर्फ ये देखें कि ये जो मेरे पेजेस है, पेज 14 पे हूँ मैं, ये प्रेजुडिस का लफ्ज आप फॉलो करें, मैं इससे ज्यादा नहीं जाता। ये प्रेजुडिस एंड बायस अपेरेंट फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये आप देख लीजिएगा अगर आपने मुनासिब समझा। ये प्रेजुडिस कॉज्ड बाय विड्रॉल ऑफ द केस फ्रॉम सिंगल जज, ये मलिक साहब ने भी कवर किए, बट आई एम नॉट, मैं सिर्फ prejudice caused by entertaining the objection to jurisdiction, not to entertain the court proceeding. Bias apparent from changing court timings in jail. Prejudice caused by supplying several documents, not supplying several documents. वो page number ये मलिक साहब के भी था. Prejudice caused by disallowing application for producing defense witness. Then bias, institutional bias. इस institutional bias को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें मैंने और कुछ लिखा हुआ है, था मेरी ये argument, और लेकिन अब आप उससे मुझे नहीं दे सकते। बहुत कुर्बानियां भी दी हैं उसमें, इसलिए हम बात करते हैं। शुक्रिया मोहतरमा। अच्छा, ये ऑल इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सबमिटेड ड्यूरिंग द ट्रायल डिसमिस्ड इन लिमनी, ये मैंने उनकी लिमनी में जो पेज नंबर्स हैं कि ये इन लिमनी डिसमिसल का एक सबऑर्डिनेट जज को कोई ये इख्तियार नहीं है कि वो बगैर नोटिस दिए दूसरी पार्टी को मेरी डिसमिस कर दे पिटीशन, और बीसियों इस तरह उन्होंने डिसमिस किए और वो हाई कोर्ट के जज बन के बैठ गए कि जी डिसमिसल इन लिमिटिंग। बायस ऑन दिस रिकॉर्ड मैंने वही पेजेस जो है उसके सेपरेट एंड कम्बरसम ट्रायल प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर शहीद भुट्टो वाज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। अच्छा फिर सर, इफ केसेस ऑन इंस्टीट्यूशनल बायस, ये मैंने इंडियन केसेस भी आपको दिए हैं और एक टर्किश केस भी है, कैनेडियन भी था। अच्छा, इफेक्ट ऑफ बायस, आई एम गोइंग थ्रू रीडिंग, इसमें केसेस ऑफ मोहम्मद अब्दुल्ला, फुनकर मुश्ताक, मोहम्मद इस्माइल चौधरी, खैर दी खान, आफ्ताब शहबान मेरानी, खैर दी खान अगेन, 1989 मोहम्मद अकरम शेख, आसिफ सरदारी, साउथ अफ्रीकन कोर्ट ऑफ अपील, इसका, and then the Supreme Court's judgment itself admits violation yet does not extend benefit to Shahid Bhutto. The judgment intrinsically itself admits, so many please read para 915 at page 387 of PLD 1979. ये पढ़े ना, ये रेलिवेंट है, 915 पेज पैरा 915। कोई रेलेवेंट नजर आ गया सर आपको? नहीं, ये आपने लिखा है ना, ये अभी आप आए रहे हैं, ये तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट लग रहा है। इसी पे तो आपको ला रहे थे कि आप आ जाए रेलेवेंट पे। जी 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 सर, रेलेवेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट। अच्छा, थैंक यू सर। 915 पढ़ लेते हैं आपने, ये प्यारा 915 in the light। जी सर, let's read it, page 387। page 387। In the light of the declared law, your final conclusion as to bias. In the light of the declared law and the facts discussed above, I have reached the conclusion that although some of the orders made by the trial bench in the day-to-day conduct of the case may not have been correct on a strict view of the law, and some others may not have been fully called for in the facts and circumstances of the case, yet these were all matters within the discretion of the court, and mere error therein cannot amount to proof of bias. I wish he had identified. ये तो generally हर चीज को whitewash कर दिया. The appellant was unfortunately misled into thinking from the very start of the case that the learned acting Chief Justice
was biased against him. There was in fact no factual basis for in respect of any of the other 4 learned judges constituting the bench in accordance with law and the conclusions reached by the High Court on the merits of the case have been found to be correct and detailed contentions that the trial was in any manner vitiated by reason of bias on the part of... जी sir, you skipped some portion. The trial of the appellant has by and large been conducted substantially in accordance with law. I don't know what this means, by and large. By and large is a vague term. इसकी जगह बताते कौन सी एप्लीकेशन को ये अप्लाई कर रहा है. ये तो वेगनेस से ही it suffers from. By and large. I've never come across such phraseology before. ये जो दरखास्तें आपके लिमनीज में खारिज हुई आपने कहा नोटिस नहीं दिया गया. खारिज करने के लिए नोटिस लाजमी है. अगर अलाउ करना हो तो फिर दूसरी पार्टी को नोटिस करना लाजमी है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेदर वो जो दरखास्तें खारिज हुई उसको कभी आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया? वेदर जो इम्पोर्टेंट अगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो एप्लीकेशन जिनके ऊपर फैसला आपको चाहिए था तो उसको चैलेंज किया गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? जी कुछ को चंद को किया गया. मसलन बेंच की और बायस का मसला वो रिपोर्टेड जजमेंट है वो हम लेके गए ऊपर. और आप कहते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन जो खारिज होगी विदाउट नोटिस. सर वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं. मैं क्या कह रहा हूँ खुद एडमिट कर रहे हैं कि बहुत सारी बायस की एप्लीकेशन जब खारिज हुई फिर सुप्रीम कोर्ट गए वहाँ क्या हुआ? ये सर वो ये ट्रांसफर ऑफ केस की एप्लीकेशन दी गई. दिस इज 1977 SCMR page 514. Can you repeat the citation again? My lord, 1977 SCMR. Yes. 514. अगर हम उस जजमेंट को कहते हैं कि वो वाली बायस थी लेकिन ये जजमेंट चैलेंज नहीं, इस रेफरेंस में इस जजमेंट का जिक्र नहीं है तो बायस को तो इसमें भी कंफर्म कर दिया गया कि बायस नहीं है. ये ट्रांसफर की थी इस पे ग्राउंड तो वही थे ना बायसनेस के ग्राउंड. ये It's a very short order, चाहिए. बस खत्म हो जाएगा. अच्छा ठीक है. इस जजमेंट के बारे में रेफरेंस कुछ नहीं पूछता. नहीं सर. रोजा इसमें 8 जजेस बैठे हैं. मेन केस में 9 थे. इस केस बायस वाले में और ये यूनानिमस हुआ था. ये यूनानिमस ही था. ये पिटीशन देखे ना ये उनने ट्रांसफर वाली ये डिसमिस हो गई ना. जी सर ट्रांसफर वाली. अब बात आप ये देखें ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 were the judges sat. जी सर. ये ट्रांसफर की थी मेनली. उन्होंने उस पर डिस्कस किया. The Supreme Court took evidence also. जी सर. Supreme Court took evidence also. एविडेंस नहीं सर. ये क्या लिखा है पेज 387 पे? We called for a report from Abdul Khalik as to the authenticity of this letter. Which? It covers like 6 paragraphs of some Abdul Khalik's letter. 837 para 1915. We further directed that the relevant file of appointment of Riaz Ahmed in the FIA should also be made available. ये क्या हो रहा था यहाँ? मतलब what was the nature of these proceedings? Paragraph 916, 917, page 387. Abdul Khalik has filed his reply.
ट्रांसफर के लिए गया Citations 5 and 4. ये तो अपील चल रही है, ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो। ये तो अपील बताएं, असिस्ट अस ऑन दिस ना। अपील चल रही है। अब्दुल खालिक के ये 6-7 पैराग्राफ हैं। जी। द सुप्रीम कोर्ट इज डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन विद द सम अब्दुल खालिक। This related to influence on the No, I just want to confessing understand, in an appeal, we don't hear evidence, we don't see letters, we don't do anything, we just go by the record of the trial court or the high court. We are now, ये क्या हो रहा है अब्दुल खालिक के साथ? जी। इससे तो डिटेल्स इसने दी हैं कब accused arrest I know. Do you know anything about it or you don't know? No, from here it's But then we'll ask someone else. But it appears that the Supreme Court is now undertaking some original work, in the original jurisdiction. हर किस्म की jurisdiction ले ली थी इस केस ये कोई हमें, क्योंकि मैंने ये पूरा तो जजमेंट पढ़ना। अच्छा सर, ये कॉबरी वाटर वाला मलिक साहब ने कुछ पता है डिस्कस कर वानी साहब? You know anything about these paragraphs 316 onwards about Abdul Khalik? Have you read this judgment, Supreme Court judgment? Yes, my lord, I have read the judgment. इसमें they're writing to Abdul Khalik, the Supreme Court, in an appellate jurisdiction. Do you know anything about it? आप जरा देख लीजिए इसको आराम से. We'll continue hearing it, साहब. इनको किताब दे दीजिए अगर है आपके पास. I have the book, my lord. अच्छा. अब इसमें बाद में आएगा एक ले आओ निशानी इस पे बाद में आओ जी सर। इसमें ये अच्छा, इसमें गार्बन आपको कहा गया कि आप जाके ये पॉइंट जो है ट्रांसफर वाला वहां पे एजिटेट करें बिफोर द ट्रायल कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट। जी सर। फिर आपने वहां पे दोबारा वो दरखास्त वो दी वहां पे और वो खारिज हुई। दैट ऑर्डर वाज नॉट चैलेंज। वो जो हमने पढ़ा था, मंजूर मलिक साहब ने पढ़ा था, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ, जिस 22 पे भी था और ट्रांसफर पे भी था। वहां पे जाओ। अच्छा खैर, कासिफ को बुला। मेरे रूटीन में मेरे साथ जजमेंट हटा सकते, एक मुझे दे दिए कि जी सर। एनीथिंग मोर? ये पेज 37 पे the Supreme Court may overturn its own decision, and there are two types of overruling, where the principle of the state where the principle of state decided is not followed. Past judgments might be reconsidered, and the Supreme Court has overruled its decision in case where strict adherence would lead to injustice. But this is not a case overrule किया in the capacity of revision कैसे किया? उनको स्टैट्यूटरी को राइट था, क्या था? ओवररूलिंग तो होती रहती है, रोज करते रहते हैं हम लोग। नहीं, अपनी कोर्ट की अपनी नॉट ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा जी, इसमें the cases where decisions were overturned, and at page 18, 38. Next page. इसमें ये अंतुले का तो जो मेन जजमेंट यहाँ रिलाई किए हुए वो मलिक साहब है dealt with that. I will, 3 pages are devoted to Antule's case, and then
there is an analysis of the इसमें वो कैनेडियन केस आ गया आपने पेज 43 पे ये अपना inherent part to be used to revisit the earlier decision in advisory jurisdiction 43 पे आप इस पे emphasize कर रहे हैं जी सर आपने ये भी जी inherent part to use to revisit the earlier decision in advisory jurisdiction. This is Antula's case. मैं इसलिए छोड़ रहा था कि मलिक साहब ने उसको कर रहा था वो चीफ साहब फिर नाराज हो जाते हैं अगर ज्यादा वैसे मलिक साहब ने सबकी मुश्किलात कम कर दी उन्होंने काफी इतने बहस मलिक साहब ने इतना अच्छा आर्गू किया कि सबके जो आर्गुमेंट्स को कवर मलिक साहब के आर्गुमेंट्स हम कवर हो गए सारे कोई और आप यहाँ पे पॉइंट हमें बताना चाहते हैं अपने सबमिशन में सो दैट वी फोकस इसमें भी पब्लिक सेंटिमेंट का ये एक मेरी फाइल पे जो कागज है उन पे ये जुरिस्डिक्शन ऐसी है कि फाइनली डिसाइडेड केस को भी the Supreme Court has been persuaded in Canada by public sentiment to review that. This is the case of Regina versus Coffin. Coffin ही उस बच्चे का नाम है बनने का लड़के का बट ही किस पेज पे है ये सर पेज 23 पे Regina versus Coffin. आप देखना चाह रहे हैं जो करना चाह रहे हैं This was done in the advisory jurisdiction or this is advisory. यहाँ भी reference file हुआ है जी this is in this case a reference was filed by the Governor General. वो उनका लॉ है आपने लगाया है जो कनेडियन लॉ है जी वो पैरा दिखा ये पेज 7 पे आप भी इसको देखेंगे पेज 7 पे पेज 7 In this case, a reference was filed by the Governor General on the August 5th, 1954, following the trial at Percé, the province of Quebec, before Lacroix of Wilbert Coffin. आप अगर उनका प्रोविजन पढ़ लें कनेडियन लॉ का कि किस लॉ के नीचे हुआ जी सर ये सुप्रीम कोर्ट एक्ट of 1985 section 53 para 53(1). The Governor General in Council may refer to the court for hearing and consideration of important questions of law or fact concerning 1. The interpretation of the Constitution Acts, 2. The constitutionality or interpretation of any federal or provincial legislation, C. The appellant jurisdiction respecting educational matters by the Constitution Act 1867 or by any other act or law vested in the governor or in council. The powers of the Parliament of Canada or of the legislatures of the provinces or of the respective governments thereof, whether or not the particular power in question has been proposed to be exercised. We have a much wider. In this, it is more wide because they also talk about facts. They talk about law and fact. But we are wider in the number of subjects, numerical of subject, because it's any. It's any. Technically, the president can refer the issue of kite flying. People are rejoice kite flying and basant hoti thi aur khatam ho gayi Lahore mein, but then it becomes a deadly instrument also. So yes sir, back to page page 23. Also done.
ये Regina versus Coffin की the Supreme Court refused an appeal, but the matter was contested by the community, by the people. They insisted that Coffin was innocent. And there was some public sentiment, ये page 23 पे मैं पढ़ रहा हूँ. And the Governor General and Council referred the following question to the court. If the application made by Wilbert Coffin for leave to appeal to the Supreme Court of Canada had been granted on any of the grounds, and which was not granted, had been granted on any of the grounds alleged on the said application, what disposition of the appeal would now be made by the court? This is an interesting non-question. कि अगर ये होता तो फिर क्या होता? किया क्या कोर्ट ने? कोर्ट ने रिवाइज नहीं, कोर्ट ने उसको वैसे वही ऑर्डर आप हेड रखा, उसने वो ऑर्डर को आप हेड रखा टेक्निकलिटीज पे, जो टेक्निकली ऑन मेरिट उसको लिखा है upheld the conviction of Coffin and dismissed the appeal. ये तो पहले राउंड में, उसके बाद उसके बाद अपील के बाद ये पिटिशन हुई. पेज नंबर 7 पेज 7 ये उसके बाद ये पिटिशन हुई. नहीं वो होगी, एंड पे चले जाए ना, एंड पे क्या लिखा है? However, on merit that after thoroughly considering the evidence, material and argument, the Supreme Court. Page 8, so you have to tell them on page 8. Page 23. Page 8. यानी आप कहना चाहते हैं कि अगर डिसमिस भी कर ली लेकिन जुरिसडिक्शन की थी, डिसमिस करना या अलाउ करना दोनों सूरत? जी मैं ये करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है और इसमें ये आज की असरे हाजिर की इस वक्त की इस लम्हे की एक बहुत बड़ी इसमें जरूरत और चैलेंज है. और वो ये है कि जो इसमें मैं आ रहा था पब्लिक इंपॉर्टेंस पे, 186 ऑल्सो सेज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. अब पब्लिक इंपॉर्टेंस इससे भी हो सकती है कि एक इंडिविजुअल है, उसके साथ कुछ होने लगा, एंड ये रेफरेंस जो फाइल की है प्रेसिडेंट साहब ने, वो इसलिए फाइल की है कि एक इंडिविजुअल है ऐसे. अब वो इंडिविजुअल कैन बिकम अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. ये तो नहीं है कि मोटिव वुड बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. वी कांट डिनाई, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट ने किया है, वेदर इट इज वन मैन वेदर इट इज, हम उसे पब्लिक इंपॉर्टेंस को टच नहीं कर सकते. आपकी बात वहां हम आपके साथ हैं, उधर कोई देयर इज नो कैवल टू दैट. वी एग्री टू दैट. ठीक, मतलब है यू कुड टेक फ्रॉम पेज 5 some of the attributes about the public importance of the prisoner to this country. I think it should be, you should tell us कि भाई we should not touch the public importance. That's the prerogative of the president. आप हमें ये बोले. We'll go by your submission. I understand. चलिए. I understand. I hope my Chief Justice is as understanding of my position on the. I'm listening each word you are uttering. No, sir, on my position. When you are on track, I don't interrupt. When we are going into extraneous matters, because I also have to. We also have to write the order. Regulate the court. जी. जी, regulation कभी over regulation. Nobody likes that role. Sir, ये अपेंडिक्स 1 पे अगर आ जाए, कौन से पेज पे? ये पेज सेकंड, ये जो इस मार्कर के बाद शुरू होता है, रोमन 2. ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. अपेंडिक्स 1 ये मार्कर है ना जी बीच में, डिवाइडर. हाँ, इस 2 पे आ जाए. डिवाइडर उसका 2 पे आ गया, अपेंडिक्स नहीं 1 पे आ जाए. 1 के पेज
पीले कागज के अपेंडिक्स 1 पे आ गए सर 47 के बाद जी आपने ये वो सारी डेट्स दी हैं इसमें जी ये मैंने डेट्स दी हैं कि एक ये मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू देम क्योंकि ये मैंने लिखे हुए हैं आप पढ़ सकते हैं बट आई जस्ट गो ओवर द पेजेस ये इसमें क्योंकि जो सिग्निफिकेंस मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि द चेंज इन द लॉज that came about after the martial law was declared. The whole thing changed and became a complete contrast to the pre-martial law area. ये अगर आप पेज 4 पे इसको देखेंगे पेज 4 पे देख लीजिए सिर्फ हेडिंग पेज 4 पे ये now see Ahmed Raza Kasuri Saab's relations with Bhutto even afterward as he had admitted during the cross examination. अच्छा अब इसके आगे next page पे आ जाए but now the biggest contrast between ये दरमियान में between the investigation before 1977 and martial law इसमें फिर ये मैंने डायरीज के बदलने की ये बहुत सारा मलिक साहब ने कवर किया हुआ है पर हम भी ये मेहनत करके बैठे हुए थे आपके कुलीग ने जो आपके जूनियर ने बड़े अच्छा काम किया जी सिर्फ ये कि मलिक साहब आपसे पहले हो गए नहीं ये आपकी बात नो ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब आई थिंक ये आपने एग्जॉस्टिवली पूरे उनको डेट्स और वो कर दी जी सर ये आपको यहाँ इंडेक्स उसका सारा मिल जाएगा मैं अर्ज करूँगा फिर यहाँ से ये असल में पेज 7 पे जो शुरू होता है एंड दिस इज इलिस्ट्रेटिव फॉर योर लॉर्डशिप्स ऑल्सो very illustrative this list and this the post martial law investigation the real watershed now comes in martial law and the martial law is declared with the interim government set up military council and interim government बता दीजिए ये पेजेस भी दिए हुए स्टैट्यूट बुक है अपेंडिक्स 3 पे अच्छा इसमें मिलिट्री काउंसिल द जजेस गेट सक्ड इनटू द फेटल सेंट्रीपीटल फोर्स ऑफ मार्शल लॉ इनिशियली Chief Justices are inducted into the administration, martial law order, interim government, and they were made governors. Jurisdiction of superior courts curtailed by CMLA, force continuation force order, and CJ of high courts were made part of the as governors. Chief Justice is made part of the interim government. अब इसके बाद High Court's oath of order, High Court judges oath of office order, that came on the 7th of July 1977. और चूंकि पहले में ये नहीं आया था कि they will lose office if they relinquish office if they go don't take oath. Many of the judges continued without taking oath until 22nd of September 1977, when ye तीसरी entry है when it provides a judge who has not for any reason taken oath shall make oath as required within 24 hours, and a judge who fails to make oath shall cease to hold office in on expiration of this period. And 30 judges took oath. Then I think this is very exhaustive. How does this help? I did beg your pardon. Does this help? How this is no. When was the oath made mandatory? On the 30th of the 22nd of September. Which year? 1977. The problem 77. And when was the decision given? 4th of April 1979 by the Supreme Court. Problem sorry, 4th was the execution, sir. There were certain 6th of February 1979. There were certain judges who went the other way. तो वो उनने oath लिया हुआ था तो ये तो फिर थोड़ा problem हो जाएगा ना? 6th of date बता रहे थे वो आप? जी सर. 6th of February. 6th of February. 6th of February 1979 judgment आई थी, फिर review judgment आई थी 28th of March. But as my learned brother has said, that despite oath taking, there was a minority of three judges.
तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कहना थोड़ा सा So is that the determining factor? I don't think that But will, then they should have also convicted. अगर आप बायस में ये कर लें कि जो इश्यूज उठाए गए थे हाई कोर्ट में और डिसाइड किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर किए, उनके अलावा कोई और बायस के इश्यूज हैं, उनको आप लिख के हमें बता दें कि these were issues which were not taken by the courts in the high court or the supreme court, उनको आप देखें. मैं करता हूँ, अगर नहीं आप हमें बना के बाद में दे देना. मैंने आपको ये दे दिया, इसमें मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कहाँ वो है जो जरूरी है, वो मेरा जरा दे. क्योंकि ये जो जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिमांड किया था, इनमें उन्हें लिख दिए कि दीज वर द ग्राउंड्स जिनके ऊपर वो बायस क्लेम कर रहे, तो उनके अलावा अगर कोई और हो ना तो वो आप दिखा देंगे ना. सर जो सुप्रीम कोर्ट तक रहे और बाकी रहे, मेरे ख्याल में एक वो था जो कल मलिक साहब ने बताया कि जज ने कहा था कि आपकी बारी अभी नहीं, मेरी बारी अभी तक नहीं आई, वो बायस जिसके देखिए ना, ऐसे हम कह रहे हैं आप अभी डोंट टेक्स योरसेल्फ नाउ, आप हमें लिख के अगर ये दे दें कि जी ये बायस. मैं एक आध आपको सुनाना चाहूंगा, और वो बड़ा वो भी इनकाउंटर है जो चीफ जस्टिस साहब और उनके हुए हैं, और वो अगर आप Arbani sahab, why are you sitting so far away? Why are you sitting so far away? Till by the time he sees, I'll just ask a question you may want to consider. Ab zara aa jaye to the rostrum. We read Mr. Masood Mahmood's statement. A number of places, now we're dealing with criminal law. A number of places he says, take care of him, take care of him. And it is, does it mean to kill somebody? Does it, no, I just leave you with a question, since probably you won't have time today. Does he actually use the word kill, murder, take care of him? I mean, we are in a court of law now. This may be language used somewhere else or on a phone just to not to convey the message so that the person can understand without there being clarity. And even if you're caught, you could say, oh, I just told him to take care of me, he's coming from the airport, whatever. So please see this aspect. And then Mr. Mia Masood has been mentioning a number of individuals, Welsh, M.R. Welsh, Bajwa, Waqar. Were they produced as witnesses? If you can just examine this aspect as well. And does he actually use the word murder, terminate, or something very clear which has not ambiguous? I mean, you take care of him. I mean, you're a senior, you go into the tea room and someone will say, take care of Raza Rabbani Sahib, he's a senior counsel. So we have to be very clear in law on what it means. If you start using these vague terms in common parlance would be different. If you can just read these aspects and all the names that he mentions, that I told him this and he told me, Waqar pressurized me and I told this person, who all of them came as witnesses. Thank you. Please continue, ये जो बयान है ना, वो जो अप्रूवल वाला बयान है जो मजिस्ट्रेट ने लिखा था वो पढ़ा है साहब ने, वो आइडेंटिकल है मोरल है साहब, देख लीजिएगा उस पर ये देख लीजिएगा, ये वर्ड क्योंकि दोनों बयानों में देख लीजिएगा एक उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या क्या है. 164 का और एक वो है, आपको कॉपी मिल गई? तीसरा अदालत वाला मिल गया सर. ये पेज इसके 17 पे आइएगा वो मेन वाले नोट जो फर्स्ट अपेंडिक्स
यही वही है ना जिसमें मेन नोट जो है ये है अच्छा ये मैंने ये पेज 16 पे अगर आए कोई नहीं ये इसमें मैंने जो एप्लीकेशन वगैरह दी हैं जो एविडेंस का हिस्सा नहीं है वो आपको इल्म है वो एक जो चिट्ठा होता है साथ उसका हिस्सा है विच इज द ऑर्डर शीट जी 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 आई एम नॉट गोइंग इनटू द एविडेंस बट ये manner in which page 16 पे tag number 16 of tag ये जो पहला सेक्शन है उसका पेज 17 पे दिए हुए मैं आई एम जस्ट गोइंग टू पॉइंट आउट बिकॉज मलिक साहब ने उनमें से आधी से ज़्यादा उन्होंने भी आइडेंटिफाई की हुई हैं the petitions and the orders that were passed, which were very this goes to win. demeaning, and I think आपकी बात it will be appropriate अगर हम concise हमें बता देना इसीलिए मैं I'm repeating myself कि आप ये जो बायस वाले हैं हमें आप तैयार करके ये they will prepare it and they'll present it to us. We will have a complete picture instead of going through the entire thing. Now you've आपने the response भी देख लिया बेंच का तो जिस साइड पे हम जाना चाह रहे हैं आप हमें आपको हम ये कह रहे हैं कि आप उस साइड पे हमें एक नोट अगर करके दे दें तो it will be नहीं आई थिंक आपका वैसे ये जो नोट है इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट आई थिंक आई रियली compliment you on this note because I've been going through the things when you've not read even and it's I think more or less आप भी देखें it covers I think everything. the credit goes to also to Ms. Zunaira who I have worked with and I think it's a wonderful change shifting from climate change to criminal law. It's very impressive. I mean she's amazing and so is Kassar standing behind me. I'm sure. That's a great compliment to you at this young age. I think we'll go through it. It's सर मैं खत्म कर खत्म कर आप अब जरा अभी मुझे मैं पढ़ रहा हूँ आप जब खामोश हैं मैं आपका नोट पढ़ रहा हूँ अच्छा मैंने वो जो लिस्ट एक दी है ऑफ द मार्शल लॉ orders and regulations that were being passed in presidential order. At that time, the Chief of Army Staff was taking hold of the judiciary. It was a premier purpose for him. Because with that, he would have the whole on. I will repeat myself, learned counsel. There were 3 judges, despite all the martial law that there was, they stood up and they gave a decision. So please don't generalize it. There were judges, you can't generalize it. It cuts both ways. You have to be careful. So if you want to go that way, it will cut both ways. So then we'll have to start distinction. ठीक है बिल्कुल ठीक है I honor the memory उनमें से एक जज साहब पेशावर में थे जिसको भुट्टो ने निकाला और ज़ियाउल ने सुप्रीम कोर्ट में he goes against ज़ियाउल नहीं वो दुराब पटेल साहब और हलीम साहब जी सफदर शाह साहब we rejoice and celebrate in their memory यही मैं कह रहा हूँ sir no I stand corrected I stand corrected Rizal sir just wanted to get a sense of how much time do you require because I usually take an early dinner so do you want me to go get dinner and come back नहीं सर नहीं आपको अर्ली डिनर ही करा तो आप फिर बता दें क्योंकि मैं इतना ये अर्ज करना चाह रहा हूँ what I've said is that एक दफा नाम लेने की इजाजत है सर जरूर एक दफा जरूर what I've tried to establish and you will have a lot of material in the book that I'm leaving with you is that there was at this when this trial was taking place and
broad institutional bias, and the environment was also outside the judges and judiciary was oppressive. Judges were being sent home for no reason, and martial law had been clamped. This case and this judgment has suffered because of that. And that's the crux of your argument. That's the pivotal. मैं एक चीज सिर्फ अर्ज करूंगा जरा to clarify. Masood Mahmood did the typical thing. He blamed his wife for everything. अच्छा. आपने नहीं पढ़ा वो? नहीं, वो तो पढ़ा है. क्या कहते हैं वो? कहता I would have chucked the job and walked down on the street had I been a bachelor. But what strength? I mean, what can you say now? What strengths wives give? No, but I'm just saying this is what he said. He put everything on her. I want to be heard out. And I would have sat the whole night to hear this case had I been a bachelor. No, but what strength? Chief Saab would know. ये जरा देखिए क्या चीज No, but you would know the strength that wives give. No, but I'm just saying कि look at him. We stand up and take responsibility. I would have chucked the job, but this wife was around my neck. An approver has been judicially called a moral wretch who sneaks against his compatriots and offenders and saves his life. Thank you. Sir, thank you for this wonderful work. Thank you. And I must commend the work that you've done. Excellent. And sir, one thing. आज फिर मेरे ख्याल में मजीद किसी और दिन कर लें, मंडे को कर लेते हैं. वो कसूरी साहब और रजा रब्बानी साहब और अटॉर्नी जनरल. मेरी एक गुजारिश. जी फरमाइए. मुझे मेरी तरफ से ये कहीं नहीं कहा गया, ये इंप्रेशन ना जाए कि I have said that Mr. Bhutto was... नहीं, हम आपको तो वहाँ ले जाने चाह रहे ही नहीं थे, हम आपको रोक रहे थे. I know, that's why I was wanted to stop you. बल्कि आपको तो जबरदस्ती रोका हमने वहाँ. But you should have thanked me for that. शुक्रिया. आपने किधर हैं? आप आ जाओ. चमकनी साहब ने कहा कि मैंने जो राइटिंग में दे दिया है, हमने कोई सवाल पूछना है उनसे पूछ सकते हैं. नहीं, आपने जो कहना है वो लिख के दे दे. आपको नहीं जी. आप कौन? मैंने ऑलरेडी दिया. नहीं, ये कौन है आपके साथ? आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इधर तो आ जाए, उधर से आप क्या बातें. पहले बताएं किसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसमें जो पॉइंट उधर आ जाए. आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं इसके साथ असिस्ट कर रहा हूं. नहीं, ऐसे नहीं. आप उनको बताएं. और लिख के दे. अगर वो देना चाहते हैं उन्हें कहें लिख के हमें दे दें. जो आप कहना चाहते हैं वो हमें लिख के दे दें. फिर अगर उन्होंने कहा था लास्ट टाइम पे कि मैंने नोट बना दिया, अगर कोई सवाल उठते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा. सो वी विल सर्टनली डू दैट अगर जरूरत पड़े. इसमें लिखे आज का ऑर्डर लिखे. आज किस को क्या हमने मिस्टर लर्नर टमाइकस, Mr. Manzoor Malik concluded his submissions, whereafter इसमें लिखें as well as learned amicus, learned senior counsel Itizaz Ehsan, full stop. हाँ वो करते ना. On behalf of the legal heirs, some of the legal heirs, नहीं लिख देते हैं. On behalf of Ms. Fatma Bhutto and Mr. Zulfikar Ali Bhutto Jr., Mr. Zahid Ibrahim and ASC made his submissions, and Mr. Farooq Naik made his submission. Learned senior counsel Farooq Naik sahab senior counsel have made submissions on behalf of Mr. Bilawal Bhutto Zardari. ठीक है, full stop. To come up on, we are grateful to the learned amicus for their valuable assistance. To come up on Monday at 11:30 when we expect to conclude the hearing. So no further time. So please
रबानी साहब, आई नो यू आर वेरी प्रिसाइज. कसूरी साहब रह गए और लास्टली अटॉर्नी जनरल. आपको हमने एक काम दिया है उनका मालूम करने के लिए कि वो हाउ डिड ही लीव द कंट्री. मिस्टर मसूद महमूद, ठीक है. एंड